मेरा हो गया भाई। मुझे नहीं पता ये मैंने क्या देख लिया मूवी के नाम पे भाई। व्हाट्सअप जानम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। जस्ट अभी देखी मैंने। अरे भाई साहब क्या पिक्चर देख ली मैंने। मैंने पूरी नहीं देखी है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता नहीं। चल रही है अभी भी घर में, घर वाले तो ख़त्म करेंगे शायद। मुझे तो स्ट्रीम करना था वैसे ही, मुझे पूरी नहीं देखनी थी इस चक्कर में। सही तो है। शट अप अमन। इट्स oh my god, let's talk about it. Oh my god, oh my god, this movie. Thanks for joining. Aman, how are you? This fucking, oh my god भाई साहब, इतनी बुरी मूवी ना, मुझे तो मस्त लगी। कोई बात नहीं, बहुत ही बुरी मूवी है यार। 2024 की कौन सी मूवी बेकार लगी? थंबनेल वाली मेरे भाई। 10 मिनट बाद आओ भाई, कीप ऑन योर वर्ड्स। वो बाबा पता है कौन है? कौन से बाबा यार? वैसे मैंने नहीं देखी। अच्छा देखियो भी मत भाई मेरे। विभीषण फ्रॉम रामायण। अच्छा वो जो घूम रहे होते हैं इधर उधर। ओके 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 ओके। ओ भाई साहब, पूरी तो देखी ही नहीं मैंने मूवी। अरे पूरी नहीं देखी मैंने ना, मैं देखूंगा पूरी वो। मैंने वो आधी से ज़्यादा देख ली, मेरा सर फट गया। मुझे ना दिमाग सा ख़राब हो गया। मेरा कैमरा पीछे करो। पीछे क्यों मतलब? हनुमान बेकार क्यों लगी वैसे भाई? अभी बताता हूँ बस। पूरी बात करूँगा। पूरी नहीं देखी देख मैंने, साफ बोलूँ तो। बट पूरी देखने लायक है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मैंने कुछ बहुत तगड़ा मिस कर दिया होगा। ठीक है तो मतलब यूजुअली, हमेशा मैं कहता हूँ यूजुअली तो क्या, हमेशा ये स्ट्रीम अटक क्यों रही है यार? ये तो हमका नहीं मालूम भैया, स्ट्रीम का है अटक रही है। मुंह पर आ रहे हो भाई। रुक जा, अब ठीक है। मैंने ये रिव्यूज़ खोल के रखे हैं क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज वट आई रिमेंबर इज कि रिव्यूअर्स ने अच्छी बात करी थी इस मूवी की, लेके अच्छी मूवी है। तो ये कह रहा है इट्स अ शेम। यस इट इज़, इट डेफिनेटली इज़ राइट। स्ट्रीम अटक रही है यार। एक बार बंद करके फिर से करूँगा स्ट्रीम शुरू। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, स्ट्रीम लाइक करना तो फ्री है, तो ठोको लाइक। मुझे तो बढ़िया लगी। कोई बात नहीं, घटिया मूवी लोगों को बढ़िया लग सकती है, दैट्स फाइन मैन, यू हैव अ राइट टू योर ओपिनियन। लेजिट आदि पुरुष वॉज अ बेटर मूवी, लिटरली। पहले तो ना व्हाट आई हेट इज स्ट्रीम अटक रही है भाई। करता हूँ फिर, ठीक। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको भाई। चल गई स्ट्रीम, चल गई क्या? एम आई बैक गाइस, एम आई बैक? नहीं अटकी भाई, उसका नेट ढीला है। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आई एम बैक राइट। ओके ठीक है, मूवी की बात करते हैं, शुरू करते हैं मूवी की बात। चलो, कहाँ से शुरू होती है मूवी का पहला सीन? अब ठीक है, ऑलराइट। मूवी का पहला सीन आता है। हर मूवी के लिए मैं कहता हूँ कि मूवी के बारे में वीडियो बनाने से पहले या मूवी के बारे में कुछ कहने से पहले ना, मूवी को कम से कम 2 बार देखना चाहिए। और ये मूवी मैंने पूरी तक नहीं देखी है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ। और जस्ट अभी देखिए तो बहुत ही फीलिंग्स में कह रहा हूँ, हो सकता है या तो कतई गलत फीलिंग्स लेके बैठा हूँ मैं, आई डोंट नो। भाई क्या आप अब लव रुद्राक्ष के साथ नहीं हो? आई लाइक योर बॉन्ड विद हिम। हाँ वी आर स्टिल फ्रेंड्स मैन। हाँ स्टार्टिंग पे कार्तिक स्टार्ट। सो फर्स्ट सीन में एंट्री होती है। स्पॉयलर्स अलर्ट गाइस, इफ यू केयर अबाउट द मूवी, स्पॉयलर्स अलर्ट। माय रिकमेंडेशन इज डोंट वॉच द मूवी एनीवेज। सो मूवी का जो स्टार्ट है भाई साहब, ठीक है, स्टार्ट में एस्टैब्लिश करते हैं सबसे पहले ये लोग विलन। ठीक है, विलन होता है बच्चा, एक छोटा बच्चा। और वो छोटा बच्चा होता है सुपर हीरोज से के पीछे पागल। ठीक है, क्या कह रहे हो ब्रो? बाय विद द टाइम वी गॉट बोर विद पीपल एज वी यूज टू अटैच। आई डोंट नो मैन। माँ बाप को कौन मारता है? मैं बता तो रहा हूँ। तो ये जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में, तो ही इज़ कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड
विद सुपर हीरोज़, ठीक है। तो और वो वेस्टर्न सुपर हीरोज़ है, तो ये वो वाला नैरेटिव चलाते हैं कि भैया वेस्ट की चीज़ें मत देखो, चुतियापा है, ये सब है, ऑलमोस्ट वो वाला नैरेटिव चलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, चुतियापा है। वेस्ट की भी कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी होती है सुपर हीरोज़ वाली। पॉल, क्या हाल है मेरे भाई? थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। उस बंदे को मकड़ी काट जाती है, ठीक है, वो उसने जार में रखी होती है मकड़ी, वो जान के कटवाता है, बट पावर्स नहीं आती उसमें। ऐसे 2-4 चीज़ें वो करता है, छत से कूद जाता है और उसका पैर टूट जाता है। फिर माँ बाप कहते हैं ये साला बच्चे को गलत कॉमिक बुक मूवीज़ दिखा दी, कॉमिक बुक्स ला के रख दी, साले हरामी बुक थी ये, तो इन्होंने तो साला हमारा बच्चा टुटवा दिया। फिर बच्चा दोस्त से साथ बोलता है यार स्पाइडरमैन के माँ बाप नहीं थे ना? नहीं थे, मर गए थे। और फिर वो बोलता है कि सुपरमैन के भी नहीं थे, नहीं थे, मर गए थे। कहता अगर उनके माँ बाप नहीं मरते तो शायद वो सुपर हीरो ना बन पाते। हाँ, नहीं बन पाते शायद। वो माँ बाप को जला देते हैं। ओ मेरे भाई, छोटा बच्चा अपने माँ बाप को जला के मार देता है सुपर हीरो बनने के लिए। देन वी कट, अब आगे हम आ चुके हैं मॉडर्न टाइम्स में। वो बंदा बन चुका है एक सुपर हीरो जो कि विलन्स वगैरह को मार देता है, ठीक है, मार मार के इस टाइप का सुपर हीरो बन चुका है वो। और वो है ये सुपरमैन, बैटमैन, इन सब का फ़ैन है। दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द फकिंग मूवी, ऑलराइट। हिंदू मैथोलॉजी क्यों पसंद आएगी तुझे? नॉर्स मैथोलॉजी होती तो हिला लेता देख के। नॉर्स मैथोलॉजी इज़ ऑल्सो हॉरेबल। हिंदू मैथोलॉजी कंटेन्स सम ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एवर क्रिएटेड इन द वर्ल्ड। सो फक ऑफ जॉफरी। भाई अकेली महाभारत, आई थिंक इट्स लाइक द साइज ऑफ महाभारत इज 3 times द साइज ऑफ ओडिसी, आई थिंक आई हर्ड इट समवेयर। शट अप मैन। Anyways, and that is my biggest issue with the movie. It's an extremely bad superhero movie marketed as like Hanuman movie. Oh my god, I hate that. आज बेस्ट चीज़ भेजी है, मतलब मैंने वो पॉडकास्ट देखो, अभी देखता हूँ थोड़ी देर में। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू विद द मूवी। इट्स लाइक अ हॉरेबल सुपर हीरो मूवी, ठीक है। तो अभी ये तुम्हें नेगेटिव दिखाना था, कैरेक्टर तुमने उसको इस्टेब्लिश करा, इतना अच्छा कुछ इस्टेब्लिश भी नहीं करा, वो भी ठीक है। उसके बाद जब तुम आते हो अपने पॉजिटिव कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो भी तुम कुछ ढंग से नहीं करते। पॉजिटिव कैरेक्टर्स की कोई खास ऐसी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं नहीं कि मन का कोई बहुत अच्छा हो। अरे हाय रुन, हाय हर्षिता। पॉजिटिव कैरेक्टर ऐसा तो है नहीं कुछ मन का अच्छा हो या कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें कर रहा हो। बंदरों से आम चुरा के वो बच्चों को दे रहा होता है बेसिकली। और वो बच्चे भी कोई ऐसे नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आम की। वो बच्चे नॉर्मल स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि गरीब बच्चे हैं, भूखे हैं, बड़े, ये सब हैं। तो जितनी भी चीज़ें इस मूवी में देख लो ना, किसी भी कैरेक्टर की मॉरलिटी देखो, एटलीस्ट आधी मूवी तक इट इज़ कम्प्लीटली फ्लॉड भाई। कुछ भी चल रहा है मूवी में, लिटरली कुछ भी चल रहा है। उसके बाद जब उसको शक्तियाँ मिल जाती हैं, ओ भाई हाँ, जो शक्तियाँ उसको मिलती हैं, उसको शक्तियाँ क्या मिलती हैं, वो मणि सी होती है, वो मणि में जब धूप में रख के देखता है तो उसको शक्तियाँ मिल जाती हैं। लिटरली देयर इज़ अ सीन कि वो अखाड़े वाले से लड़ाई कर रहा है, और अखाड़े वाले का क्या है, वो सबको जान से मार देता है जिनसे लड़ाई करता है सबसे। उसमें लिटरली वो वाला सीन है कि अचानक से बादल आ गए, धूप हट गई, साला जादू, कोई मिल गया जल्दी है। बादल आ गए, धूप हट गई, वो पिट रहा है, अब पूरा पिट लिया। उसके बाद फिर बादल हट गए, धूप आ गई, शक्तियाँ आ गई। धूप, वो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वो भी कोई बात नहीं, जादू मूवी देख रहे हैं हम। अरे उसके जस्ट बाद वो फिर अखाड़े वालों को पिल देता है। और बाय द वे, ये ना, you'll criticize me for adding too much logic into it, बट ऐसे लॉजिक सुपर हीरो मूवीज़ में डलते हैं कि सुपर हीरो मर्डर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस बंदे को सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं भाई, ये दूसरे लोगों को स्पेस तक उड़ा रहा है, और वो नीचे आके कुएं में गिरते हैं और वो मरते नहीं हैं। प्रोटैगनिस्ट की बेस्ट ट्रेट यही है कि चोरी मस्त करता और प्यार के लिए कुछ भी कर सकता। या एग्जैक्टली, प्रोटैगनिस्ट इज अ चोर, ठीक है। एंड दैट्स फाइन टू, यू नो, तुम ग्रोथ दिखाओगे बाद में, शायद आई गेस होपफुली मूवी के एंड तक कुछ दिखाया होगा, एनर्जी वेयर रेडार आती होगी, एंड दैट्स द थिंग, यू कैन ऐड एज मच लॉजिक एज यू वांट, ठीक है। अब वो भाई धूप आ गई, मतलब सॉरी बादल आ गए, तब भी तो धूप नहीं चाहिए रही है। वो जो इधर उधर दिन में हमको दिख रहा होता है सब कुछ, वो धूप से ही तो दिख रहा होता है। बादल हो ना हो, बादल ब्लॉक थोड़ी कर देते हैं धूप को। तो भाई कोई मिल गया मूवी ना, जिस टाइम आई थी उस टाइम के हिसाब से ठीक थी वो चीज़। यार आज के टाइम पे तुम ये क्या कर रहे हो? एंडमैन से चुरा लिया प्लॉट, चोर वाला।
अरे चोर वाला प्लॉट एंटमैन से चुरा लिया, अरे विलन को पता क्या मिलता है? विलन को पता है क्या मिलता है? जितनी मैंने देखी, पूरी मूवी नहीं देखी मैंने, विलन को मिलता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। विलन का जो साइंटिस्ट होता है, दोस्त होता है, उसके लिए ग्लव बनाता है इतना बड़ा लोहे का, जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। वो साला इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेके घूम रहा है। वो मैं मर जाऊंगा भाई, मेरे से नहीं झलती ये चीज़ें। ये थंबनेल में मूवी है, ये थंबनेल में जो मूवी है ये बेकार, ये दिस इज़ हॉरिबल। हाँ हो गया, विलन इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेके घूम रहा है भाई। दुनिया की सबसे फेमस मूवी से कैसे चुरा लेते हो तुम? कुछ तो वो रखो, शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म कर लो। मतलब चुराओ भाई, जी भर के चुराओ, लेकिन ऐसा चुराओ ना पकड़े ना जाओ। तुम तो दुनिया की सबसे पॉपुलर मूवी से चुरा रहे हो। बट मूवी तो अच्छी है, मूवी इज हॉरिबल, मूवी इज हॉरिबल। द ओनली रीजन पीपल लाइक दिस मूवी, ये हरिता रोज डीपी चेंज कर रही। द ओनली रीजन पीपल लाइक दिस मूवी इज बिकॉज ऑफ लॉर्ड हनुमान, दैट्स ऑल। एंड दैट्स वाई आई हेट इट इवन मोर, कि तुम एक गंदी सी मूवी बना दो और भाई भगवान के नाम पे पिक्चर बेचो। आई हेट दैट भाई, बहुत ही बुरी मूवी, मैं मजाक नहीं कर रहा कसम से। वो बंदा ऐसे करता है, ठीक है, अब उसमें पावर आ गई, दैट इज़ फाइन, आई कैन सस्पेंड माई डिसबिलीफ इतना कि उसमें पावर आ गई, वो हल्का सा टच करता है किसी को बिना देखे, और वो बंदा ना ऐसे लाइक 500 मीटर दूर जाके एक दीवार से टकराता है। वो बंदे मर नहीं रहे हैं, क्या चल रहा है? और एक चीज़ और, मूवी है तो अपने लॉजिक से तो कंसिस्टेंट रहो ना। उन्होंने दिखाया कि वेस्ट की चीज़ें ये चुतियाब होता है, ये देख के देखो बच्चा छत से कूद रहा है, उसके बाद तुम अपने कैरेक्टर को शक्तियाँ दिलवाने से क्या कर रहे हो? खाई से गिरवा रहे हो। तो तुम्हारे खुद के लॉजिक से जो बच्चे वेस्टर्न मूवी देख के गलत अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, छत से कूद रहे हैं पट्टी बांध के पीछे, चादर बांध के, तो तुम्हारी मूवी देख के भी तो फिर वो खाई से कूदेंगे ना, नीचे हनुमान जी वाली मणि मिलेगी भाई। हो लिया मेरा, बहुत बुरी मूवी है, बहुत ही बुरी भाई। जो लास्ट में विभीषण वाला एंगल लाया ना, वो अच्छा लगा मुझे। लास्ट तक तो मैंने देखी नहीं, भी चल रही है घर में, मैं नहीं देख सकता इतनी देर की मूवी, मतलब ही नहीं बनता। अरे अरे हाँ, वो बंदा बचपन से एक लड़की का पीछा कर रहा है, वो बंदा बचपन से एक लड़की का पीछा कर रहा है, उसके आसपास गुलेल मारता है वो मार्बल से, ठीक है, बचपन से उस लड़की का पीछा कर रहा है वो। उस लड़की को पता नहीं है वो कौन है, बट शी फाइंड्स दैट रोमांटिक, इवन शी फाइंड्स दैट फकिंग रोमांटिक। और वो बंदा बस में पीछे बैठा उस लड़की के, चुपचाप नीचे झुक के उसको ना पायल पहना रहा है। दिस इज फकिंग रोमांटिक, दिस इज द रोमांस। हाय हाय, मारो मुझे, मारो भाई, मारो मारो। Nilesh on one side and everyone else on other side, but I am with Nilesh. Yes, fuck yeah, we have a cult. IMDb 8.1, Rotten Tomatoes 86, Google 4.97. No, I don't care, I don't care. क्योंकि जिसने मूवी बनाई है वो बाहर वालों से इंस्पायर्ड है। अरे इंस्पायर्ड, मतलब ये मूवी देख के जो बच्चे सुपर हीरो बनना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि उसकी बहन मर जाए उस लॉजिक से। अच्छा, उसकी बहन मर जाती है क्या? उतनी आगे तक देखी नहीं थी मैंने, बट ओह माय गॉड, दिस वाज सो बैड, दिस वाज हॉरिबल यार। मतलब हद हो गई, तुम कोई मिल गया वाली चीज़ें डाल रहे हो कि धूप नहीं आई तो उसकी शक्तियाँ नहीं हैं तो इसलिए वो पिट रहा है वहाँ पर, हैं? और छोटी छोटी चीज़ें कॉमेडी के नाम पे ना कुछ भी कर जाओ तुम, कॉमेडी के नाम पे कसम से कुछ भी कर दो। लोग हवा में जा जाके नीचे गिर रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, जिंदा हैं सारे। हनुमान के कैरेक्टर को स्टॉकर दिखाया, आई हैवंट वॉच्ड, नहीं दैट्स नॉट हनुमान्स कैरेक्टर, दैट्स जस्ट अ गाय हुज नेम इज हनुमंत। तो ही इज़ अ स्टॉकर, बट ऑब्वियसली ना वो एक फिल्मी स्टॉकर है ना, तो वो रोमांटिक है, वो गंदी चीज़ नहीं है। लड़की जब उसको असली में देखती है ना तो लड़की हेट्स द गाय, लेकिन जब वो स्टॉकर है तब तो प्यार है ना भैया, तब क्या दिक्कत है? अरे यार, आधी मूवी देख के रिव्यू देने आया, फक ऑफ, दैट मूवी डजंट डिजर्व अ फुल व्यूइंग, फक ऑफ मैन। आर यू टेलिंग मी दिस मूवी गेट्स बेटर? भाई एक सेकंड, पहले की जो सीढ़ियाँ अगर टूटी हुई हैं आधी, तो सीढ़ी पे चढ़ जाएगा क्या? ओके,
Can you name one thing which redeems the movie? Can you name one thing which follows the logic of the movie? Can you name one thing which follows the morality of the movie? ना तो मूवी में ढंग की morality है किसी कैरेक्टर की, ना मूवी में कोई ढंग का लॉजिक है. और लॉजिक से मेरा ये मतलब नहीं लोग उड़ कैसे रहे हैं भाई. अगर किसी को वो चीज़ है ना कि ओ लॉजिक क्यों लगा रहा है भाई, सिंपल सी बात होती है. मूवीज़ या कोई भी स्टोरी जब किसी को बताते हैं ना, बिल्कुल शुरू में होती है एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. उस टाइम पे तुम कोई भी चीज़ बता दो ना, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. उस टाइम पे तुम बता दो ना सुपरमैन दूसरे प्लैनेट से आए, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. क्योंकि पहले तुम वर्ल्ड को बिल्ड कर रहे होते हो कि देखो इस दुनिया में हो ये एक ऐसा बंदा है. विजन दिखाया मॉडल तो मतलब वो भी जिंदा है. हाँ बट द मूवी इज स्टिल हॉरेबल. मिनल मुरली की एक मूवी उसको देखना सेम कॉन्सेप्ट पे है. ऑलराइट, दिस वाज फकिंग हॉरिबल मैन, दिस वाज फकिंग हॉरिबल. एंटमैन वाली तो मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं लगी उसमें, लेकिन भाई सारी बकचोदियाँ बहुत ही बुरी मूवी. मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ. I'm trying to think. Aman, what did you like? Harshita, you liked the movie. What did you like about the movie? Name one thing that was good about the movie. मूवी का नाम क्या है? I think हनुमान, right? And these people, these fucking reviewers, fuck off you reviewers. Shame on Adipurush. No, shame on this movie too. See, Adipurush में here's the thing, वो जो रामायण की स्टोरी है, that the story is too good, तुम कितना ही खराब कर लोगे. This? What was this? I liked the name. Alright then, fine. That's fine, man. All of these people, see, that's what I hate. They're just selling this movie because of the, you know what it is, right? भाई भगवान के नाम पे तुम मूवी बेचते रहो. That's disgusting. हेडफोन नहीं लगाया मैंने, ये भी तक भूल गया मैं. ये क्या कह रहा है मेरा भाई? मतलब मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मेरे जैसी बात कर रहा होगा. इट्स अ शेम कह रहा है एटलीस्ट. तेलुगु पैन इंडिया सुपर हीरो फिल्म हनुमान देख कर आ रहा हूं दोस्तों. सबसे पहले छाती चौड़ी करो, मेक योर चेस्ट पम्प लाइक अ बम. मैं बताऊं क्योंकि दुनिया भर के हमने सुपर हीरोज देखे, लाइक सुपरमैन, गंगाधर, मकड़ी मैन, आर्टमैन वगैरह वगैरह, जो कि बिलीव से कोई लेना देना नहीं होता है. अगर प्राउड की बात तब आ जाती है तब आता है अपना खुद का सुपर हीरो, यानी हनुमान जी की एक्टिविटी को इस फिल्म में बड़ी ही देसी सुपर हीरो स्टाइल के अंदाज में उतारा है, जिसको देखकर सब बिलीवेबल सा भी लगेगा प्लस प्राउड भी लगेगा. अब कुछ लोगों को लगता है कि यार सुपर हीरो फिल्म बनाना, आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई नीड. What are you talking about believable? What do you mean believable? And I get it. चल उसमें सुपर पावर्स आ गई, I get that. वो हल्का सा यूं कर रहा है बंदा, 500 मीटर दूर जाके लग रहा है दीवार टूट रही है, तो वो जिंदा कैसे हैं वो लोग जो इतनी ऊंचाइयों से गिर रहे हैं, जिनको दिस गाय हनुमंत ऐसे कैजुअली उड़ा उड़ा के फेंक रहा है. लाइक व्हाट डू यू मीन बिलीवेबल लगेगा? एंड इवन इन द स्टार्टिंग ऑफ हिज वीडियो यू कैन टोटली सी व्हाई ही लाइक द वीडियो. मनी के थ्रू सनलाइट से बिलीवेबल क्या लगेगा भाई? बजट आई नीड टू गो लाइक वाइड फॉरेन एंड ऑल एवरीथिंग. इसका मतलब उस बंदे को नाइकी का गांजा चाहिए, बिकॉज़ हनुमान ये सुपर हीरो फिल्म में अभी थिएटर से दिख रहा है. और अगर मैं इसमें कोई एक लाइन रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि अगर ओम राउत गाली खा रहे सोशल मीडिया पे तो समझ जाना सामने वाले कोई अच्छी फिल्म आई है, बिकॉज़ हनुमान इज 2 hours 37 minute कंप्लीट गूज़बम्प्स. दिस इज माय फिल्म, दिस फिल्म मेड मी इमोशनल, दिस फिल्म गिव मी एवरीथिंग एक्सपेक्ट कर रहा था. इतनी सी बजट की ये सुपर हीरो वाली फिल्म मुझे क्या ही दे सकती है, मगर ये फिल्म Oh, this scene. Oh, fuck off, dude. Fuck off. दिस इज माय फिल्म, दिस फिल्म मेड मी इमोशनल, दिस फिल्म गिव मी एवरीथिंग. इस सीन का बताता हूँ. ये सीन देखो भाई. इस सीन में क्या था? Fuck off, you guys. Fuck everyone. Fuck the world, man. Fuck the whole universe. All right. You know what? This thing right here. ये पत्थर उठा रहा होता है, ठीक है. विलन आ जाता है कि विलन को पता लगता है इसके पास तो बहुत शक्ति हैं. वो भी बताऊंगा कैसे पता लगता है विलन को. इतना चुतिया आप, ओ मेरे भाई. एनीवेज, ये ना विलन आता है कि हम तो बड़ी कंपनी है, हम कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम तुम्हारे गांव में अच्छी अच्छी चीज़ बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाना है बेसिकली, ठीक है. उसके बाद जो उसका क्रेन वाला होता है ना, वो कहता है यार ये पत्थर तो उठेगा ही नहीं क्रेन से, हल्का सा उठते ही तो पूरी क्रेन लाल पे चली गई. अब विलन को देखना इसको पावर कैसे मिलती है. सुनो, नहीं सच में कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो. जो विलन का क्रेन वाला है उसने बोला ये पत्थर उठा नहीं सकती क्रेन, हल्का सा हिलाने में पूरी लाल हो गई. और जो विलन है उसको देखना इसको पावर कैसे मिलती है, तो विलन कहता है ये खुद दिखाएगा पावर. तो विलन जाके क्रेन से पत्थर उठवाता है. जस्ट अभी उसने क्या बोला था कि नहीं उठ सकता, क्रेन पूरी लाल पे हो गई. तो विलन जाके कैसे उठाता है पता कैसे? वो जाके वो सेम चीज़ करता है जो क्रेन वाला कर रहा था उल्लू का पट्टा, और वो उठ गई. वो पत्थर उठ गया. उसके बाद वो उठ जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि वो ज़्यादा उठाता रहता है उसको ऊपर. That's a different fucking thing. Oh, and even if this thing, oh, you fucking idiots, if you watch this scene, भाई लिटरली लोग ऐसा लग रहा है लोग आके लेट रहे हैं, पत्थर जहाँ गिरने वाला है वहाँ पर गिरते हुए नहीं लग रहे ये लोग. Fuck off. And you see, भाई बंदे ने पत्थर उठा रखा है. जो बंदे पत्थर के नीचे थे वो भागने की जगह यहाँ नारे लगा रहे हैं. साइड तो हो लो पहले, थोड़ी सा तो बेसिक वो लगाओ. हाँ, किस किस को अच्छी लगी थी? अमन और हर्षित. हाँ, what do you guys say to that?
Being in an iron suit or bitten by a radioactive spider is still believable. No, Aman, again, you're wrong. I explained the whole thing about suspension of disbelief. When जब तुम मूवी एक स्टार्ट कर रहे होते हो, तुम मूवी के लॉजिक और मूवी का वर्ल्ड सेटअप करते हो, उस लॉजिक और वर्ल्ड को लोग फॉलो करते हैं. अगर तुम उस लॉजिक से टूट रहे हो, दैट इज एन इशू. लॉजिक ढूंढने कौन गया? मैं मूवी के लॉजिक की बात कर रहा हूँ भाई. तुम अपना खुद का वर्ल्ड सेटअप कर रहे हो, अ वर्ल्ड विच यू आर डेवलपिंग. जो बाहर की सुपर हीरो मूवीज़ भी बेकार ही होती हैं पहली बात तो, लेकिन बाहर की सुपर हीरो मूवीज़ में ना इतनी इनकन्सिस्टेंसीज नहीं मिलेंगी. होती वो भी बेकार ही हैं, उनमें भी हैं बहुत. What do you think of this behavior of characters? एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी सी बजट ये तो ना लगे ना उनको पत्थर के नीचे खुद जा जाके कूद रहे हैं जहाँ पत्थर गिरने वाला है. लॉजिक भी अगर भाड़ में गया तो आई डोंट थिंक लॉजिक भाड़ में जाता है. की सुपर हीरो वाली फिल्म मुझे क्या ही दे सकती, मगर ये फिल्म आपको एक्शन, इमोशन, ड्रामा, फनी प्लस अपने इतिहास को जिस हिसाब से जोड़ के, जिस हिसाब से मिक्स करके दिखाया है, ये कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट साबित होता है. इसका पूरा क्रेडिट, पूरा भरोसा जाता है जब सामने नाम हो प्रशांत वर्मा, तब काई को डरना, बिकॉज़ दैट मैन डिजर्व एवरीथिंग. आई मीन हेड्स ऑफ. अगर मैं आपको मिला तो मैं उड़ के पप्पी दूंगा. मेरी पप्पी मतलब ब्लॉकबस्टर की एकदम टिकट मिल गई, आपको समझ जाना. दिस इज अ Yeah, I'm never trusting these guys on any reviews, man. This was a horrible movie. एक सेकंड पहले मैं इस डिसबिलीफ में नहीं गया कि दे वांट टू पोर्ट्रे कि बाहर के सुपर हीरो बेकार हैं. व्हाट डू यू मीन? जॉफरी विल बी लाइक पैन इंडिया सक्सेस फिल्म. तुमको पता है तुम्हारी फिल्म इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा विजन, तुम्हारा पैशन तुम्हारी फिल्म को इतना बड़ा करके रख दिया. आई मीन मैं फैन हो गया प्रशांत वर्मा का यार. फिल्म की तरफ चलो तो तेलुगु स्टाइल अपना देसी तरीके में मासी सुपर हीरो को ऐसा प्रेजेंट है, उसे चल में दिखाए गए. प्लस ये भाई मेरे ये ओ मेरी इतना बड़ा करके रख दिया. आई मीन मैं फैन हो गया प्रशांत वर्मा का यार. फिल्म की तरफ चलो तो तेलुगु स्टाइल अपना देसी तरीके में मासी सुपर हीरो को ऐसा. ये तुम देख रहे हो, ये जो लोग हवा में उड़े हैं, ये सारे लोग, प्लीज़ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. ये सारे लोग जो हवा में उड़े हैं, यू कैन सी ये कहाँ पर हैं, ठीक है. इनमें से किसी में भी कोई सुपर पावर नहीं है. इनको हनुमंत जो कैरेक्टर है उसने उड़ाया है हवा में, और ये सारे नीचे ज़मीन पे गिरते हैं. इनमें से कोई नहीं मरता. ये कह रहा हूँ मैं भाई. बैटमैन वगैरह मूवीज़ में होता है ना कि उस बंदे से गलती से एक बंदा मर जाता है तो उसका रिग्रेट दिखता है तुम्हें. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. हीरो को ऐसा प्रेजेंट किया, उसे चल में दिखाए गए. प्लस एक्सीलेंट विजुअल्स. कुछ फ्रेम्स को आप देखकर आप हाथ जोड़कर झुक जाओगे, इतना गूज़बम्प्स देता है यार. तुम सेलिब्रेट Hulk just smash. So, like that's a completely different character. That's the point of Hulk. He kills, and he feels horrible about it. That's the character. करोगे तो बोलोगे कि यार ये सिनेमा है. स्क्रीन प्ले की बात करो तो प्रशांत वर्मा ने हर एंगल से सब चीज पर ध्यान दिया यार. रात के 2 बजे फिल्म देख के निकलो, फिर भी इतना फ्रेश फील करो तो सोचो क्या ही स्क्रीन प्ले रहेगा जो आपको बोर नहीं फील कराएगा. ऊपर से एडिटिंग प्लस बीजीएम पावर जान लगा देता है हर एक सीन. प्लस फिल्म की कहानी जो रूट स्टाइल में इतनी कनेक्ट होती जाती है कि आप हंसता खेलता रिपीट वैल्यू दोगे इस फिल्म को. इस बंदे का हमेशा जितने भी सीन है सारे रेड कलर में. वही परफॉर्मेंस की बात करो तो सबका काम अच्छा था. कोई हंसाता है, कोई रुलाता है, सब अपना मैजिक क्रिएट करके जाते हैं स्क्रीन पे. बट क्लाइमेक्स की बात करो तो जैसा जनगण मन सुन के आप खड़े हो जाते हो, वैसे ही क्लाइमेक्स में जब हनुमान चालीसा आता है आप खड़े रहते हैं, जय बजरंगबली के शोर कर दोगे. इतना मैजिकल क्लाइमेक्स है. मैं बोल रहा हूं दिस फिल्म इज ऑल अबाउट कंटेंट, ऑल अबाउट आइडिया, ऑल अबाउट विजन. जो प्रशांत वर्मा अपने हिस्ट्री को इस फिल्म में दिखाते, कल्चर को दिखाते, किस तरीके से दिखाते, जो प्रेजेंटेशन देखने में आप देख के बोलोगे कि यार हेड्स ऑफ प्रशांत वर्मा. इस बंदे को जीवन की सारी सुख मिले. मैं तो चाहता हूं बंदे का खुद का YouTube चैनल भी हो, वो भी महीने का 15-20 हज़ार कमाए. हेड्स ऑफ मैन, हेड्स ऑफ. बाकी इस एक्सपीरियंस के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता. What the fuck? बट दैट्स वाई आई हेट इट. भाई धर्म के नाम पे तुम कुछ भी बेच लो. मैं डिस्क्रिमिनेट में नहीं कह रहा, मैं सिमिलैरिटी निकाल रहा हूँ. हनुमान जस्ट स्मैश नहीं, बट हनुमंत जस्ट स्मैश. बट इट कैन नॉट बी, क्योंकि हनुमंत इज सपोज टू बी अ कैरेक्टर जो कि इज़ गुड. ही इज़ गुड. हल्क का तो पॉइंट हुआ है ना मेरे भाई कि वो ऐसे कर देता है ये सारी चीज़ें, रिग्रेट करता है ये सब. तो वो हल्क का कैरेक्टर आर्क है, इसलिए हल्क आगे जाके यू कैन सी कि हल्क का पूरा कैरेक्टर आर्क शुरू में कैसा था कि वो गुस्से में उसका वो निकल जाता है, फिर धीरे धीरे वो गुस्सा कंट्रोल करता है. देन बाद में तुमको दिखता है वो हल्क अपना गुस्से को और रैशनैलिटी को जोड़ना सीख चुका है. इवन दो आई डेंट लव दैट आर्क इधर, बट यू इट्स अ अंडरस्टैंडेबल आर्क, इट्स अ लॉजिकल आर्क. दैट्स अ प्रॉपर स्टोरी, राइट. हर किसी को होती है ना इस टाइप की कि ओ मैं बड़ा गुस्से वाला था, अब या तो मैं वो हो सकता हूँ या वो हो सकता हूँ, एंड देन यू कंप्लीट योरसेल्फ. मैं बस इतना ही कहूंगा कि प्लीज मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो स्विमिंग पूल में रह के सुसु आने पे वॉशरूम जाते हैं. उससे ज्यादा मुझे शर्म तब आएगी जब आप लोग इस फिल्म को छोड़ के कोई और फिल्म देखने जाओगे. यार इस फिल्म डिजर्व एवरी ऑडियंस. 600 करोड़ की उम्मीद दिखा के कोई आदि पुरुष ना लाए, बल्कि 40 करोड़ हनुमान बना के 600 करोड़ को चुका है. ओवरऑल थैंक गॉड हनुमान पैन इंडिया पे ताकि ये वाला मैजिक सिनेमा का मिस ना हो. जिससे भाई मेरे को तो प्यार हो गया है. बाकी मैं इस फिल्म को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार. वो भी हंसते खेलते, वो भी छाती चौड़ी. Maybe you guys just don't know what cinema is, man. मैं तुम लोगों से नहीं कर रहा chat. Like maybe oh my god, this guy should not be reviewing movies. This guy should नहीं. I'm sorry. सूरज कुमार माफी. I shouldn't. दोस्तों ये काफ़ी स्पेशल वीडियो. I shouldn't say that. But the way I look at films and the way this guy looks at films, it's like we are in different worlds. I wouldn't say that. That's a horrible thing to say. I'm sorry, man.
बेस्ट सीन वो था जब हल्क एंड गेम में वापस 2012 में जाता है और पुराने हल्क को स्मैश करते देखता है. एग्जैक्टली. It's not without objective quality, Joffrey. It isn't. If it was subjective, I can just go all day. Nobody would say that's music. So it's not without objective quality. I'm not saying you have to stick to any rule. I'm not saying that. You make the same movie and take the religious aspect out of it. कोई भी नहीं देखने जाएगा. Trust me on that. मेरे को तो ये सही लगी, एंटरटेनमेंट था. टेक द रिलीजियस एस्पेक्ट आउट. नोबडी वुड वॉच दिस मूवी. ऐसे चिल्लाया क्यों? बताया तो. एक्सप्लेन करना क्या लिया? Okay, what does Shan Prashar say? Because I like Shan Prashar takes, but I'm worried right now. कहाँ गया? अभी आया तो था. There it is. फिल्मों को देखने के बाद there is a lot to talk about और without any sugarcoating मैं तुम्हारे को दोनों फिल्मों के बारे में अच्छी और बुरी बातें बताऊंगा आज honestly saying. हाँ, when taking the religious aspect out, first नहीं देखूंगा. Exactly. तो तुमको धर्म के नाम पे पिक्चरें बेची जा रही हैं भाई, पैसा कमाया जा रहा है उस पे. It's horrible. And honestly, if you're gonna take something like, भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, these stories are great. इसलिए हजारों साल से, I mean, I don't even want to get into how great these stories are. They truly are. All right. When you pick up stories like that, you are supposed to at least that. Okay, this is my personal belief. You treat them very responsibly. I don't think they did it. I think they just treated the story इस हिसाब से कि कोई offend ना हो. बाकी चीज़ें कहीं भाड़ में, स्टोरी की डेप्थ कहीं भाड़ में, एवरीथिंग जस्ट लॉस्ट दैट शिट. ओ भाई शुरू में, ओ माय गॉड, फक ऑफ यू गाइस. शुरू में ही वो ना भाई बहन आपस में लड़ रहे होते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है. ठीक है, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, ऐसे मतलब मजाक वाला आर्ग्यूमेंट, नॉट सीरियस वाला आर्ग्यूमेंट. पीछे से एक आंटी आती है, वो फिर भाई को जो मेन हीरो है हनुमंत को, उसको कुछ बोलती है और अचानक से बहन चढ़ जाती है. ठीक है, भाई देखता क्या हुआ, आंटी देखती है क्या हुआ. तो यू गेट इट ना, यू गेट द आइडिया. तो वो ये पोर्ट्रे करना चाह रहे कि मैं इसको बोल सकती हूँ, भाई कोई और नहीं बोल सकता मेरे भाई को. नहीं 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 नहीं, ये तो बताएंगे. इट्स नॉट शो डोंट टेल, इट्स टेल डोंट शो. ये सेम चीज़ तुम ढंग से करके दिखा सकते हो, लोगों को खुद फील हो. लेकिन नहीं, वो बोलेंगे, आंटी उसी टाइम बोलती है अच्छा तो बोले तो कुछ नहीं, कोई और ना बोलते तेरे भाई को. एंड दिस, ओह माय गॉड, जस्ट ओह शिट, दिस इज लाइक एलिमेंट्री लेवल राइटिंग, डूड. And I want to watch the movie and like it no matter what. Sure, go ahead, man, go ahead. And that's also not true when you say art is subjective. That's not true. It's really not. Whether you like it or not is a different thing. There's an objective quality to writing. There's an objective quality to filmmaking. There's an objective quality to music. There's an objective quality to everything. सबसे पहले मैंने देखी हनुमान. इस पिक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली दो चीजें आएंगी. पहली चीज है ऑनेस्ट एफर्ट एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू द गॉड्स. प्रशांत वर्मा और उनकी टीम को ये बात अच्छी तरह पता थी कि आदिपुरुष के साथ जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि द फिल्म फंडामेंटली डिसरिस्पेक्टेड रामायण. और जब बात आती है हमारे गॉड, ये मैं मान सकता हूँ कि पेइंग रिस्पेक्ट, अगर ये उस तरीके से बोल रहा है जिस तरीके से आई एम थिंकिंग कि मतलब कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए. लेकिन मेरी पेइंग रिस्पेक्ट की डेफिनेशन होती है कि तुम ये स्टोरीज लेके और इन स्टोरीज को इतने रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो एंड यू राइट समथिंग फकिंग अमेजिंग. उस हिसाब से आई डोंट थिंक इट वाज वेरी रिस्पेक्टफुल टू द स्टोरीज. की तो भैया तुम्हारा बजट है 1000 करोड़ हो 2000 करोड़ हो, हमें मतलब नहीं है इफ यू आर नॉट पेइंग ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू आवर गॉड्स. और प्रशांत वर्मा ने यही चीज समझकर हनुमान में हनुमान जी का पोर्ट्रेल दिखाया है वो बहुत ही सेंसिटिविटी और रिस्पेक्टफुली दिखाया है. और यही चीज दिखाती है कि डायरेक्टर और उसकी टीम में भक्ति की एक एक्चुअल भावना है और ऑनेस्ट एफर्ट करने की एक एक्चुअल इच्छा है. और एक बात बताऊं, बाय द वे आई एम नॉट अ फैन ऑफ आदिपुरुष द मूवी, राइट. लेकिन एक बात बताऊं, ये मम्मा बुलावा है तम सीता में. ठीक है, आप जाओ. राजकुमार प्रणाम. प्रणाम भाई. महाराज ने आपको जल्दी बुलाया. हाँ देखा, राजतिलक के लिए बुला लिया सीता. मैं जा रहा हूँ. ठीक है महाराज. महाराज रामायण लाग रहा है, कदे उसके आते तो पसीज जाने आते. ये सोफे पे बैठे हैं सारे, रामायण चल रही है, इसमें लोग ऑफेंड नहीं होंगे. 1.3 मिलियन व्यूज तो इस पे भी हैं. राम राम जी, राम राम भाई भविष्य, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम. कह दिया वो बन साले पट के भाई लक्ष्मण नू निवेरा को जनावर उठा कर ले गया तेरी भाभी ने.
अग भाई को आदमी आदमी की तो किसकी हिम्मत पड़े थी अडर बनना पाव है बेइज्जती होगी भाई 14 साल गए थे बना मैं लोगाई ने खोया है नाश करवा दिया लक्ष्मण Alright, so fuck off, people. And now I see क्या problem है. People like me who doesn't have creators' point of view, who just watch something ऊपर से just for entertainment like this, but mainly someone like I get Aman, I get that difference, Aman. I totally get that difference. But मेरे ख्याल से ये जो लोग रिव्यू कर रहे हैं सारे, इन लोगों का काम ही तो ये है ना, इसको ऑब्जेक्टिव क्वालिटी पे जज करके तुम लोगों को समझाना कि अच्छी चीज़ कैसे होती है. That's why I said that what I said about that guy. I shouldn't have said that. I really feel bad about saying that. तो मैं once again सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का पॉइंट क्या होता है मेरे भाई? Who deep dives into every aspect of content creation would take these things out of. तो यहाँ से मूवी स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मूवी का एंडिंग पॉइंट है. अब इमेजिन करो यार, मैं एक मूवी बना रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ से शुरू होता है और बंदा बड़ा स्ट्रगल करता है, यहाँ तक जाता है, इधर उधर पिटता रहता है, ठीक है. अचानक से यहाँ पर कहता है, अरे ओह शिट, आई एम अ सुपर मैन, और अचानक से वो सबको मार देता है और एंड में क्लाइमैक्स में जीत जाता है. दैट विल बी अ वेरी चूतिया मूवी. तो इसलिए व्हाट यू शो इज कि देयर इज दिस पर्सन जो कि बहुत पावरफुल है लेकिन पिटने का ड्रामा करता है. तो बेसिकली तुम यहाँ पर ना अपनी मूवी का लॉजिक सेट करते हो. यहाँ पर जो स्टार्टिंग है ना मूवी की, वहाँ तुम कुछ भी लोगों को बता सकते हो, डाल सकते हो. क्योंकि वो मूवी शुरू कैसे होती थी याद है? इन अ वर्ल्ड, ट्रेलर्स आते थे जो ये सब होते थे, वो सब वर्ल्ड बिल्डिंग कहते हैं उस चीज़ को. तो एक बार तुमने वर्ल्ड बिल्ड कर दिया ना, तुमने शुरू ही ऐसे करा कि भाई ये बंदा उड़ सकता है, तो मूवी के मिड पॉइंट पे जब वो उड़ेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन जब वो अब तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि इधर आके ना मूवी अपने लॉजिक सेट करती है अपनी दुनिया का, और ये लॉजिक ना राइटर्स खुद सेट कर रहे हैं. हम जिस दुनिया में रहते हैं उस वर्ल्ड के लॉजिक और फिजिकल लॉज से हमको चिपके रहना पड़ता है ना, और काफ़ी हद तक मॉरल लॉ से भी, इवन दो इट्स मच मोर ऑफ अ ग्रे एरिया देयर. बट अगर राइटर्स यहाँ कर आके अपना लॉजिक तोड़े, और वेस्टर्न मूवी में बताता हूँ ना भाई, स्पाइडरमैन देख लो, वो सैम रेमी वाली, भाई उसका जब मन कर रहा है स्पाइडर सेंस चल रही हैं, जब मन नहीं कर रहा पीछे से आके कोई मार देता है, स्पाइडर सेंस काम ही नहीं करती भाई की. सो दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ राइटर्स ब्रेकिंग देयर ओन लॉजिक. क्यों? क्योंकि फिर वो राइटिंग ईजी हो जाती है. सो दैट्स ऑब्जेक्टिवली बैड राइटिंग वहाँ पर. तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा लॉजिक गलत सेट हुआ? नहीं, मैं एक वो बता रहा हूँ, एक कपल ऑफ थिंग्स जो कि ऑब्जेक्टिवली लॉजिक को सेट करती है मूवी की, मतलब सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव क्वालिटी होती है लॉजिक राइटिंग की. इतने अच्छे से टॉपिक पढ़ा होता तो टॉपर होती. वैसे डीप डिस्कशन है. इस मूवी में ओके, लेट मी थिंक, इसमें कोई इसमें लॉजिक तो एक तो वो ब्रेक हो रहा है ना भाई कि बाकी सारे लोग नॉर्मल हैं, तो ये जो लोग हवा में उड़ उड़ के गिर रहे हैं और मर नहीं रहे हैं, ये क्या चल रहा है? हनुमंत को तो शक्तियाँ मिल गई, वो समझ आता है. ये जो हो रहा है ये क्या चल रहा है? उड़ उड़ के लोग गिर रहे हैं, वो क्यों नहीं मर रहे? वी नो बाकी लोग नॉर्मल हैं. जब वो जलाता भी अपने माँ बाप को, विलन, तो वो मर जाते हैं. जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू एड एन एक्शन सीन, ऑल द लॉजिक गोज आउट ऑफ द फकिंग विंडो. वो तो हर बॉलीवुड में होता है. हाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना वो चीज़ सही है. उसका मतलब वो नहीं, वो चीज़ अगेन, दिस इज अ ब्यूटीफुली रिटन लाइन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स वाई यू सी ये सुपर हीरो वाली मूवीज़ में ना कि डेथ को, किलिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली दिखाते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये तो बहुत ईजिली सबको मार के निपटा सकते हैं ना. दैट्स वाई बैटमैन इज अ ग्रेट कैरेक्टर. मतलब जो लोग बैटमैन सही से करते हैं, कुछ लोग तो सीधा भट्ट मरवाते हैं, राइट? इन्हीं तरीक़ों से कुछ यार मुझे ये है, या तो मैं 2024 में ना मूवीज़ को बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ. हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप योर डे इज गोइंग ऑसम. इफ इट इजंट, अरे कैसे लिख दिया तूने? Isn't going awesome? Get up your list, guys. Do something you love to make your day awesome, just like the stream's gonna be. All right. तो कि भैया हम ज्यादा कूल लगने के चक्कर में अपने हिंदू गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट ना कर बैठे. क्लाइमैक्स के 10 से 12 मिनट जहां पे हीरो हनुमान जी से जब मिलता है और वो पूरा का पूरा जो सराउंडिंग उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है वो देख के, इनफैक्ट उसमें हनुमान जी को जो रिस्पेक्ट पे करा गया है, जिस हिसाब से हनुमान जी का ट्रीटमेंट करा गया है वहां पे उस वाले पूरे सीक्वेंस में, वो देख के आपको एक्चुअली में गूज़बम्स आ जाएंगे. हनुमान जी पावर का पोर्ट्रेट, हनुमान चालीसा का उच्चारण, एंड मोर देन एनीथिंग हनुमान जी जो उन्होंने एंड द मोमेंट यू एडमिट के इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं होता मूवी में, यू तो तुम नहीं देखते या फिर पसंद नहीं आती, यू आर एक्सेप्टिंग इट्स अ बैड मूवी. इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जो आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगा इस फिल्म की, वो लगते हैं कि भैया वो एक हिंदू गॉड है, आदि पुरुष की तरह नहीं कि मौलाना बना दिया था हनुमान जी को वहां पे.
दूसरी चीज जो पिक्चर देख आपको रियलाइज होगी वो ये है कि प्रसाद वर्मा और उनकी टीम को अच्छी तरह पता था कि बजट कैसे और कहां यूज करना है। जहां आदिपुरुष में एक तरफ प्रभास के मोटे ठोकरे को अच्छा दिखाने के लिए, सुडौल दिखाने के लिए 150-200 करोड़ रुपए में आग लगा दी गई थी और बाकी के पैसों में आग लगा दी गई थी दुनिया के सबसे गंदे एनिमेटर से वो फिल्म की एनिमेशन करा के। यहां पे हनुमान की टीम ने बहुत ही इंटेलिजेंटली फंड्स को एलोकेट किया है। कॉस्ट्यूम्स पे, लोकेशंस पे, सिनेमेटोग्राफी पे, सेट्स पे, कलर ग्रेडिंग पे इनका बजट जितना इनको अलाउ करता था इन्होंने उस पे उतना फोकस किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिल्म में जो वीएफएक्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और टॉप नॉच है, बट यार 55 से 60 करोड़ रुपए में बनी है सुपर हीरो मूवी जो वन ऑफ द फर्स्ट काइंड्स है इंडिया में, उसके हिसाब से वीएफएक्स बिल्कुल भी बुरे नहीं। आदिपुरुष की तरह नहीं है कि भैया एक बहुत बड़ा स्टार ले लिया, लॉटरी स्टार ले लिया और सारा का सारा पैसा श्योर, दैट्स फेयर, दैट्स अ फेयर टेक। उसी को दे दिया और पिक्चर की डेवलपमेंट में, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा इस फिल्म को देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट जो है एक्सट्रीम, ओ माय गॉड, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया भाई। इस आई डोंट नो आगे वो कहाँ से कनेक्ट होता है या नहीं होता, बट देयर इज अ मंकी इन द मूवी। वो पूरा टाइम जैसे ही शुरू में आम चुराता है तो मैं पूरे टाइम मंकी का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है कि मंकी क्या सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। दैट वाज वियर्ड टू मी। आई डोंट नो वो आगे कैसे कनेक्ट होता है। अमन, मे बी यू कैन टेल मी। जॉफरी, प्लीज वॉच दिस फकिंग मूवी मैन। फिल्म में एक बूढ़े संत बाबा की प्रेजेंस रहेगी, ओमनी प्रेजेंट रहते हैं वो पूरी पिक्चर के अंदर, लेकिन जब रिवील होता है कि लास्ट में वो हैं कौन, वो भी एक बहुत बढ़िया मोमेंट है पिक्चर में, बहुत मजा आया देखने में। तुम्हें केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं, किंतु एक महासंकट आने वाला है। देखने से जिस हिसाब से लगता है ना कि उन्होंने इंटेलिजेंटली पैसा खर्चा है इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म का जब दूसरा पार्ट आएगा जो 2025 में आना ही है, सोचो अगर इनका 60 Oh my god. They're making another. Oh my god. Oh my god. स्पेशल इफेक्ट्स के पैसे हैं बट राइटर के नहीं. Oh my god. Oh my god. Oh my god. यार मैं बात ही ये है यार, मेन बात ही ये है कि लास्ट में जिस तरह से इन्होंने मिथोलॉजी को रिलेट किया है वो अच्छा लगा. अब उसी पे तो जज कर रहे हैं ना मूवी अच्छी थी या नहीं, तो हटा ही नहीं सकते रिलीजियस एस्पेक्ट. Nilesh headache. No, it's extreme disappointment. I hate when people do that. You know, like the first movie is like a trailer for the second movie. I hate when people do that. एंड रियली आई एम वेटिंग फॉर दैट पार्ट कि वो मिथोलॉजी को कैसे कनेक्ट करेंगे. मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा. म्यूचुअल टॉर्चर. हैव यू वॉच्ड साहो? इफ़ यू वॉच साहो आई विल वॉच दिस. व्हाट इज साहो? साहो कौन सी मूवी है? ओह माय गॉड, आई एम नॉट वॉचिंग दिस शिट. भाई बहुत ही ना हद लेवल है. जब मुझे ये दिख जाता है ना, मुझे मतलब भाई कसम से कह रहा हूँ, जब ये ऐसे थंबनेल्स दिख जाते हैं ना, पता लग जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है, मूवी के साथ कितनी चीज़ें करना चाह रहे हैं बेसिकली. लाइक वी आर सपोज टू बी इन अ क्रिएटिव फकिंग फील्ड. हाउ मेनी थंबनेल्स हैव यू सीन लाइक दिस फॉर म्यूजिक वीडियोस ऑफ मूवीज? हाउ मेनी? कम ऑन गाइस. दिस गाय मेड अ ग्रेट वीडियो अबाउट दिस. अच्छा, मैंने पहले भी ढूंढने की कोशिश करी थी ना, वो डिलीट हो गई शायद. हाँ, आई थिंक ही डिलीट एन एक्टर. आई थिंक ही डिलीटेड दैट वीडियो शायद. हॉरिबल मूवी, हॉरिबल. क्या है नीरज भाई? मैं ठीक हूँ भाई. आप कैसे? अर्श, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम. ऐसा मुझे ये बता हर्ष, मैंने ना अमन, मैंने वहाँ तक देखी है मूवी जब वो उसको किडनैप नहीं कर लेते हनुमंत को, और वो पूछते हैं बता तेरी पावर कहाँ से आती है. मैंने वहाँ तक देखी है मूवी. तो उसके बाद कितनी बची पहली तो ये बात. बट इस रिव्यूअर की ये सोच बेकार लगी कि कम से कम हनुमान जी को हनुमान जी की तरह बनाया. तुमने देखा है क्या हनुमान जी को? वो तो बस बार बार वैसा दिखा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में डाला हुआ है. बाय डूड, बाय हर्षिता, टेक केयर भाई. वो तो खैर वो हो गया ना. आई गेस व्हाट ही माइट हैव वांटेड टू से वुड बी कि रिस्पेक्टफुली दिखाया है. यार मेरे ख्याल से पता है क्या रिस्पेक्टफुल होता कि अगर तुम इंडल्ज कर रहे हो ना उन स्टोरीज को अपनी मूवी में, तो तुम फाड़ मूवी लिखो भैंस की आँख. 30-40 मिनट की होगी शायद. ओके, मेरे ख्याल से दैट वुड बी रिस्पेक्टफुल कि अगर तुम उनको ले रहे हो मूवीज़ में भगवानों की स्टोरीज डाल रहे हो, तो तुम ऐसी स्टोरी लिखो कि देख के लोग ना जेन्युइनली हिल जाएं, लोगों को एड्रेनलिन फील ना हो जो हाई म्यूजिक से कभी भी हो जाता है.
भाई कसम से कह रहा हूँ, जो ये लोग वो जाते हैं ना जिनको देख के तुम हंसते हो, जो फेथ हीलर होते हैं, जो नाच रहे होते हैं मेरा यसू यसू, जीसस क्राइस्ट वाले फेथ हीलर्स, नॉट जीसस क्राइस्ट वाले बट क्रिश्चियनिटी वाले फेथ हीलर्स, उनको भी सेम एड्रेनलिन आ रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है वो ठीक हो रहे हैं। तो ये फीलिंग डालनी ना लोगों में बहुत आसान है। तुम लाउड म्यूज़िक दो, एक्शन वाला म्यूज़िक दो, लोगों को जो वो चीज़ होती है ना, वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। You should have watched till the end. Oh my god. Anyway, yeah, see, I wouldn't even talk about कि जब वो कह रहे हैं ना कि हनुमान चालीसा चली और ये सब हुआ, उसमें तो भाई इतना ज़्यादा ऑलरेडी कनेक्ट है ना, तो तुम एज फिल्म मेकर्स क्या कर रहे हो? 8 करोड़ का बजट डबल या तिगुना कर दिया जाए तो ये टीम कितने अच्छे माइलस्टोन सेट कर सकती है। नो डाउट आपको फिल्म में कुछ वीएफएक्स शॉट्स और कहीं जगहों पे एडिटिंग काफी क्रूड और चॉप्ड अप लगेगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं हो जाती फिल्म में कि आपको आके काटने लगे। तेजा सजा और बाकी सपोर्टिंग कास्ट की कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देख के लगता है दैट दे गिव इट देयर ऑल। कहानी की बात करें तो कुछ बहुत इंटेलिजेंट या आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ही स्टीरियोटाइपिकल सुपर हीरो कहानी है। इनफैक्ट घंटा एक शॉट है जो वो शायद बच्ची करती है ना उस टाइम का है, वो जो लव इंटरेस्ट है ना हनुमंत का, शी गोज लाइक, शी ऑलमोस्ट लुक्स हैप्पी इन द रिएक्शन शॉट, सो एक्टिंग इज नोवेयर गुड। बहुत सारी जगहों पर तो कहानी बिल्कुल ही बचकानी हो जाती है और ओनली गूज़बम्प फैक्टर इन द स्टोरी इज दैट ऑफ हनुमान जी। वही एक आवारा लड़का जिसको रिस्पांसिबिलिटी की कदर नहीं होती। There you go. And I hate this as a reviewer who I respect. Shan Prashar is one of them. I hate this कि इस बात को इतनी आसानी से वो जाने देगा in his review कि कई जगहों पे जो स्टोरी है एकदम बचकानी सी हो जाती है। A movie is a story in motion. That's what the movie is. A movie is not about VFX. Nobody cares. अगर मूवीज VFX के बारे में होती ना, टाइटैनिक पसंद नहीं आती लोगों को, जो पुरानी वाली लायन किंग है वो पसंद नहीं आती लोगों को। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो सिर्फ वही नहीं, बिकॉज VFX वगैरह सारी ऊपर की चीज़ें, नोबडी फकिंग केयर्स मैन। अगर मूवी VFX के बारे में होती ना, लोग रावण को लेके तो ऐसे एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो रहे होते हैं, जो शाहरुख खान वाली रावण आई थी मूवी। मूवीज आर नॉट अबाउट VFX। अपने टाइम के हिसाब से VFX कितने बढ़िया थे रावण मूवी के, नोबडी केयर्ड अबाउट द मूवी बिकॉज द स्टोरी वॉज एवरेज। उसको एक्सीडेंटली हनुमान जी की पावर्स मिल जाती हैं, फिर वो पावर्स को शो ऑफ करता है, अपने गांव वालों को बचाता है, एक लड़की भी पटा लेता है और उसके बाद एक बहुत बड़े बिग बॉस गुंडे को भी पीट देता है। तो कहानी कुछ ज्यादा खास है रावण अच्छी थी, इट वाज ओके, लेकिन ये बुरी चीज नहीं है क्योंकि अभी एक स्टार्ट आउट है। ये फिल्म में पहला पार्ट है, वो कि दूसरा जो पार्ट आने वाला है 2025 में, वहां पे स्टोरी थोड़ी इंट्रिकेट हो, थोड़ी तो वजनदार हो। फिल्म में जो लव स्टोरी का एंगल है वो बिल्कुल अनवांटेड था, यहां पे ये इंटीग्रेट कर। मतलब स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द फिल्म। व्हाई इज, ओ माय गॉड, हाँ, दिस जस्ट अनॉयज मी बिकॉज अगेन आई लाइक हिम एज अ रिव्यूअर। आरजे रौनक का रिव्यू लगाओ। आरजे रौनक कौन है, देखता हूँ भी। कहते कि भैया लड़का एक ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो स्टोरी देखने में और मजा आता है। फिल्म का विलेन और उसकी पावर्स भी मुझे कुछ खास लगी नहीं, क्योंकि खुद सोचो तुम हनुमान जी की पावर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, जो पूरी ब्रह्मांड में सबसे तगड़ी पावर्स हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हो, और तुम कैसे जा रहे हो, अर्थली पावर्स लेके, मतलब कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की पावर लेके तुम अगेंस्ट जा रहे हो हनुमान जी के। तो मेरे को वहां लगा कि अगर तुम देवताओं को असुरों से लड़वाते, यहां पे अगर वो असुरों की पावर को सोर्स कर लेता और असुर बन जाता, फिर जो वो पावर की इक्वेशन बैलेंस वहां पे दिखाया जाता, वो ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता था। पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ताकत तो मेरी। एक और चीज में काफी अजीब लगी और वो ये है कि फिल्म में जो हीरो है वो बिल्कुल लंफड़ आवारा होता है, इनफैक्ट चोरी चकारी भी करता होता है, और उसको दे दिया हनुमान जी की पावर, वो भी ऐसे एक्सीडेंटली, जबकि हमारे सारे एपिक्स में लिखा गया है कि भैया जिसको भी जब भी पावर प्रदान करी गई है देवताओं से, उन्होंने घोर तपस्या करी है, लेकिन यहां पे हीरो कुछ भी नहीं करता। तो ओवरऑल ये फिल्म हनुमान जी को बहुत ही रिस्पेक्टफुली पोर्ट्रे करती है, सनातन धर्म के एक बहुत बड़े और मॉन्यूमेंटल चैप्टर को। So and see again, this guy is also saying the same thing, by the way. He's just saying it extremely nicely. सिर्फ इसलिए अच्छी लगी कि हनुमान जी का कैरेक्टर का, हनुमान जी का कैरेक्टर थोड़ा सा ठीक से दिखाया, स्टोरी बेकार है, VFX खास नहीं है। अगेन VFX डजंट मैटर, टट्टी बना लो VFX, डजंट मैटर। ब्रो एज योर लॉयल भाई, आई रियली वांट टू सी योर मूवी, प्लीज अ नाइट ऑफ। ओह माय गॉड, you guys are gonna hate the movie. It's fine though, it's fine. It's fine because see, I hate the movies you guys like. You might hate the movies that I make. That's okay. It's fine. I'll take all the criticism on the chest though. But I am, you know, somewhat. I'm okay with the movie. I was gonna say I'm somewhat proud of it, but yeah, I'm all right with it. उसके thumbnail पे Superman से अच्छी बोली है. Oh, this guy. All right. भाई पता है, रिलीजियस मूवी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बनाओ। कल हिस्पैनिक वाला देखा था जो डिस्कॉर्ड पर भेजा मैंने, यार ध्यान नहीं भी देखना पड़ेगा। देखिए राम जी तो आ रहे हैं 22 तारीख को, लेकिन उनके सेवक हनुमान 10 दिन पहले आ गए हैं। स्क्रीन वाला पर मैं यानी रौनक जय श्री राम बोलते हुए आपका स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं डायरेक्टर प्रशांत और एक्टर तेजा की हनुमान, अंजनाद्री गांव, हनुमंतु यानी तेजा। अब कहानी एकदम सीधी सी है भैया इस फिल्म की। माइकल को चाहिए सुपर पावर, लेकिन आदमी है दुष्ट, और हमारे हनुमान जी हर युग में खड़े होते हैं धर्म के साथ, इसलिए वो सुपर पावर आती है अपने हीरो में। गुड वर्सेस इविल की कहानी है। शुरू में चोरी चकारी करने वाला लड़का अंत में अपने गांव को बचाने वाला कैसे बनता है, कैसे उसकी बहन अंजमा यानी वरलक्ष्मी हमेशा उसकी केयर करती है, कैसे गजपति यानी राजदीपक शेट्टी गांव का रखवाला तो बनता है, लेकिन कायदे से गांव पर चाहता है अपना कंट्रोल। हनुमंतु और मीनाक्षी एक दूसरे से करते हैं प्रेम। एक दिन मीनाक्षी और गजपति का लफड़ा होता है, पंगा होता है, और हनुमंतु उसको बचाने के चक्कर में संकट में पड़ जाता है, और तभी हनुमंतु को कुछ ऐसा मिलता है जिससे आ जाती है उसमें असीम शक्ति, असीम कृपा, सुपर पावर। अब आगे क्या होता है, उस पावर का
यूज हमारा हीरो कैसे करता है, कैसे माइकल यानी विनर आए इस कहानी से जुड़ते हैं, ये सब के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म की अच्छी बातों में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा वरलक्ष्मी की परफॉर्मेंस की। बड़ी बहन अपने हीरो की बड़ी बहन की परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत बढ़िया दी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अमृता एज मीनाक्षी भी आपको पसंद आएंगी। वीएफएक्स और एंटायर एग्जीक्यूशन कहानी के साथ कैसे ब्लेंड होता है, कुछ भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड नहीं लगता, देखकर आपको पसंद। अब ये भी मैं दिखाऊं ना, कसम से कह रहा हूँ, ये एक आम इंसान है, एज फार एज आई नो, एंड में कुछ अलग होता है तो पता नहीं, बट ये एक आम इंसान है। इस पहाड़ी से इसने इसको लात मारी है, आम इंसान को। देख लो कहाँ पर है वो। ये आरजे नहीं पसंद मुझे। अमन अरोड़ा, मैंने तो बस राइटिस्ट बोला था और नीलेश हंस दिया था मुझ पे। अरे अरे आएगा। आदि पुरुष के मेकर्स चाहें तो इस फिल्म से काफी कुछ भाई, तेरे पे क्यों हंसा? तेरी बात पे हंसा जॉफरी, यू आर सो टची मैन। सीख सकते हैं। उस बजट की तुलना में इनका बजट काफी छोटा है लेकिन इंपैक्ट काफी बड़ा है। सुपर हीरो फिल्मों का एक बड़ा सिंपल और सटीक सा फॉर्मूला है कि स्टोरी टेलिंग बढ़िया होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कड़क होनी चाहिए और वीएफएक्स अच्छा होना चाहिए। और ये फॉर्मूला ऑडियंस को पसंद आता है तो ऑडियंस खुद तो थिएटर में आती है। चार और लोगों को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से थिएटर जाने के लिए मजबूर भी कर देती है। बाकी फिल्म की कमियों की बात करें तो भैया फिल्म कई जगहों पर आपको स्लो लगेगी, स्पेशली फर्स्ट हाफ, यानी टाइट एडिटिंग और क्रिस्प पेस फिल्म की ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को और अच्छा कर सकता था। पर कोई नहीं, फिल्म जाकर थिएटर में जरूर देख सकते हैं और थिएटर में ही एक्सपीरियंस करने वाली है फिल्म। Oh my अगर देख चुके हैं God. तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी। जाने वाले हैं टाइट एडिटिंग he said, right? And what did he say? तो इस फिल्म से काफी कुछ सीख सकते हैं। उस बजट की तुलना में इनका बजट काफी छोटा है लेकिन इंपैक्ट काफी बड़ा है। सुपर हीरो फिल्मों का एक बड़ा सिंपल और सटीक सा फॉर्मूला है कि स्टोरी टेलिंग बढ़िया होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कड़क होनी चाहिए और वीएफएक्स अच्छा होना चाहिए। और ये सुनो भाई, कितनी चूतिया बात है ये। सुपर हीरो फिल्म्स का एक सिंपल सा फंडा है, स्टोरी टेलिंग बढ़िया होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और वीएफएक्स तगड़े होने चाहिए। ऐसी कौन सी मूवी है जिनमें ये तीन चीज़ें अच्छा नहीं करेंगी या बुरा करेंगी? अच्छी स्टोरी, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे वीएफएक्स। सुपर हीरो स्टोरीज का बहुत सिंपल सा फंडा है, स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए एज इफ इट्स एक्सक्लूसिव टू सुपर हीरो मूवीज, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए एज इफ इट्स एक्सक्लूसिव टू सुपर हीरो मूवीज, वीएफएक्स अच्छे होने चाहिए, दैट माइट बी एक्सक्लूसिव टू सुपर हीरो मूवीज। Why don't just add music, sound design, सारी चीजें डाल दो ना इसमें। फॉर्मूला ऑडियंस को पसंद आता है तो ऑडियंस खुद तो थिएटर में आती है। चार और लोगों को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से थिएटर जाने के लिए मजबूर भी कर देती है। बाकी फिल्म की कमियों की बात Oh my God, I'm so sure man। इस बंदे को तुम वो मणि वाला एस्पेक्ट रखो, ठीक है, और हनुमान जी वाला एस्पेक्ट हटा दो मूवी से। All of these people will hate on the movie. I'm telling you. I'm fucking telling you. Tell me if that's not true. आम इंसान किसको बोल रहे थे? हैं? या फिर नीलेश पगला है रे? कौन आम इंसान है? आम इंसान का बोला मैंने, ध्यान नहीं दिया यार, मौतें निकल गई होगी मेरे भाई। मुझे कसम से कह रहा हूँ, एक बंदा बता दो। ये तो है ही एक्सट्रीम राइटिस्ट। अरे पसंद तो मूवी तुझे भी आई है। डू यू नॉट फाइंड दिस ऑफेंसिव अमन? तनाना नहीं चाहिए था। रो ना भाई, रोना और क्या करो। साल आगे साल के टोवाएंगे हाँ, आगे तो बैठी पा जाएगी, तो ना पाली कि थोड़े कितने तो पावेगी भाई। हाँ जय हो रामचंद्र पाली भाई। यो कौन है भाई? यो कौन को अच्छा, ये आम इंसान है और लात मारता है। अच्छा भाई, मैं ये बता रहा था यार, इस सीन में दिखाता हूँ, वो जो जंगल वाले नहीं होते, जब दिस सीन राइट हियर, ये बंदा एक आम इंसान है। एज फार एज आई नो, मूवी के एंड में कुछ अलग हो गया तो अलग बात है। ये आम इंसान है और इसने इस आम इंसान को लात मारी है। देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक ऑफ द मूवी। सुपर हीरोज तो पहले से बने पड़े हैं ये। मुझे तो कुछ भी ऑफेंसिव नहीं लगता। डिड यू फाइंड आदिपुरुष ऑफेंसिव? को बहुत ही सेंसिटिविटी और डिग्निटी के साथ एक सुपर हीरो स्टोरी में जोड़ने की कोशिश करती है। बट ये बात भी सत्य है कि बेसिकली ये फिल्म है बच्चों के लिए। तो अगर आपका एक परिवार है, जाके परिवार के साथ इसको देखिए, अच्छा लगेगा, सब एंटरटेन होंगे, बच्चे ज्यादा एंटरटेन होंगे। एज एडल्ट्स तुम शायद इतना ज्यादा एंटरटेन ना हो, बट ऐसा भी नहीं है कि तुम बोर हो जाओगे, यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम। अब बात करते हैं द फिल्म मेकिंग माइस्ट्रो श्री राम राघवन की मेरी क्रिसमस की। गाना बजने वाली है क्रिसमस। हम तो मर गए भाई। मैं ये बात तुमको बता रहा हूँ। क्या ही बताऊँ, आज लेट मुझे कुछ भी ऑफेंस नहीं लगता। भाई सिर्फ लोगों को ही खुश करना है तो पॉलिटिशियन बन जाओ ना, फिल्म मेकर बन के क्या करोगे? सिर्फ पैसे ही कमाना है तो बिजनेसमैन बन जाओ। क्या क्या बैन कर दिया नीलेश ब्रो चैट में? मैंने कुछ भी बैन नहीं करा है। अगेन यू कैन गेट ओवर योरसेल्फ। ट्रेलर देखो, वो वाला एक बार जो बताया। कौन सा वाला पॉल? सॉरी मैंने मिस कर दिया। रावण एवरेज। एक बार वो मूवी देखना, मिनल मुरली बहुत अंडररेटेड। मिनल मुरली, ओके गॉट इट।
हर कोई कैंसिल होने से डरता है. What's up man? True, that's true. यार राम इतने बड़े हैं, उनके बारे में हम जैसे लोग कुछ वो बुरा मानेंगे क्या? उन्होंने रावण को भी पहले माफ़ करना चाहा, जबकि उसने तो उनकी बीवी उठा ली थी. डिस्कॉर्ड देख से हर्षवर्धन. अभी देखता हूँ हर्षवर्धन, एक मिनट में देखता हूँ. ये हिंदी ट्रेलर है ना? बिजली गिरने के बाद तुम्हें अपने अंदर कोई बदलाव महसूस हुआ? बस खांसी आई थी. Oh, I really like the pacing. मुझे लगा थोड़ा सा फास्ट कर रखा था मैंने. Am I good, Nilesh? I'm good, Nilesh. How are you? I'm doing okay, man. I'm doing okay. Thanks for joining this stream. तुम्हें अपने अंदर कोई बदलाव महसूस हुआ? बस खांसी आई थी. खांसी आई थी. हाँ मुझे पता था. जाओ ठीक हो जाओगे. जब किसी पे बिजली गिरती है तो उसके शरीर में मेगावाट में बिजली दौड़ती है. हार्ट अटैक, लंग फेलियर, रीढ़ की हड्डी टूटना, जल जाना, भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Hold on, guys. Hold on. Okay. All right. तो हम कौन होते हैं ऑफेंस? I kind of agree. Yes. नहीं, इनफैक्ट आदि पुरुष मैंने फिगर में 2 बार देखी है. बट टॉक अबाउट एक्चुअली पहली बार मैंने देखी थी पॉडकास्ट पे रिव्यू करने के लिए, ठीक है, और दूसरी बार मैंने देखी मैं घर वालों को लेके गया था. मैंने कहा लाइक हाउ ऑफन आर यू गोना गेट टू वॉच रामायण स्टोरी ऑन PVR? कितनी मूवीज आती हैं ऐसी, एंड द म्यूजिक वाज गुड एनीवेज. तो हाँ, आई डिडंट हेट द मूवी आदि पुरुष. मामा ये जो शक्तियाँ आपके पास है ना, इन्हें सुपर पावर्स कहते हैं. मुझे भी ठीक लगी. आई ऑनेस्टली थिंक RRR was not as good as people made it out to be, and Adi Purush was not as bad as people made it out to be. मतलब I'm not saying they were even, लेकिन जो RRR थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी लोगों ने बना दी, और आदि पुरुष इतनी बुरी नहीं थी जितनी लोगों ने बना दी. गरुड़ भगवान मुझे उड़ने की शक्ति देना. कूदना नहीं. पता नहीं था कि मेरे पंख नहीं है. लड्डू खाओगी? चल भाग. बिजली तेरे सीने पे गिरी थी या सिर पे? मारा इसे. ओह, इस मूवी में क्या होता है मेरे भाई? इस मूवी में क्या था? अमन फक यू. बट इस मूवी में क्या होता है, इस बंदे को जब नई नई पावर मिलती है ना, इस शीशे में देखता हूँ और मेरी आंख लाल हो गई. वो लड़की जो मेरा लव इंटरेस्ट है, हर नेम इज़ मीनाक्षी, वो देखेगी तो क्या सोचेगी? वो जैसे ही बाहर आती है वो बंदा जल्दी से चश्मा पहन लेता है, और जैसे ही वो बाहर जाता है ना उस लड़की से बात करने, वो चश्मा उतार देता है. व्हाट द फक इज दिस मूवी? और ऐसे कुछ प्यार में चश्मा नहीं उतारता, वो जैसे उतार देता है. आदि पुरुष बैरियर जितनी बनाई उतनी ही. व्हाट डू यू मीन? मतलब जितनी बनाई उतनी ही मतलब? और ये नाटो नाटो कैसा गाना है बे? हड्डी पसली तोड़ दो. ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. खैर, this is also a very expensive movie compared to that हनुमंत movie. How was ब्रह्मास्त्र? Has anybody watched it? मेरे दोस्त ने देखी थी, मैंने थोड़ा बहुत देखा था, कुछ ऐसे खास नहीं. जो ब्रह्मास्त्र टाइप की मूवी है ना, उसमें जो एनर्जी इफेक्ट्स वगैरह दिखते हैं, जब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट VFX, डूइंग दोज एनर्जी इफेक्ट्स और ये सारी चीज़ें बहुत आसान है VFX में. कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करना, एक ह्यूमन दिखाना, डिफॉर्मेशन दिखाना, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट देन डूइंग दोस. क्योंकि एनर्जी वगैरह तो लिटरली देयर आर लाइक एलिमेंट्स जो कि यू कैन ऐड ओवर इफ यू वॉच. तो लिटरली इसी 6 साल पहले यू गेट ऐसे पैक्स. सर मेकिंग दीज थिंग्स इज वेरी इजी VFX वगैरह में. Specifically talking about VFX. I know the movie is not all about VFX. The movie is not about VFX at all. So yeah, I don't think most people realize this. Most people see energy effects और ये सारी चीज़ों को कितनी मस्त हो गई. These are the most simplest things to do. Without any reference, ऐसी story बढ़िया लगी मुझे. All right.
फिर भी इतने VFX नहीं होते ज़्यादातर मूवी में। क्या मतलब हर्षवर्धन कौन सी मूवीज में, बट आई डोंट गेट इट मैन। मूवीज में भर भर के VFX होते हैं, भर भर के, जो हम लोगों को पता नहीं भी होते। इफ़ यू वॉच मतलब एनी मूवी, आई थिंक सुल्तान की है, तो मूवीज में भर भर के VFX होते हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं होते हैं। हम लोग इट्स ऑल जनरेटेड, राइट? तो ये लाइक अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट डिजिटली क्रिएटेड। मूवीज में VFX भरे होते हैं, एंड दिस इज एक्चुअल गुड VFX की डेफिनेशन, क्योंकि जो देख के तुम्हें पता भी नहीं लग रहा कि VFX कर रहा है। Last match was about Brahmastra without any method of gotcha 18 करोड़ में बनी है ये वाली, और हनुमान है। What the fuck? This looks much more expensive than that. अगर किसी को मिन्नल मुरली दिखाई दे तो वो इस घंटे को बजाए और जल्द से जल्द पुलिस को खबर करे। Only thing that bothered me इसमें जो वो सुपर हीरो लैंडिंग इफेक्ट है ना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी टू डू, बट ये बहुत ही बुरा कर रखा है। दिस वन ये बहुत ही बुरा कर रखा है। दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीमली इजी टू डू, दैट्स द इशू विद इट। सो या दिस आई डिडंट लाइक, एंड आई थिंक यू सी अपीयरिंग स्लीपर्स एज वेल। ये देखो नंगे पैर राइट नाउ, एंड देन द स्लीपर्स कम इन द एंड। एक्टर्स डायरेक्टर्स के भी पैसे होते हैं यार भाई, वही तो दिक्कत है ना। फिर मूवी में तो हक देते हो ना तुम। कैन इंडिया मेक VFX मूवी लाइक इंटरस्टेलर और एवेंजर्स अंटिल 2030? इंडिया कैन ऑलरेडी मेक ग्रेट VFX, लाइक जो रेड चिलीज VFX है, लाइक दे आर टॉप ऑफ द लाइन। आई वांट टू सी अ गेम ऑन इंडियन मैथोलॉजी, जैसे गॉड ऑफ वॉर में किया था। कितना बढ़िया गेम बन सकता है लोग बनने कहाँ देंगे। यो सिद्धू अगर रावण के VFX वर टॉप नॉच, ट्रू। यू नीड टू एक्सप्लोर मलयालम मूवीज, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। यार मुझे साउथ की मूवीज़ का हर कोई कहता है, देन आई गेट टू सी दिस लाइक हनुमंत टाइप की मूवी। इज दिस नॉट फ्रॉम साउथ? Zero में भी VFX were great, true. Like Red Chilli VFX are top. Yeah, so here's the thing with VFX. दिक्कत ये नहीं है कि VFX बना नहीं सकते लोग, जो VFX वाले हमारे यहाँ इंडिया के या फिर कहीं के भी बाहर के भी। जब बाहर भी मूवीज़ में घटिया VFX लगते ना, तो बाहर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड थे VFX वो उस मूवी के थे, ब्लैक पैंथर जो फर्स्ट वाली थी ना, उसके जो एंड फाइट सीन होता है सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज है कि बहुत ही घटिया VFX है। उस सेम स्टूडियो ने, सेम लोगों ने एंड गेम में VFX कर रहे हैं। द इशू इज दे गेट टाइम, दे गेट मनी। इफ़ यू गिव देम टाइम दे कैन डू फकिंग ग्रेट। मैं VFX वाले बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, उस बंदे का एवेंजर्स में जॉब पता है क्या थी? हल्क की लेफ्ट आईब्रो को एनिमेट करना, कब ऊपर जाएगी कब नीचे आएगी। इतना डिटेल्ड वर्क होता है। तो इट्स नॉट कि लोगों में टैलेंट नहीं है VFX इंडस्ट्री में। यू नीड टू गिव देम टाइम, यू नीड टू पे देम। Sidhu is copying me. According to me, when I watch RRR after watching all Avengers, I feel there is something missing. हाँ RRR VFX are not top notch. I wouldn't say so. एक्टर डायरेक्टर के साथ एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर को भी थोड़ा पैसा दे दे तो अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए। I think so, maybe. I don't know, yaar. I don't know. I honestly have no fucking idea.
पतंग लगा दी पीछे मजा लगा रहे. Bro, budget of Avengers movie is like 2500 crore. हाँ. This was just horrible. ऐसे तो तूने देखी है मूवी? I don't know if you're still here. तूने देखी है मूवी हनुमान? I think हनुमान ही नाम है मूवी का, right? Horrible. स्क्रिप्ट राइटर से बेटर डायरेक्टर का स्टेट होता है आई थिंक मूवी के लिए. नॉट रियली. अल्टीमेट दोनों की जॉब ही होती है. दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ स्टोरी वर्क्स. Writer needs to understand how the story works in itself. The director needs to understand how to make the story work with every tools that filmmaking as a craft provides you. And if not that, then create fucking new tools. भाई मलयालम movies are very different than South Indian movies. एक बार देखो तो सही. Alright. I hate when any movie do impossible scenes, illogical scenes. Even in Salar, people coming one by one to cut that hero looks dumb. मैं Salar तो देखी नहीं मैंने. मैं देखता ही नहीं यार ज़्यादातर movies. पैसे की बात है. And you know, I think Akshay Kumar also made a claim once. Dude, this stream is basically making sure I never get a good career in any industry or with any good big guy. But Akshay Kumar said in one interview talking about Tom Cruise, he said कि उनका सारे कहते हैं टॉम क्रूज बहुत बड़े स्टंट करता है, बहुत बड़े स्टंट. एक तो मुझे नहीं पता यार इंडिया में ना इतनी क्यों इनसिक्योरिटी है वेस्ट को लेके. पूरे टाइम दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वेस्ट. लाइक ऑल ऑफ यू सीम इनसिक्योर. जब तुम कहते हो ना कि ओ हमारे यहाँ के भी लोग ऐसे कर सकते हैं, ओके देन व्हाई डू यू केयर अबाउट देम? व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट देम? फक ऑफ. Why are you even talking about them? But I heard Akshay Kumar say once कि Tom Cruise का जो एक my name is Akshay Kumar, everything has a price tag to it for me. But नहीं, Akshay Kumar said in an interview कि जितना Tom Cruise का एक उसमें लगता है स्टंट में उतने में हमारी मूवी बन जाती है. तो मत बनाओ ना साल में 6 मूवी. बनाओ एक अच्छी. See, you want to have your cake and eat it too. तुम्हें 20-20 मूवी भी बनानी है और फिर ऐसा भी क्लेम चाहिए कि हम तो उतना ही अच्छा कर लेते हैं जितना वो कर रहे हैं 3 साल में एक मूवी बना के. इससे आगे बढ़े तो वो पॉडकास्ट देखें 1 घंटे का. देख सकते हैं यार, देख सकते हैं. वो चंद्रयान के लिए बोला ना. ओके वेट, चंद्रयान के लिए आई डोंट नो. चंद्रयान कोई मूवी भी आई है क्या? Quality is better than quantity any day. और आता तो थोड़ा I hate when I watch movies with dubbed audio. वो बहुत ख़राब कर देती हैं चाहे कोई भी मूवी हो. Dubbed audio ruins movies. दिमाग ख़राब हो गया पिक्चर देख के. अक्षय का हाथ में थोड़ी ना है कि अच्छी बनाए या 6 बनाए. प्रोड्यूसर लगाएंगे ना पैसा. उसके हाथ में ये है ना कि वो कौन सी मूवीज़ में काम कर रहा है, कौन सी में नहीं कर रहा. एंड अक्षय इज़ सो बिग दैट ही गेट्स टू चूज. अक्षय कुमार इज़ सो बिग. आई डोंट इवन नो कि मैं कहाँ पढ़ रहा था वो चीज़. नहीं पढ़ नहीं रहा था, मैंने सुनी थी कहीं से. नहीं, एक वीडियो देखी थी एक्चुअली कि जो मूवीज़ हैं इनके ज़्यादातर पैसे तो स्टार्स ले जाते हैं. भाई बिजनेस कर लो ना और भी पैसा कमाओ. हैव यू सीन द मूवी तमाशा चैट? तुमने देखी क्या? अक्षय कुमार एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग ऑन इट फॉर हिम. ऑलराइट. अक्षय का भी तो प्रोडक्शन हाउस है ना. आई डोंट नो. तमाशा इज ग्रेट. तमाशा इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन फ्रॉम बॉलीवुड. A great story,
done right. A great archetypal story done right. So here's the point of Tamasha. They first meet. They're almost like Adam and Eve. They first meet in the Garden of Eden. जो वो होते ना कहीं बाहर. Adam और Eve की actual story में क्या होता है? The moment Eve gets self knowledge, she gets it through the snake, through the devil. She gets self knowledge. She offers it to Adam as well. That's what the movie is, Tamasha. When they get out of the Garden of Eden and she sees कि अरे ये तो Adam की तो फटी पड़ी है. Then she gives him again the self-awareness, the self-knowledge or something like that. There are a lot of archetypal themes. इकट्ठे आके कुछ मस्ती बनाते हैं. Really good movie, Tamasha. And it's not even that. It's like there are elements of feminine and masculinity. So femininity, if you read about it, is basically chaotic. It's nature. It gives birth. In chaos में तुम्हें नया birth मिलेगा चीज़ों को, right? Chaos में two random things. Why, sir? Thank you, man. If a place is chaotic, so two things will randomly interact to create something new. So chaos gives birth to new things. Chaos is nature. Chaos is motherly, right? So that's chaos is feminine. Masculine is something orderly, industrious. That's those are masculine traits. But masculine traits are usually not creative traits. And you get to see that in Ranbir Kapoor. You get to see that in Ranbir Kapoor के character के हर एक उसमें aspect. It's a very deep movie. किस दिन करेंगे उसके बारे में ढंग से बात करेंगे. अभी तो हग रहा हूँ मैं. I'll send you a part of Roundtable and you will hate what Ranveer says as a creative person. Alright, do send it. I love movie. I've seen. You would like to go on a date like they did in Tamasha. कौन सी डेट तमाशा में अभी इशू ये मैंने 2 बार नहीं देखी है. ऐसी मूवीज़ कम से कम आज पॉडकास्ट मिलते हैं. ऐसी मूवीज़ कम से कम 2 बार देखनी चाहिए बिफोर टॉकिंग अबाउट देम. मैंने 1 बार देखी है. तो डेट कौन सी डेट I cannot remember the date. Is there a particular date scene? Wait, what is this? Alright, screw you, Discord. कौन है आप? अरे जन्म. Okay, this one? Alright. Do you think that the modern island of Sri Lanka was not a part of the ancient Ramayana? No, it would be part of ancient Ramayana. It wasn't Ravana's Lanka. East of Maldives. That's where Ravana's Lanka was. Right now there is nothing, just a deep ocean. So effectively, you are disagreeing with extreme right-wing portals which highlight the Ram Setu as one of the most important. Correct. When we talk about megafauna, they say that all the animals that we see around us, only 1% of the animals that have ever existed, which is very true. And also, the biggest extinction of them happened in 11,000 BC, beginning of Younger Dryas. Damn. 4 tusked elephants that are also described in Ramayana. You see, for example, that vertical line. This is basically 15 meters sudden sea level rise in the middle of 6 millennium BC in the Arabian Sea. That's Krishna's Dwarka getting destroyed. Where is the South America angle written about in the texts? Indra is the deity of the east direction. Indra established it there. Ananta is referred to the Andes mountain with its Sahasra heads as each peak. Oh, this is a real thing. Yes. Okay, it's like almost 800 feet tall. Damn. How deep have you gone in this stuff, sir? Shurpanakha is actually been married Ravana's sister and has gone to South America. It's lost knowledge. They don't know who created. They don't know why it was created. But it's described in the Puranas. Ramayana. When I used to see Graham Hancock and Randall Carlson's work, always think there needs to be some Indian person who needs to go down and do the same kind of work but from an India context. Honor of my life meeting you today. What happened? Most Indian movies right now lost logic. Yeah, they lost credibility. इस सिनेमा अरे नहीं जस्ट कि वो मिले थे एंड आइडेंटिटी रिवील नहीं करते. ओके व्हाट हैपेंस इन कोसिका स्टेज इन कोसिका. ऑलराइट. Yeah, sure, that seems fun. There's going to be many points during the course of this conversation where in Tamasha when they both meet, they didn't tell each other who they are, as in a very unconventional date also. Yeah, but that seems very fun. But that's almost pata kyun? The issue with that is it will be an experience, true. But the issue with that is it's like an invitation to fall in love. You'll always fall in love in shit like that. Because you have complete freedom, no responsibility, कोई डर नहीं है तुम्हें. And that's what fucking Garden of Eden was, right? When humans, like in the story of Adam and Eve, when humans did not have self-knowledge, they didn't have responsibility, they didn't care, they were naked. Anyways, and do you think Ram Setu is real? I think it doesn't matter if it's real or not. That's not the important thing to focus on. you'll be shocked.
you'll be sitting back in your seat wherever you are, whether you're watching this, whether you're listening to this, and you're going to go into a spiral of thought. And there's very few guests who can invoke that kind of reaction in both myself and the audiences. We found an all-star, ladies and gentlemen. Absolutely loved speaking to Nilesh Oak. I've asked so many people these questions about the Mahabharata and the Ramayana, and nobody in the history of TRS has been able to answer it with the kind of proof, with the kind of research, and with the kind of conviction that Nilesh Oak has answered these questions. We approached this historical conversation from a scientific and evidence-based bent of mind. You're going to enjoy it as much as I did. It's the first part of an epic 2-part conversation. If you're someone who enjoys Indian culture, this is one of the ultimate conversations that have been uploaded on the Indian internet. I can promise you that, and I say that because of the content that will follow this intro. This is Nilesh Oak on TRS. What the fuck is Indian internet? Shut up, dude. Oh my god. I hate this. I hate जब लोग ना first होने के चक्कर में कुछ भी कहते हैं. I'm the best streamer in this room. Fuck off. What if you don't get to see other person again after that date, even if you like them? Would you still go just for an experience? That's the issue. It's like an invitation to fall in love. You'll always fall in love in those experiences because you have a lot of pleasure with no responsibility. So it's just gonna end in tragedy. But if you don't get to that, I mean, Bollywood ने राम सेतु के नीचे मथुरा दिखा दी थी. अरे अरे. I'd also say passion-based modern-day historian in many ways. This is something I've learned from Dr. Luke Coutinho, who told me that like expertise is always an outcome of passion, and expertise becomes more of an expertise when you back it up with evidence and data. So we're doing a Mahabharata and Ramayana episode after a very long time on TRS. We've had archaeologists on the show. I've noticed that often academically trained archaeologists and historians really value evidence. And I'm sorry I'm starting it out like this, but they often dislike people like you. I don't think audiences dislike people like you, but it's always the professionals of an industry who've gone through that grind, who put in those years of work in their own studies, who don't love it when someone without a degree actually comes and speaks. But if you scan history, there's been a lot of greats who've not gone to a particular college to study a particular subject and still become experts of that subject. Yeah. Let's begin by talking about dirt archaeology. It's not that. Oh, hold on. Okay. Mainstream historians या फिर mainstream जो archaeologists हैं, तो they don't hate just because कोई बंदा randomly आ गया बिना degree के. Okay, maybe some of them do, right? But they hate when you disregard everything their entire field has done. That's what they hate. And the best podcast I love in the TRS is Sir Robert Kiyosaki. All right. I'm on Bollywood. I remember reading one of the Yuval Noah Harari books, I can't remember which one, where he spoke about the concept of fictions. So he said that when you go buy a car which is created by Skoda, okay, what is Skoda really? It's a company. Who thought of the name Skoda? The guy who started it. Who thought of the logo? The guy who started it. Now, when you think of Skoda, you're thinking of a car company. But truly, what it is a fictional creation of the guy who started it. The same is the case for Beer Biceps, my channel's name. In 2014, I thought of the name and I thought, I'll make this YouTube channel. I'll call myself Beer Biceps. It's a fiction that came out of my head. Similarly, that's the case with history as well. Before history was taught in schools, some person in the past thought that we need to teach our kids about all these things that happened before they came into this world. What do we call this subject? Let's call it history. Eventually, history grew in the story of mankind. And mankind reached a point where they realized we need to go deeper into history. Okay, so let's start a new field called archaeology. So archaeology also began as a fiction in someone's mind, and someone had to decide the rules of archaeology based on their experience in the field. Therefore, the rules of dirt archaeology were created, and dirt archaeology was created as a subject. Now, these same rules which began as a fiction in some Europeans' mind have made their way to archaeologists worldwide, and they are the flagpoles that these guys follow, which may be very good. Archaeology is a Western concept. मैंने कहा ना यहाँ पे नहीं, but हाँ, what is he getting at? The book name Cash Flow Quadrant I finished yesterday was one of the best book I read about how money flows. All right, good for you, man. For their process, but I definitely feel that those flagpoles limit you to some degree at least. Yeah. And that's what I picked up from people like yourself and Graham Hancock. That you guys think in open space, you guys think in free space, you all reference ancient texts, and you all don't dismiss ancient texts based on the fact that they simply don't follow the rules of dirt archaeology. Now, apparently, when you ask an archaeologist in India about the truth about the Ramayana and Mahabharata, often they'll say that we don't have out and out evidence that it happened at this 5000-ish BC mark. What's the mark for Mahabharata? For them, you mean? No, what's the mark? That's like, so Mahabharata happened, I'll give you the formula of 7. Mahabharata happened more than 7,000 years ago. That's what the evidence shows. Ramayana happened more than 14,000 years ago. And Rigveda definitely more than 21,000 years ago. So think of the multiplication of 7. I'm thinking of a very weird thing in my head which I have to voice out. But based on the dates that you've given, which is 5561 BC, that's the Mahabharata, and Ramayana is 12,209 BCE. Like, think simplicity, you can say more than 14,000 years ago for Ramayana. Gotcha. Yeah. So we are... Okay, so if you want to think of it as sevens, there's nothing wrong with it. But if you want to add a mystical quality to 7, please don't do that. क्यों? क्योंकि हम अभी 2024 में देख रहे हैं ना ये, तब it might work as sevens. लेकिन अभी हम 2000 साल पहले देख रहे होते, तो it would have been different, right? It would have been Mahabharata would have been 5,000 years ago, और वो कितना थी? 7 before that, whatever 12,000 years ago. So there is no real relation. It only depends कि तुम कहाँ से देख रहे हो. So there is no real mystical quality to the sevens. I don't know if he's even implying it or not. I'm just pointing it out. I want Ranveer to ask क्या आप महल के बारे में सोचते हैं? We are 7,000 years away roughly from the Mahabharata, and the Mahabharata was 7,000 years away from the Ramayana according to your... It is 7,000 for a reason. Cristiano Ronaldo. So Yes. So we are as far from the Mahabharata as the Mahabharata was from the Ramayana. Yes. Do you think that's why the knowledge is coming to the forefront again?
Because of the 7 multiplication of 7. Yeah. Could be. I mean, I'm not a numerologist, but hey, Mystical good cycle thought. of So are you saying 2000 साल पहले इस चीज़ की knowledge नहीं थी? 7,000 years. Cute thought. Good thought, yes. You know, I tell you one more thing I learned through the show. No, stupid thought. Stupid thought. 2000 साल पहले भी इस चीज़ की knowledge थी. By any stretch of the imagination probably थी. Which is that when Krishna passed away at the end of the story of the whole epic, they say it was the beginning of the Kali Yuga, and the Mahabharata happened in the Dwapar Yuga, the Ramayana happened in the Treta Yuga. Now again, if we go back to this timeline that I just mentioned here, effectively does it mean that the time difference between each of the yugas is 7,000 years? When they reach that conclusion, I would say I will give you a brief on the Yuga, but that may require a full episode. That's how fascinating it is. Yuga, in the Indian context, the simple Then it's not a very good brief. I'm sorry. I'm hating for no reason. I'm sorry. definition, if you look at the time, is a period of time. That's a simple definition. A certain period of time. Like, it's like saying, bring me a cup of tea, but the cup size may change. Something like this. So Yuga is a certain period of time. There is one researcher in Odisha. He's a retired IPS officer, Arun Upadhyay. He has collected 26 plus different definitions of a Yuga. To that, I have added 10 plus. So possibly the number sits at this. But to simplify the matter, I would say Yuga is not even the period of time. Okay, there's a sense of it. I'll give you a quick, Niles notes on that. Clips notes. Okay, 4 types. For example, in Aitareya Brahman. Okay, this is based on your action. The Yuga is defined. I will just, instead of Sanskrit, I'll just go English straight. What is Aitareya Brahman? I don't like people clearing or fighting over history and lost to think about present and future. See, history is quite important. History is basically an expansion of the function of our memory. The function of our memory, जो reason है हमने memory evolve करी है, that is so that we can we need to remember this. This is important. Why do we as humans have memory? हमारी याददाश्त क्यों होती है? That's a legit question, right? क्योंकि एक time था जब humans did not have memory, right? So it's an important question. Why did we evolve the capability of having memory? The simple answer to that is so that we could remember our mistakes and not repeat them. That's literally why we evolved memory, the capability of memory. Memory is also tricky. We can talk about it some other time. History is an expansion of our capability of memory. So history is definitely important for modern times as well. Why is Ranveer wearing karate dress without a belt? Why is Ranveer's ears are this way? I mean, okay, I honestly don't mean to be a dick, but like, is it just me? I mean, क्या सबके कान थोड़े से अलग होते हैं? Like, see, my ear, like, यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है. His ear is very, like, nice and simplistic. I'm saying nice because I don't want to be a dick about it, right? वैसे सर बेल्ट है नीचे वो फ्रेम में आ नहीं रही बस. All right. Hello Abhinash, how are you, man? I'm reading bio NCRT. They literally told a story about Adam and Eve there as a theory. Huh. Aitareya Brahman will go now say, think of Vedas. The Veda has a Samhita, which is the mantra. After that, when the mantras are used in a yajna, there I think सबके कान थोड़े से अलग होते हैं क्या अंदर से? Like his ear is also a little different. Voice low है bro. Oh, I'm sorry, man. are some other manuals, like how to do the yajna. Okay, so car, you know how to drive a car, but how to maintain the car. ये इसको शूटा हुआ लग रहा है ना? It's okay, but his ear looks more clean through that. Or how to start the car, check the car. So that is the Brahmana Grantha, nothing to do with the word Brahman otherwise or something like this. Then there is Aranyakas, which is a philosophical discussions on those mantras and the yajna. And then there is Upanishad, which is essentially Guru teaching that same philosophy and everything else to Shishya. So like that. So one of the Brahmana Grantha, Aitareya Brahman, connected to Rigveda, it says when you are sleeping, you are in the Kali Yuga. When you wake up and sit up, then you are in the Dwapar. When you stand up, you are in the Treta. And when you get into action and you start walking, that is, you are in the Satya Yuga. Okay, I need to understand one thing before. What's about your obsession with ears? Do I have an obsession with ears? Matlab, have I talked about it more than I should? Hold on, let me that is the Brahmana Grantha, nothing to do with the word Brahman otherwise or something like this. Then there is Aranyakas, which is after that, notes, okay? 4 types. For example, in Aitareya Brahman. These are not cauliflower ears. Okay, this is based on your action. The Yuga is defined. I will just, instead of Sanskrit, I'll just go English straight. What is Aitareya Brahman? Aitareya Brahman will go now say, think of Vedas. The Veda has a Samhita, which is the mantra. After that, when the mantras are used in a yajna, there are some other manuals, like how to do the yajna. Okay, so car, you know how to drive a car, but how to maintain the car, how to start the car, check the car. So that is the Brahmana Grantha, nothing to do with the word Brahman otherwise or something like this. Then there is Aranyakas, which is a philosophical discussions on those mantras and the yajna. And then there is Upanishad, which is essentially Guru teaching that same philosophy and everything else to Shishya. So like that. So one of the Brahmana Grantha, Aitareya Brahman, connected to Rigveda. Do you agree with the reservation? I think we do need reservation in some places, definitely. Is he a historian or archaeologist? He's not a, registered archaeologist or historian, I guess. He's more passionate about the subject. Alternative historian, I think people might call him.
Or he study culture more than history, I would imagine. It says when you are sleeping, you are in the Kali Yuga. I don't know, I'm just assuming. When you wake up and sit up, then you are in the Dwapar. When you stand up, you are in the Treta. And when you get into action and you start walking, that is, you are in the Satya Yuga. Krita Yuga. It says Charaiveti, Charaiveti, Charaiveti. Keep on walking, keep on doing action. Stay in the Satya Yuga, stay in the Krita Yuga. Now, this is nothing to do with the time. This has to do with action. Okay? So let's look at another one, the emotional state. Like Einstein's would have heard, like, you sit with a beautiful lady for an hour and feels like a minute, and you sit on a hot plate for a minute and feels like an hour. By the way, do you know that Einstein actually performed that experiment? So that will be a digression, so I'll not go there. 1938. After doing this experiment, he wrote a paper. He borrowed Charlie Chaplin's wife for the date. And he traveled from New Jersey to New York in Oyster Bar, sat there, and when he felt like, looked at the clock, 57 minutes, and he felt like with Charlie Chaplin's beautiful wife, he felt like it was only a minute. Then he went to New Jersey, performed the other experiment, sitting on a hot plate. Anyways, so exactly like this. But that's not how experiments work, first of all. But no, it doesn't. It doesn't feel like a minute when you're sitting next to a beautiful girl. These are nice things to say. Yeah, I'm being overly critical. ठीक है? क्योंकि I'm trying to really understand it. और reason being क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो podcast है ना, ये थोड़ा सा इस तरीके से कि सारी rationally चीज़ें समझाएगा. So I wanna make sure I don't miss much rationality. If he was just talking about culture, I would just take it all. All right, fair enough, right? But this seems कि podcast उस direction में जा रहा है, so I'm just being overly critical. I think Logan Paul got more interesting guests than TRS. उसके इतने मैंने देखे ही नहीं यार. What would you prefer, reservation based on income versus a reservation based on caste or both? I think both. दो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत है ना. I hate pseudo intellectual people on podcast. Yep, I have been that. I'm still that. This is a stream instead of podcast though. You just don't realize that time is passing when you are having fun. Simple. Sure. But even sometimes when you are having too much fun, it's just amazing. And you just see the time flow. Kama Sutra word banned in YT chat. Oh, okay. Nope, it's not, Aman. That's the reason I wanted to see this here. All right. In the Bengal, there was a great saint. You might have heard the name Chaitanya Mahaprabhu. Like Hare Krishna movement sort of comes from that. He wrote only 8 shloka. One of the shlok he says, because he was a great Krishna Bhakta, Radha and Krishna Bhakta, he says, Yuga yatam nimeshena. It's Tyson versus Jake Paul. I think it's a stupid fight. So the word Yuga yatam nimeshena, Chakshusha Pravusha yatam, Shunyaditam Jagat Sarvam, Govinda Virahenami. If I have a separation from Govinda, my Ishta Devata, Nimesha, just a blinking of an eye, that time feels like a yuga. So he's stating an emotional state, just like Einstein's theory there. This is the second kind. The third kind is what people have confused for the fourth kind. The third kind is like, you have heard 432,000 years of Kali Yuga. Have you heard that? Yeah. Double that is like a Dwapar, 864,000. Triple that is a Treta, and then 4 times that. That has absolutely nothing, nada, to do with the chronological yugas of Ramayana, Mahabharata, and so on. That has everything to do with the mathematical computation formulations in astronomy that allows us to tell us the absolutely precise and accurate orbital periods of planets. But somewhere that confusion happened, and it was used and understood to be the durations of yuga. And that's why you are comfortable when only 7,000 years. I'll come to that in answering that. The third one is basically there is a yuga for 5 years. Okay, in the calendrical yuga, the Panchanga yuga, and then that was used along with the astronomy evidence of the type I refer to talk about the time periods. Okay, now to answer that question, so you said it seems like 7,000 years and the yuga is changing, possibly so, but Mahabharata gives a beautiful definition. If you remember recently, our Prime Minister Modi ji, he referred to Kala Chakra badal raha hai. If you have heard that statement in the context of Ayodhya Mandir and so, you know what it is. Actually, how do you change the Kala Chakra? We do it, and Mahabharata says Raja Kalasya Karanam. A king or administrator, depending on how he administers the kingdom, the particular type of yuga comes. And I will not belabor on that point, but Mahabharata goes on giving many examples of this. So depending on the administration, a time comes, and I add my original contribution, just like Raja Kalasya Karanam, I say Praja Kalasya Karanam. Praja has to develop the civic sense also, and a different type of yuga comes. Quantum physics. With that word, all right. No problem, not telling you. Today, social media are full of podcasts, Gurudev, Baba, motivational speakers, but these people say nothing new. It's a generation who are actually lost. True. I think podcast, bro, is sponsored. What would you like to say about that 7,000 year duration? It's very magical. Okay, I find it very useful in the sense of mnemonics, but just the way I look at things, although it's a fascinating numerology thing, I don't read more into it. Okay, fair. Let's talk a little bit more about the reality of the Mahabharata. The one thing I always questioned even as a kid was, what were Rakshasas? When you talk about Hidimba, Ghatotkacha, Bakasur, effectively, if you truly try attaching it to reality, was Bakasur some kind of a cannibal? Like just a really well-built cannibal? Was Hidimba and Hidim also something similar? And then if that's the case, why do we have a Hidimba temple in Himachal Pradesh? Where they say that this is actually near Kheer Ganga, which is now known for stoners who go up to trek to Kheer Ganga. Right. But there is a Hidimba temple there. Yeah. That's one question. Second question attached to that is, this is something very, very fascinating I learned from a Parsi priest who was on the show. What he spoke about was that Zoroastrians are also an ancient culture, and I've really deep dived into Zoroastrianism, which is the religion of the Parsis. I figured that it's perhaps definitely the sister religion of Sanatana. I'm pretty convinced. I agree. Even when you talk about the modern practices, it's literally in parallel with Sanatana. Be it worshipping fire, be it mantras, be it Avastha, how we have Sanskrit. Now, in their mythology, the word Daiva was villainous. Yes. In our mythology, the word Asura was villainous. Yeah. Cuter fact,
in their mythology, Ahura is noble. Like it is the name of the angels. Yeah. And they pronounce Sir as her. We have Somras, they have Homerus. Yes. So their Ahura, is it our Asura? And their Daiva, is it our Dev? Correct. Now, if again we try attaching these pieces of culture to reality, perhaps we were two warring tribes. And in our epics, the Asuras are painted sort of as villainous. But if you actually study the Vishnu Purana, if you actually study the Ramayana, there are some slightly heroic Asuras as well. So it's not like Okay. I think podcast is fun. Anyone who reads Mahabharata Vedas, they know all these are basic. If you are on the right path, you'll know by default. Most Western philosophers don't know of Mahabharata. Were they all on wrong path? Avinash. भाई कल जादू होता है क्या? भाई काला जादू होता है क्या? नहीं. Which kid, based on everything I know, there's nothing I've ever seen which to me seems like हाँ ये कोई supernatural काला जादू or something like that. Which kid thinks of Rakshasas in childhood? They are just scared. And this Ranveer dive deep into everything pseudo intellectual. यार पता है मैंने एक बहुत पहले सोचा था एक पॉडकास्ट बनाऊंगा उसका नाम होगा द pseudo intellectual podcast. I thought it was a good name. भाई ये ठीक मानते हो? अगर नुन्नू का नाम जादू है तो काला जादू you're painting all of them as negative. You're painting most of them as negative with some exceptions. And I'm 100% sure that they would say the same about Daiva and Deva. Yeah. Also, they were based out of Central Asia, Iran, Uzbekistan, all these places. Now, was that what we count as Patal Lok in our culture? There is a name for that land. Not Patal. Patal would be South America. Okay. In This one is Uttara Kuru. Okay. And Uttara Kuru was known from this. We can talk about like Ramayana times because there is a reference to Kuru jungle in Ramayana, which is like a Haryana area. But the Kurus were known. Uttara Kuru was known to Ramayana. So 14,000 years ago, also Uttara Kuru existed, which is Iran. Think of northern Afghanistan, Turkmenistan, Kazakhstan, that area east of the Caspian Sea. 2,000 years ago, the Greeks also referred to that land. You know how? Uttara Kuru. Basically Uttara Kuru. Okay. But that may take another episode. But let's come back to this. Actually, I studied just like what you said. What you studied. Not knowing is way better than pseudo intellectual. True. Subscribe to it. Not knowing best name give ever. फिर तुम्हें कभी ना आता उस podcast पे. Alright, yeah, you guys are fucking idiots. You don't understand sarcasm. Two uncles using their all brain cells. I think podcasts are getting out of fashion. They might be. The Persian for a long time. We hope not. My study started with Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, who wrote a book, the Orion and then the Articom in the Vedas, going back to 140, 150 years. By the way, he is the Adya archaeoastronomer in the world, not just India. Using astronomy in a way to understand our history in the modern times was started by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Okay, so can you read my last chat? Oh, sorry, I missed it. So I've seen videos of people getting hurt when their voodoo doll is burnt, pinched, where they are all playing along / acting. यार videos देखनी पड़ेंगे depending on that. अरे चेस्ट डोज बोला अपने को जॉफरी. ट्रू बात ही ऐसी करी तुमने. references that you said to, and I would ask you a question. Did your guest, the Parsi guest, mention how far in the back in antiquity they refer to Zoroastrian religion? Yeah. Because I will say, if you want to say the number, that's great. If you remember how far back he wanted to go. It went roughly to what you're talking about as a Ramayana. Great. Because in Mahabharata, there is an indirect reference to Narad Muni coming to Yudhishthir, and Narad Muni think of this as the journalist, but journalist with integrity. Okay, so there is a reference to Narad Muni coming to Yudhishthir and referring to a certain practice with the fire worship and all of this in a somewhat distant land, but not that far distant land, and as a very mysterious, interesting practice in about 7,000 years ago. Okay, but there are enough references. In fact, there is this reference to Atharva Veda. They are the followers of Atharva Veda. That is what is known. But something else, Asura. Actually, if you look at into the Rigveda, Asura is actually very much eulogized, very much praised. It's not seen in the negative way at all. Indra is called Asura, which is the highest deity there. So that's Varuna is called Asura. Over time, this is what happens. Why now we? Just like Josh Talk has become Me Too movement platform for girls being sexually abused. No, Josh Talk is just horrible. Even TED Talk is horrible now. These are too saturated. कोई भी आगे कुछ भी बोल रहा है. Can people get hypnotized and thus feel that they're being hurt? Is hypnotism possible? Hypnotism is definitely possible, yes. Journalist with integrity. You may say Rakshas as a bad person. Rakshas, the Sanskrit basis for this, there can be many meanings. That's the beauty of Akshara. Shabda can have many meanings in the context, but Akshara, which is just a letter, can also have many meanings. When you combine it, becomes different meanings. Rakshasa is Rakshamiti Rakshasa, the one who protects. But think of it, one who protects means he has to be powerful or she has to be powerful with the weapon, knowledge and everything. Now someone who is a power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Over a period of time, something counter can happen. Simple example is our Sikh brothers. Not all of them, but the origin of Sikh is into protecting Hinduism. But eventually, when the Khalistan movement came into being, they were talking things against India or against Hindus and so on and so forth. So those who were meant to protect Hindus at some point for 1,000 different reasons, we're not going to that, almost became enemy. That can happen. That's the reason of this. Now, so Ravana was a Rakshas. No, but with that claim, you just made them corrupted. And Nilesh, keep my intellectualism out of your mouth.
My intellectualism is my intellectualism. It's none of your intellectualism. Tumbad was best. Tumbad. Ravana is in the disciplic succession, he is a son or a grandson, great grandson of a great sage, great rishi. But person can turn around, that can happen. Back to the Hidimba and so on, so forth. Who are they? Basically, they're human beings. I mean, just to simplify things, I would say maybe they were people from Africa and they will be having a connection. So somewhere looked at something, they were looked at as a different, slightly different things, different powers. I'm jokingly saying this, but actually there is enough basis. With Ravana who has conquered the whole world, he had gone all the way to South America. I mean, in every direction. And he was, even India, he was controlling all the way to Himalayas and all the way to where we are sitting right now. That's why, his generals were there into Nasik, from where actually eventually Shurpanakha incident happened and then Ravana snatched away Sita. So he was controlling the pockets, in old time. He was very powerful. So because of that, he has these relationships in the different parts of the world, and then so intermarriages, so you can say inter-transnational marriages across the boundaries. So but they were human beings, very powerful human beings, very So he believes all of this literally happened. That's what it sounds like. altruistic, very virtuous human beings. My conjecture, and again, this is based on just hypothesis, perhaps slightly emotional hypothesis because I love these epics, is that I think lifespans were longer then. Lifespans were directionally longer, but not sometimes you hear terms like, say, Bhagwan Ram, after he returned, ruled for 11,000 years. That is not to be taken literally. There is a statement that sometimes the formula helps you. So, okay, if that is not taken literally, the question would be, why would you assume the lifespans were longer anyways? Like, there's nothing scientifically that indicates that lifetimes longer the. So why would you assume that? In engineering, you substitute something and kilocalories, calories like that. So there, the formula is Ahoratra Samvatsara. The common sense should never be left out. So Ahoratra Samvatsara, which means in certain circumstances you consider a reference to a year equal to the day, and of course vice versa. Gotcha. So 11,000 can be divided into days, and that will come to 30 years or something like this. Got it. So not those extreme years, but to your point, absolutely valid. Based on the calculations in the Mahabharata, Hold on. which means in certain circumstances you consider a reference to a year equal to the day, and of course vice versa. Gotcha. So 11,000. Why? Just to make it sound more logical? Was there any other reason? Lifespans were directionally longer, but not sometimes you hear terms like, say, Bhagwan Ram, after he returned, ruled for 11,000 years. That is not to be taken literally. There is a statement that sometimes the formula helps you. In engineering, you substitute something and kilocalories, calories like that. So there, the formula is Ahoratra Samvatsara. The common sense should never be left out. So Ahoratra Samvatsara, which means in certain circumstances you consider a reference to a year equal to the day, and of course vice versa. Gotcha. So basically what he means is, to make sense of it, to make it sound more logical, we'll just change the metric from year to day. So 11,000 can be divided into days, and that will come to 30 years or something like this. Got it. So not those extreme years, but to your point, absolutely valid. Based on the calculations in the Mahabharata, we have to accept, there is no other alternative to accept that Bhishmacharya was about 140 plus years old at the time of Mahabharata war, and he fought for the first 10 days. That's almost impossible for us to believe. I don't mean folks out there. It's impossible for me to believe that. But There's books like Autobiography of a Yogi where they speak of Wait, hold on. ये बहुत ही ज़्यादा हुआ है. impossible for us to believe. I don't mean folks out about 140 plus years on the calculation days, and that will come to 30 years or something like this. Got it. So not those extreme years, but to your point, absolutely valid. Based on the calculations in the Mahabharata, we have to accept, there is no other alternative to accept that Bhishmacharya was about 140 plus years old at the time of Mahabharata war, and he fought for the first 10 days. That's almost impossible for us to believe. I don't mean folks out there. It's impossible for me to believe. So he says महाभारत definitely कहती है जो भीष्म थे वो 140 साल की उम्र में लड़े थे. And he also saying he doesn't believe it. It's impossible for him to believe it. Nilesh used scientism. Bro justifying illogical things with the help of science. Bro did Brooke promotion in a Loki manner. अच्छा इसकी book है क्या? Believe that. But There's books like Autobiography of a Yogi where they speak about detailed Kriya Achha, Yoga, yeah. which is a form of yoga that involves, for lack of better words, your own energy channels or pran or chi, like Chinese culture. They actually talk about how you can extend the biological life of your body, and there's multiple chapters on it. Not going to deep dive into that for the sake of a free-flowing conversation. Yes. So I would assume that lifespans were longer. Yes. Health was generally better. Yeah. But the Why just assume that? human outcome of a longer lifespan is a longer time. And we didn't have antibiotics. Germ theory was not developed. Okay, this is gonna make me sound like a hater. लेकिन जब इन चीज़ों को literally लेने की कोशिश करते हैं और literally समझाने की, you're actually not respecting them for what they are. Mythology नहीं बोलना मत बोलो, theology नहीं बोलना मत बोलो, epics बोल लो, जो मर्जी, whatever word you use. These are very important stories. I don't think without stories like these, without different stories like these, different cultural stories like these, like humans would exist as we do. These narratives help us make sense of life. Good morning, बोलने आया हूँ. Good night, अच्छा sorry. Good night, Montage. Thanks for joining. शुश्रुत चिकित्सा, ये इसका मतलब क्या होता है यार? Both lost neurons. अमन टाइम वेस्ट करवाने वाला है. ये सर्च करवा के I think. Oh no. What is it? What is the father of is the most representative work of the Hindu system of medicine. It embraces all same we would be much ahead. No, that's not true, Joffrey. That's not true at all.
That's not true at all. In fact, the only thing that really differentiates us from animals is our capabilities of constructing narratives. Everything else that we do is an expansion of that. अपने माइंड की बेस पे जो भी हम उसका बात करते हैं. What is the claim? चिकित्सा में like was there germ theory and theory and antibiotics? Aim to build bigger kingdoms. कल ही तो देख रहे थे. नहीं, but that was completely different. हाँ, sure, सर्जरी का कॉन्सेप्ट था, sure, किसी ने बनाया था, that's fair, that's totally fine. That doesn't mean germ theory का कॉन्सेप्ट था, right? No, bro, I wonder what actually happened, and what's been told to us are just an added spiced up version of everything, as people like spicing things up. Yeah, has anyone read Ramayana? किसने पढ़ी है रामायण, मुझे बताओ. Like I'll wait. किसने रामायण पढ़ी है? वाल्मीकि रामायण I'm talking about. Come on guys, quickly. तब जम्स नहीं होते थे नीलेश. Not me, पढ़िए, वैसा नहीं पढ़िए. Alright. तब जम्स नहीं होते थे. What do you mean, Aman? Are you being sarcastic? तो वैसा isn't that the concept of रामायण? जो वाल्मीकि जी थे उनको किसी और ने बताया था कि पुरुषोत्तम राम की कहानी, एंड फिर वाल्मीकि जी कहीं और गए, उन्होंने वहाँ पर एक बर्ड को हर्ट होते देखा, एंड देन ही रोट इट ऑल डाउन. इज दैट नॉट हाउ द स्टोरी गोज? इज देयर एनी दैट कॉलम फ्रॉम इन द स्क्रिप्चर? वेट, व्हाट? गेस हूज जस्ट डोज नाउ? Dude, but अच्छा, पहले तू ऑनेस्ट क्लेम दे, ठीक है, एक लेजिट क्लेम दे, उसके बाद जब मैं काउंटर क्वेश्चन करूँ तो तू सार्कास्टिक क्लेम दे. वंटी टट्टी करके हाथ नहीं धोता था, है? Because effectively humans are tribal species. Yes. So effectively what you're saying is they were probably just physically much better human beings, correct, who may or may not have had some kind of mystical powers, which is why they were initially perhaps. There was a 10th pointer in my reference में तेरा सावन स्लो है क्या? Okay. से infertility होती है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होती यार. So I would assume that lifespans were longer. Yes, health was generally better. Yeah, but the human outcome of a longer lifespan is a longer time to build bigger kingdoms. Because effectively humans are tribal species. Yes. So effectively what you're saying is they were probably just physically much better human beings, correct, who may or may not have had some kind of mystical powers, which is why they were initially perhaps kept for the protection of society. They had goodness in them as well, but sometimes power could corrupt. Correct. We were like, okay, the evolution would suggest we were much stronger, we were much faster, we were much more flexible, probably even. भाई तुमने चिम्प्स को देखा, हेयरलेस चिम्प्स को? हेयरलेस चिम्प्स ऐसे होते हैं भाई, ये देखो. हाँ, हो सकता है हम ऐसे थे, close to this, but we weren't as smart. क्या बोल रहा है वैसा ने अर्ली लाइफ? अरे Valmiki was born in Agnisharma to Brahmin named Yeti. भाई मैंने 5 साल सिगरेट पी है एक दिन में, 5 अप्रोक्स, तो मेरी कितनी लाइफ कम हो गई? भाई छोड़ दे सिगरेट, वापस आ रही सारी लाइफ जो कम हुई है. There was something about Valmiki having been a thief. I know that one. This is section of the great. All right, here are beautiful of them. Much sucks up your inner energy. For Forrest, in the course of this life, he met 7 sages and tried to rob them as well, but and all of that. Since he achieved great siddhi, seated within Valmika, you will wait. Where is that? Okay, there it is. According to legend, once met the great sage Narad and had a discourse with him on his duties. Moved by Narad's word, Agnisharma began to perform penance and chanted the word Mara, which meant die.
As he performed his penance for several years, the word became Rama, right? उस तरीके से name of the god Vishnu. Huge all right. See, the Ramayana I read, which was supposed to be Valmiki Ramayana, and you never know about the translations or वो सारी चीज़ें, right? तो उसमें it was very clear. Like it started with the conversation to a sage. एंड उन्होंने बताया था कि देखो परफेक्ट ह्यूमन तो ऐसे होते हैं, राम जैसे पूरी कहानी बताई और फिर वाल्मीकि ने जाके वो लिखी कहानी. Masturbation sucks up your inner energy, the energy which body organs need to work independently. Excessive masturbation will hamper the heart ability to beat and thus invites other issues. Oh, the heart can beat faster. AQI 600. मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता हूँ. अभिजीकर, मैं 22 साल देरी में रहा हूँ, मेरी लाइफ से ज़्यादा कम नहीं हुई होगी. Is it in the very starting of Valmiki Ramayana? Yes, the one I read उसके तो बिल्कुल ही शुरू में थी. So I don't even know if it was the part of Ramayana or if it was the, like, you know, pretext to it. That's why the heroes of the epics like Bhim, like Ramji come in and take on Rakshasas and Asuras. My question to you now is about the South America angle because it's come up on the show. Where is the South America angle written about in the text? Okay. No, great question. It's written in multiple places. But when we are narrating something, we have to start somewhere. So let's take that point as the time of King Bali. So in the Dashavatara series, the Vaman, the Vaman avatar. And Bali, Mahabali, or sometimes known as a Bali, was a very virtuous king, sort of in the southern part, you can say, southern part of our modern day India. But it could be broad. It could have influence over Indonesia. We just don't know that. And he was so powerful, like Abhyuday. He has made such a prosperity that almost the other side is envious of it. Other side meaning within Indian context, I'm saying. And then they go to Vaman and says, do something about it. And I'm not going to that story, but to bring it back to the Patal. So the story was like this, and people should read it with all their previous spectacles removed, like with a very objective fashion. They will get this. It's there in Bhagavad Puran. So he subdues King Bali. Vamana subdues King Bali. And Yeah, talks about killing the bird, right? While he was going to the river Ganges for his daily ablution, a disciple by the name of Bharadwaj was carrying his clothes on the way. They came across the stream. Looking at the stream, Valmiki said to his disciple, "Look how clear the water is, like the mind of a good man. I will bathe here today." When he was looking for a suitable place to step into the stream, he saw a crane couple mating. Valmiki felt very pleased on seeing this. The happy bird suddenly hit by an arrow. The male bird died on the spot. Filled with sorrow, its mate screamed in agony and died of shock. Valmiki's heart melted at this pitiful sight. He looked around and find out who had shot the bird. He saw the hunter and the bow arrows nearby. Valmiki became very angry. His lips opened and he cried out, "Ha ha ha! Yeah, yes, I know the story. Yeah. You'll find no rest for long years of eternity. For you, killed a bird in loving and unsuspecting." Valmiki was a hardcore vegan. Alright, guys. भाई मेरे दोस्त की मेरे opening blood, alright, उसे help नहीं है, क्या करूँ यार? I have no idea, man. I have no idea. We'll not again go to the detail because I want to take you to Patal. And then he is essentially kept in house arrest. Okay, so he's given the freedom, but he's kept in house arrest because he has such a great influence on his population. So they cannot be just gotten rid of, so to say. And that house arrest, based on my understanding, was in Indonesia, where we call today the Bali, possibly. Oof. Now, Bhagavad Puran and many other Puranas go on to tell, and even some stray references come in Mahabharata and Ramayana also. So this incident is long before 14,000 years. The stray reference comes where after some time, the restrictions on Bali were removed. We have the description of that. But then Bali did not return. That's what it says. He went further to Patal. Where the name Bali comes from, Shri from in Bali gave this island the name Bali Dvipa in the year 913, which is from Sanskrit meaning island of sacrifice. Okay, gotcha. It does come from Sanskrit, right? Now, if you just take a straight line and the navigation, you said speculated navigation. Actually, we don't have to speculate. The archaeology, the dirt archaeology, we have evidence of dirt archaeology of sophisticated ports in India, like say Tamil Nadu, Pumpuhar, going back to 20,000 plus years. So that was there. So now he went there. Now he went to Patal. That's all it says. And then he established various colonies: Sutala, Atala, Talatala, Rasatala, and many colonies like that. Now, if you take then the sort of a narration breaks down, because after that there is not much description. The descriptions do come as how opulent and prosperous that land is. And now that after the Spaniards, it's very hard to believe that is the case. But actually, if you look at their archaeological history and other history, it is. I've been there many times. It's many times. I mean, I speak broken Spanish. Enough to get around myself alone every country multiple times. But you see, for example, Peru, they have 400. They did not have now. In the ancient times, they developed 400 varieties of potatoes.
and they know which potato to plant at which height and so on. If you look at the names, you'll find some fascinating things. For example, so Bali did not return, went further to Patal. Now this is the relationship. Bali's great-great-grandfather is not immediate father, but it looks like as if he's a father, grandfather. No, not really. Many generations in between. He's a Virochana, Prahlad, if those are the names. Now, in South America, there is a story that somebody came from across the land, across the ocean, to civilize us. And do you know what is the name of that person? Viracocha. Now, if you see the spelling, it can be Virochana, literally, Viracocha. And he civilized us. That is what the belief there is. So in the South America, the Incas, but you come further up to the Mexico and all that area. They have many stories like this. Another one, in the Mexico, there are these people are called Aztecas. Aztecas. Now that has to do with Agastya, but also Aztec, the sages. Damn. And think of the snakes. Like, as a child, forgive me, as a child, when I grew up in Konkan, halfway between Mumbai and Goa, and we used to see lots of snakes. And, our elders used to say, maybe to get rid of our fear, if you see a snake, just say, Astik, 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 3 times, and the snake will not do anything to you. Usually, snake doesn't do anything to you. But that sage Astik is connected with the Nagas. So, Nagas, just like the Rakshasas, were human beings. They are mentioned in the Mahabharata very well. That's how the New Delhi, the Indraprastha was established, by getting rid of the Nagas, so to say, by burning the Khandava forest. So, the sage who was connected with the Naga as individuals, we have so many names Naga everywhere in the Andhra Pradesh if you go today, and Kerala, by the way. So, those people also migrated there, possibly with a Bali. And that's why you see all the symbolisms of the Chinese call it dragon, because they took that route, by the way, going there, and also the sea route, but also through Alaska. And so this Aztecas, the word is Aztecas. There are 2 ways of looking at it. एक थोड़ा सा secularist, atheistic vision है, which I like, not because it's secularist, not because it's atheistic, because to me it sounds more spiritual. एक दूसरा vision है, if you look at it from the perspective of like this guy is saying, right, जो ancient Hindu civilization थी, वहाँ से लोग यहाँ ट्रैवल करें और उसके वजह से we have these similar things everywhere. दूसरा वाला तो ये पता ही है. जो पहला वाला है, that is basically कि जो human animal है, they all have fundamentally in their collective unconscious similar narratives. So that's why हर इंसान की story basically क्या होती है, the hero starts from the world and then he goes to the underground, the world of chaos, he fights the dragon, saves the queen. That's the fundamental story that you can see in Ramayana. You can see that everywhere, right? And that's the fundamental story. He either saves the queen or the gold. So Ramayana you can see it literally with the queen, and Mahabharata you can see it with the gold, as in वो सारी लेना Rajya basically. So I like that vision better because to me it brings out the commonality in humans. What actually happened in Ramayana that Ram didn't accept Sita when she returned from Lanka by saying that she is impure. Isn't it wrong? Now justifying that following Raj Dharma isn't justified. The issue is when you talk about these things, I think वो सारा उसमें आता है उत्तरकांड में आता है, and जो naysayers and they say कि उत्तरकांड तो original part था ही नहीं. But also that being said, लोगों को ये भी नहीं पता उत्तरकांड exactly आया कहाँ से. तो either you accept Uttarakhand or you don't accept Uttarakhand. The issue with that is not accepting it or accepting it is कि फिर तो तुम अपने हिसाब से घुमा रहे हो ना भाई text को. So yeah. Again, they refer to that person as someone who came and civilized them. But something more fascinating, Ramayana is aware of that land. Mahabharata is aware of it, but Mahabharata actually less so. But Ramayana, Sugriva knows so much about that land. I'll just give you an idea. Sugriva's Atlas is my top series. So when all the Vanara parties, who are also human beings by the way, jokingly I say the people of Karnataka, because that's where the Kishkinda capital was. So 4 parties, the Vanara parties, they're going in the 4 different directions. And Sugriva is giving them the landmarks, just like go there and take. That's what I think. वो असली part था ही नहीं. कौन सा असली part? I didn't get you. My top series. So when all the Vanara parties, who are also human beings by the way, jokingly I say the people of Karnataka, because that's where the Kishkinda capital was. So 4 parties, the Vanara parties, they're going in the 4 different directions. And Sugriva is giving them the landmarks, just like go there and take a left turn at a D-Mart, we will say in modern times in Mumbai. He says go there, you'll find it. So I'll just give you the east direction, take you to the Patal. Now he doesn't say Patal, he doesn't use the word Patal, but he says okay, start. So again, the Ramayana I read उसमें नहीं था. फिर तो हिंदुज़म ही परसेप्शन पर चलेगा अगर एक्सेप्टेंस पर डिफरेंसेस हो गया. लव खुशी वाला एंड नॉट एक्सेप्टिंग सीता. वेट, लव खुशी वाला, अच्छा लव कुश, फक मी साइडवेज, आई एम सो सॉरी. And okay, so you yes, that's what I think. वो असली part था ही नहीं. So but again ना, then you are accepting what you like and also rejecting what you don't like. Do you think when Kabir Das sings about Ram, he is referring to the actual Ram that existed, or who was the son of I'll have to listen to more of Kabir Das. Many says Hanumanji is Brahmachari, but again Hanumanji has a son.
Alright. Start there in the center of India, then you will go to the land of silver, that is the Thailand area. Then the Yawadvip, so Raupya Dvip, Yawadvip, that is the land of Yawa, the grains, that is the Java. The Java has come from Java. Then this keeps on. None of these things matter when you realize if I am right on this. If this is love खुशी ए सुन हाल तो नहीं बोलेगा मन हल्के में ले रोगा किससे बात कर रहे हो तू हैं हाँ उड़ा दूंगा तो I think all the perfect ideal of man to ever exist morally. I mean, makes sense. Discord, ada? Menu हो क्या Discord? Oh, sorry. Chick. What's up? आवाज आ रही है? Tuku. हेलो, आवाज आ रही है? Bum chick. हेलो, Bum chick. अबे साले, ऐसा ले. क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं लाइक रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में टिप्पणी. नाइस. बीच अमन पे में आया था मैं बीच में. ऐसे इसका नाम है नीलेश है? हाँ my नीलेश नाम के God. सारे जूते होते Oh हैं. my मैं ही हूँ बस I don't want to talk shit to them. पता नहीं मुझे बुरा लगने लग गया जैसे if I talk shit about someone ना I feel क्यों? bad. पता नहीं क्यों अभी मैंने तू ये बदल जैसे गया ही- भाई. मैं बदल गया हूँ. जैसे ही मैंने Stream स्ट्रीम करते शुरू करते करी ना तो हाँ. मैं एक मूवी टट्टी सी मूवी आई थी उसके बारे में बात कर रहा था. हनुमांत बहुत ही बुरी मूवी है. बहुत ठीक है. बुरी मूवी है. क्या हाँ, मेरा बहुत भाई ही उस दिन बैठ के देख रहा था, मेरा कजन, देखियो और वो सबको कह रहा पसंद आ था. रही है भाई सबको पसंद है तो देखियो बैठ के. बच्चा है लेकिन वो है अरे बड़ों 8th को भी क्लास पसंद में. है बड़ों को भी पसंद है तो सब तो देखियो. एनीवेज मैं क्या हाँ तो एक बंदे ने रिव्यू कर रखा था ओ क्या बढ़िया मूवी है ओ ये वो तो मैंने ऐसे बोला यार दिस गाय शुड नॉट इवन मेक मूवी रिव्यूज एंड आई फेल्ट सो बैड आफ्टर सेइंग दैट. हनी सिंह should stop making music. ट्रू. मैंने तो सीधा माफी मांग ली. मैंने कहा आई शुड से दैट. मैं बाद में मांगी. अमन पोल खोल रहा. तू दीपक जानता है ने मेरा बाप कौन है? अरे हाँ मैं तू जानता नहीं मैं तो जानता हूँ भाई. अमन के पापा से डर के रहना पड़ता है. दीपक ने यस आई एक्चुअली आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड यू रिप्लाइड मेक सेंस लॉल. अच्छा भाई सर का क्वेश्चन था. अच्छा डू यू थिंक दैट राम इज परफेक्ट आइडियल ऑफ मैन? यस आई थिंक जो मैंने रामायण पढ़ी थी वो तो शुरू ही ऐसे होती है. मर्यादा पुरुषोत्तम राम. पुरुषोत्तम. हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम. हाँ माय बैड. मुझे उल्टा होता मज़ा आता किसी को कुछ बोल के फिर एक्सप्लेनेशन ना दे के और भी आता. ये हाँ डिबेट यार. वो है ना. क्या? सॉरी बुक नॉट कंटिन्यू. नहीं तो बोल. मैं कह रहा था डिबेट वो है ना अबाउट ही बीइंग नॉट मर्यादा पुरुषोत्तम बिकॉज ही आस्क्ड सीता माता टू गिव द अग्नि परीक्षा. मतलब दैट इज वन ऑफ द मेजर. अच्छा मतलब वैसे जनरली कह रहा है. हाँ जनरली व्हाट्स I think so. See, all of that comes in the specific part which is Uttarkand. which is the post Ramayana, no? हाँ तो okay. लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि that was never the part of actual Ramayana. No, fair enough. That makes sense. But that also sounds like you just don't want to accept it. Because it हाँ, basically because it doesn't go diminishes the well images with the हाँ, image. because it doesn't go well with our thoughts and opinions today. Okay. And I think तूने क्या नाम लिया था वे? What is called post Ramayana? क्या नाम लिया था तूने? उत्तराखंड. उत्तराखंड. हाँ उसी में I think वो भी है ना वो लव कुश वाला पूरा. हाँ okay. I think so. Rampi being ideal towards his work and responsibilities, not in personal life. यार उनका point ही ये है कि भाई अपनी personal life से ऊपर तुम responsibilities को देखो. उनका point ही ये है. क्योंकि यार पर्सनल लाइफ जब तुम ईगो से शुरू करते हो ना चीज़ को तो you'll get angry at things, you'll work emotionally as well. And if you can work based on responsibilities, like instead it doesn't matter if you're angry, but you act the way you're supposed to act, right? So that's the point. Regardless of how you feel at the moment, you act the way you're supposed to act. अमन कह रहा है लव खुश नहीं सिद्धू. इट्स लव खुशी. फक ऑफ अमन. अरे who is this guy? इसने अपनी जिंदगी में क्या करा है? अमन नहीं ये बंदा ये नीलेश. अच्छा. नीलकंठ ओक. वो नीलेश नाम है उनका. नीलेश क्या कर रहा है? कम है क्या? बहुत कम है. नीलेश नाम होना कुछ इज दैट नॉट इनफ? नहीं मतलब भाई व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने भी कुछ नहीं करा. 6 लोग तो देख रहे हैं ना.
ये मैंने भी कुछ नहीं करा, मेरे को भी देख ही लेते हैं. Yeah. What has he done? मतलब is he written like a He's a book? passionate historian, cultural guy. Culture वगैरह he studies. अमीगनाथरा की तरह. I don't know about him, but I Her. think okay. Oh, I'm sorry. But I think Abhijit Chawla की तरह. But Oh, अच्छा, got it. Abhijit Chawla is also a scientist, if I'm not wrong, right? Okay, got it. 2 seconds का existential crisis हो गया मुझे सिद्धू. नहीं भाई, नहीं. पॉडकास्ट में आया है, ये करियर का किक है. describing many islands. Then he says after that you will see the ocean. That is possibly many oceans, but the Pacific. Once you cross this, now this is when it gets extremely fascinating. Once you cross it, you are going to come to the area of a Lord Anantadev. And in that area, to mark the flag of Ananta, just like Arjuna has his own flag and Bhima has his own flag, that flag is inscribed on the surface of the surface of the mountain. And he describes how that mountain is. I'm going to say this to you. Trishira Kanchana Sketu Alastasya Mahatmana Sthapita Parvatasyagre Virajati Savedika. I will split it. Trishira, like a trident. Trishira Kanchana, gold, shining like a gold, yellow color. Ketu, like a pillar, like a flag, Trishira Kanchana Sketu Talastasya Mahatmana. Tal meaning like a pole, like a structure, like a, palm tree, something. Is there a big structure? Mahatmana, Trishira Kanchana Sketu Talastasya Mahatmana. Sthapita Parvatasyagre. It has been established at the front of a mountain. Virajati Savedika, with a Veda Bhumi, like a Yajna Bhumi, like a rectangle is there at the bottom of it. Now, why is this big deal, just like that Arundhati Vasishtha? Because today you can go to Peru, and on the west coast, of course, the coast is only on the west side, you can near the Bay of Paracas, you can see a trident-like structure. It's known as the Candelabra of Andes. And you can have that Yeah, Shiva, thanks for joining the stream. picture in front of you. I've given many talks on it, and you can have this Ramayana verse next to you. And you can see 1:1 correspondence, not even a single detail missing. Now, when Spaniards came there, they asked, like, when they saw the structure, said, did you do it? So, no, we didn't do it. The locals there said, what about your grandparents? No, it was always there. They said it was always there. So, the locals also don't know the memory possibly lost. But Ramayana not only describes the structure, Ramayana tells you in the next shloka who made it, why it was made, when it was made. Purvasya Adishi Nirmanam, just like we have an international day line that goes to the Pacific. To establish the end of a east direction, just like today we say Japan, somewhere we have to start it, right? Somewhere we have to end it. Purvasya Adishi Nirmanam, Krutan Prat Tri Dasheshware. Indra is the deity of the east direction. Indra established it there. And when was it done? It was done in the Kruta Yuga. That is to say, long time before Ramayana. Well, the references in Ramayana. मैं एक बात बताऊँ, ऑलरेडी मैं अपने 2 एजुकेटेड दोस्तों को देख चुका हूँ ये स्टोरी डालते हुए कि नरेंद्र मोदी इज एन इंद्र अवतार. हैं? हाँ. मैं पता है, I think I was thinking on the same thing. I'm so sorry to cut you off again. But I got to know कि हाँ मैंने ये कहाँ देखा था इस बंदे को, तभी मैं आया भी था. So my mom was watching this podcast. So my mom watches Ranveer obviously. तो उन्होंने ये देखा था, उन्होंने पूरा podcast नहीं देखा. She was on her phone, है ना? And I guess she doesn't understand the biases that we, identify. जैसे हम देख लेते हैं कि हाँ he's trying to do something, because भाई ना कि as parents they're like कि ठीक है अच्छा के बोल रहा है तो अच्छा ही होगा. You get the idea of it, है ना? उसमें वो critical thinking वाला aspect उतना नहीं आता. So my mom's take was that this guy explained how Ramayana has, like it's the ultimate truth if I say so. मतलब उन्होंने कुछ और चीज बोली थी, but I would just say it is the ultimate truth because how he's, connecting a thing to a certain thing which might not be relevant, है ना? But he says it is. So I think you were also making the same point. The thing is कि खैर पहली बात तो ना हमेशा से थोड़ा सा ये चीज़ इंडिया में रहा है कि हम ना लोगों को भगवान बहुत जल्दी बनाते हैं. रजनीकांत की पूरा होती है, मैंने सुना है. हाँ होती है ब्रो, है ना? ऑलरेडी हर्ड एज आई सेड कि मैंने 2 दोस्तों को देखा लाइक स्टोरी डालते हुए हु आर एजुकेटेड कि नरेंद्र मोदी इज द इनकार लाइक अवतारी ऑफ इंद्र. अब एक सेकंड होल्ड कर, मैं वही तो निकालना चाहता था इस पॉडकास्ट में, तभी दिखा रहा हूँ. ऑलराइट, नरेंद्र मोदी इज एन अवतार isn't true even though I support BJP, but that's not true. It's not only not true, it's extremely dangerous. जब तुम एक पॉलिटिकल लीडर को एक भगवान से कंपेयर कर देते हो ना, एक भगवान के पद पे रख देते हो, तो या तो तुम ये कह रहे हो कि तुम भगवान को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, या तुम ये कह रहे हो कि तुम मोदी को भी नहीं कर सकते. और हमारे देश में शायद भगवान को तो नहीं कर सकते, इवन दो बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदुज़म में वो डिबेट और क्रिटिसिज्म और क्वेश्चनिंग भरी पड़ी है, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि गीता क्या है, अर्जुन क्वेश्चनिंग कृष्ण, राइट, विच इज़ ऑल्सो ट्रू. लेकिन अगर मैं जाके किसी भी गॉड को क्वेश्चन करूँ तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पिस्ड होंगे और मैं ज़्यादा देर तक क्वेश्चन शायद कर नहीं पाऊँगा. ऐसे नहीं कर मुझे मार देंगे, बट हाँ भाई फट जाएगी मेरी गुस्से में आगे ज़्यादा लोग तो. True, bro, true. And also, I think how we as even with politicians, मतलब politicians की बात कर रहे हैं हम. Sorry, please, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अदरवाइज वट जैसे मैंने ये बात बोली ना, सो वट्स किसी के माइंड में जो थोड़ा ज़्यादा उसमें होगा ना, गुस्से में, उसके माइंड में आएगा ऐसा हिंदुओं के लिए बोल रहे हो तुम, बाकियों के लिए तो नहीं बोल रहे, तुम मुस्लिम के लिए तो नहीं बोल रहे, उसके लिए तो नहीं बोल रहे. अभी मैं बात इस बारे में कर रहा हूँ, जब दूसरी बात होगी तब उस चीज़ के बारे में बात होगी ना, अभी मैं बात इस बारे में कर रहा हूँ. दैट्स वाई
I'm just mentioning this क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, बनाई थी स्ट्रीम, CA वाली पे रिसर्च स्ट्रीम चल रही थी, वो जो CA वाला चल रहा था ना सीन सारा, तो उस पर किसी ने आया था वक्फ एक्ट के बारे में तो नहीं बोलेगा तू. अरे वक्फ एक्ट हैज नथिंग टू डू विद CAA. Sorry, but you continue. नहीं, I was just saying the same thing कि मतलब if we hold them to a regard of a god, है ना, तो मतलब we lose the power of criticizing them, and we then basically we are saying कि blindly we'll trust anything that they'll do, right? And everything is the ultimate truth. हाँ, If I exactly. say so. They are perfect. That's dangerous. That's again, It's as you very dangerous. clearly pointed out, so very very dangerous. I think again I'll refer back to Sandesh only, like how he treats politicians is the way we should even look at them, right? कि मतलब with both the biases. Not as kings, but servants of the people or the country. Exactly. Yeah, not even people, the country actually. True. We live in a society that people pray Arun Goyal as actual Ram. True. तो हाँ, तो मेरा पॉइंट यही था कि हम ना बहुत ज़्यादा गॉडाइज कर देते हैं चीज़ों को. हम भगवान बनाने में बहुत जल्दी बिलीव करते हैं. तो पहले तो मेड सेंस, इवन अब थोड़ी कम सेंस बनाता है. तो व्हेन दे से ना कि वहाँ जाके इंद्र ने वो बनाया, वो सब कराया, दैट वुड बी वेरी एक्सैजरेटेड, आई वुड इमेजिन, क्योंकि आज तक दिखती है ये चीज़, और जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है ये चीज़ कम होती जा रही है. तो आई वुड इमेजिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी. एंड प्लस ऑनेस्टली डूड, it also makes sense, yaar. If you find someone, if you can be lucky enough to find someone who actually is like Lord Ram, let's say, ठीक है, actual में वो behavior है, वो morals हैं, वो सारी चीज़ें हैं, there is nothing wrong in calling that person an avatar. The issue is we are not good enough to judge that. So that is the main issue. Humans can see God in only two phases of life, when as infant or on deathbed, and both time, memory and voice is gone. Actually, the issue is when they're on deathbed, they're probably very scared. So, yeah. Anyways, let's continue this. It has to be before Ramayana. So that description comes, no mention of Patal, but if you go to Puranas, you say which Puranas? Almost all Puranas, but Bhagavad Purana is a good one, Vishnu Purana is a good one. Ramayana is a good one, where Ravana goes there. Like Shurpanakha is actually been married, Ravana's sister, and has gone to South America. Kalake, or I forgot her husband's name. Actually, so hold on, let's pull it up on the screen. This is a lot of data, Yes, and I would actually like to see. What was the name of the mountain? It's called Candelabra, Candl. And that's my issue. मैंने पता नहीं कौन सी रामायण पढ़ ली. Like apparently I read Valmiki Ramayana. None of this was in that. मुझे पागल बना दिया, स्कैम कर दिया. मतलब I don't know. it's maybe पता नहीं अब कितना. देख, क्योंकि expanded versions भी होते हैं, and that's the thing. Like, what do you actually go by? What I read was literally simply named Valmiki Ramayana. That's all. I hate Ranveer's Viva face. Brahminic candlestand, Candelabra of Andes. This one. Oh, this is a real thing. Yes. It exists in the stone. Yeah, and now What did you think? He was lying? if I sing that again, okay, it's like almost 800 feet tall. Damn. Trishira, Kanchana, Golden, Ketu, Talastasya Mahatmana, Sthapita Parvatasya at the top of the mountain stone. What the? And just look at the bottom. Virajati Savedika. You see the rectangle at the bottom? Yeah. Like Yajna Bhumi, we call that Vedika. Virajati Savedika. So the locals don't know how far back this dates. Correct. It's lost knowledge. They don't know who created. They don't know why it was created. But it's described in the Puranas. Ramayana. Damn. And it's not like Ramayana is described somewhere and we are somehow making the dots. No. Starting with India, going in the east direction, after going through Thailand, Myanmar, and Indonesia, then crossing the ocean, and now you come at the land, and this is where it is. I wonder what the designs symbolize, because it seems like it contains some meaning. The Trishul, it's obvious. Yes. Again, Trishuls are not just related to Shiva or Mara, it's an ancient part of It's even a weapon, right? Think of it. What do Trishuls signify? Because it's there in Greek culture as well, Poseidon's. Everywhere. What meaning does it have in our culture? I mean, it's a weapon, right? It's a very effective weapon. Like those people who have worked with the snakes, they might know that, the Kamberu, you know the word Kamberu? It goes like this. I mean, I have killed many snakes. You kill snakes. I have to, right? They come inside the house, right, during the rainy season. But there is a certain way that it allows to hold. So this one is like a three-prong, right? So at least Valmiki में ही है. हाँ, तो I don't know what I read. Wait, Valmiki में ये है, like, पहली बात, Aman, have you read it? so one of them will do the job. And YSR has read it, right? Why aren't you answering? Discord पे कुछ आया था. अरे, जाफरी, क्या कुछ शॉर्ट है क्या? कुछ न्यूज़ आर्टिकल है. प्राजक्ता कोहली, all right. What is it? Is it something popular? Should I act like I'm gonna make a reel out of it? Climate influencer of the year. Wait, what? कौन?
प्राजक्ता was- कोहली Why? Prajakta- हमारी वो क्या नाम है उसका, समझ गया तू, जल्दी समझ गया तू, नहीं। बहुत जल्दी समझ गया तू, वो छोटी लड़की यार बाहर की, ग्रेटा थनबर्ग। अब हाँ, लेकिन क्यों? Like, हिंदुस्तान को भी तो चाहिए ना, कॉपी कैसे करेंगे हम बाहर के लोगों को? hold on, let me see. Prajakta Kori was awarded the Climate Influencer of the Year at the NDTV Indian of the Year event held in New Delhi on Saturday. She received the award from Sania Mirza. Both of them are so much related to climate. I love it. Could you make it funnier? Anyways, after receiving the award, Prajakta Koli thanked the country, which allows to initiate such conversations. As a content creator, she believes she has a huge role to play and to create awareness about climate. Prajakta, who is an actor as well, said that acting and creating awareness come with challenge of their own. As an environment enthusiast, Prajakta suggested practice waste segregation and recycling for people. Take a look. You and the point किया था इसको 2022 fucking hell dude. That's good man, good actually, good for her. लेकिन क्यों is my question, like what is she doing related to it? For your information, Prajakta was appointed by the UNDP. Thank you very much, Joffrey, for sending me the post and giving me more information from the post. United Nations Development Program, India's first youth climate champion in 2022. In 2023, January, Prajakta attended the World Economic Forum held in Davos, India, as one of the 6 content creators invited globally for the event. Prajakta participated in discussions and... Wait, hold on. So, that's her thing. She spreads awareness about environment. No, she doesn't spread an awareness about the environment. I would say basically she's even said it on the Nikhil Kamath podcast also, that YouTube has been very kind to her. And वो content creator वाला क्या होता है, वो तुम्हारा YTFF है ना, वो हाँ जो fan fest वगैरह होता है, तो उससे she got lucky and she got a chance to meet the Obama's wife, क्या नाम है उसका, Michelle Obama, Okay. है ना. So basically now She's very good at networking. she's now like the face of Indian YouTube. So that is why she's been put into it. What does she here have to also. do with climate? Nothing. That is why no. There's one face that they are using कि अच्छा reach भी अच्छा है, distribution भी अच्छा है, और there's no controversy, nothing, no PG वो content ऐसा कुछ, तो I think that is why they have adopted the safest bet out there. तन्मय को थोड़ी करेंगे climate change वाके गाली दे देगा UN में, तो मतलब वही बात है ना. जबरी कह रहा है सोनम सर जैसे लोग तो कांड हुए ना. True, fucking true. ऐसे कितने लोग होंगे इंडिया में? Fucking true man, fucking true. Dude, मतलब you need to know how retarded this is. कि तुम्हारा headline है कि she's awarded climate influencer of the year and you're not even talking about climate at all in the whole article. क्या बोला, sustainable क्या garbage practices And recycling. ये हमारी सोसाइटी में होता है, ये सेक्टर 86 की सोसाइटी में होता एक है. सेकंड, सस्टेनेबल व्हाट डू यू थिंक, ये मेरे रिसाइकल करने ना करने से उसको वेस्ट हो रहा है कि फैशन इंडस्ट्री से वेस्ट हो रहा है, क्लाइमेट को दिक्कत हो रही है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट से दिक्कत हो रही है, या फिर प्राइवेट जेट से दिक्कत हो रही है? हम फास्ट फैशन के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते, उसी पे तो आधे कंटेंट क्रिएटर का धंधा चल रहा है. कैसे टारगेट करते हैं हम फास्ट फैशन इंडस्ट्री को? ब्रांड्स तो पैसा वही दे रहे हैं ना. हाँ ट्रू. तो देख ले, जस्ट सर्च इट आउट देयर, फास्ट फैशन वेस्ट जनरेशन, देख कितना है, लाइक कितने परसेंटेज वर्ल्ड के वेस्ट जनरेशन में ये लोग वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. पाई चार्ट लिख दिया मैंने. देयर यू गो, क्लोथिंग वेस्ट स्टैटिस्टिक्स. वेट, दिस इज समथिंग एल्स. Land final share of clothing waste per year. 10% goes to recycling, 8% goes to reuse, 57% landfill, and 25 I don't even know what that means. Top 10 industries making ये देख, रुक climate worse. ये ले देखो, लिंक भेज रहा हूँ उसका. अच्छा, तूने वो टॉप 10 ही भेज दिया? हाँ. नहीं, अच्छा, 10 अबाउट फैशन वेस्ट. दिस इज earth.org, जो कि मतलब वही वेबसाइट है. हाँ. अच्छा, सिद्धू ट्रू, इस पे एक स्ट्रीम बनती है. सिद्धू सोसाइटी का नाम भी बता देना था. सही में मैं रुक ही गया. सही में कसम से अपना फ्लैट नंबर बता के खोल के बैठ ही रहता तू दरवाजा. आई मीन
I didn't mean Darwaja. I know. Of the 100 billion garments produced each year, 92 million tons क्या है ये? Tons. Oh, fuck me. End up in landfills. To put things in perspective, this means that the equivalent of a rubbish truck full of clothes ends up on a landfill sites every second. If this trend continues, the number of fast fashion waste is expected to soar up to 134 million tons a year. Fucking hell, man. Bro, this is crazy. These statistics are crazy. And also the fact that जो Zara लिखता है ना कि sustainable clothing. I even read it somewhere. I don't know. Don't quote me on this. But again, the tags that they are adding to the cloth, like जैसे टी-शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है sustainable clothing, वो ग्रे कलर का वो ब्राउन कलर का टैग लगा हुआ है sustainable, तुम्हें लग रहा है कि ऑर्गेनिक है. That tag is organic. The cloth is not organic. They're talking about the tag. They're basically, it's like, you know, you know what do you call it? They're basically fooling the user. कि tag sustainable है, कपड़ा नहीं है, but it is an illusion. Fuck bro. कर दे भाई, कर दे. Fooling the user. All right. Thank you. बस अब मैं फेमस होऊंगा तो ये वायरल कर देगा ना. जल्दी हो रहा नहीं, but that's how retarded it is. Like there's nothing about climate, or like I know Prajakta Kohli, but I don't know her. I know of her, and I don't know she does anything related to climate at all. नहीं bro, she doesn't. Speaking of मैंने क्या मिस करा, ये बढ़ जाता ना. हाँ, Prajakta acted in web series Mismatched, Comedy Premium League, Andhera. She acted in films like Jug Jio. से तो पढ़ा नहीं आता था. ये शादी नहीं हो सकती. She has dude, I have this fucking thing, man. मैं जब भी शादी में जाता हूँ, सोचता हूँ ना कुछ भी, मेरे माइंड में हमेशा ही आता है क्या आज देखने को मिलेगा कोई आके बोले ये शादी नहीं हो सकती. I'm not even fucking kidding about it. Are you serious about it? Yes, हमेशा मेरे माइंड में आता है क्या इस शादी में देखने को मिले. Oh fuck, Nilesh. She has singles like Shameless. No offense. ये diss गाना है to her credit. अच्छा, where's climate? Speaking of NDTV Indian of the Year, Honorable Vice President Jagdeep Dhankar was presented as the chief guest, along with other esteemed guests, including Union Ministers of Hardeep. Oh my God! Now you're talking about guests. What has she done regarding climate? You fucking retards! Oh my God! Sir, किसी और का आर्टिकल दियो, किसी और ने भी क्या इस पे टट्टी फैलाई है क्या? ठीक है? किसी और कंपनी ने टट्टी फैलाई है? Like, she's YouTuber and an actress first of all, and good for her, man. God bless her. About पढ़ Google पे about क्या आता है प्राजक्ता का? Doubt आता है. Right. ये Wikipedia से आता है. Wikipedia. हाँ. Prajakta Kohli is known for her YouTube channel, Mostly Sane, is an Indian YouTuber and actress who makes comedy videos. Her videos are focused mostly on observational comedy related to daily life situations. Does she own a Tesla? Is that what it's about? Did she buy a Tesla or something? I don't know, bro. Just caught with a vape though. किसी ने अरे ये वर्कआउट कुछ तो स्टोरी डाली थी इसने, ठीक है, और उसके ना वहाँ पे ऐसे वेप पड़ा हुआ था साइड में, फिर इसने डिलीट कर दी. लोग हराम में तेरे स्क्रीनशॉट ले लिया. सही में लोग भी हराम है. पर अच्छा चल, इसमें लिखा होगा ना यूएनडीपी की साइट पे, अरे एक्स्ट्रा अवार्ड बना लिया था, देना होता है. So why I keep telling you guys all these awards are fucking bullshit. It's like consolation prize कि you participated. Every award in the world, it's fucking bullshit. जॉफरी भाई नमस्ते यार. अब नहर पार की हर सोसाइटी में ढूंढा जाएगा हनी सिंह के फैंस द्वारा. I love you Prajakta. She is from Thane. बंदी गुड है. Alright. But अवार्ड तो maybe UNDP में कुछ लिखा है इन्होंने. India today announced their partnership with leading content creator and actress Prajakta Kohli, who embraces the moniker. What does this mean? Moniker mostly I don't know bro. Moniker A name. अच्छा. You fucking idiots. भाई कौन लिखता है ये? मेरे तो moniker bro fucking इंग्लिश चाड़ रहे हो अपनी. Mostly सही है. चैट जीपीटी से लगा के. अच्छा ओके, ये भी बनी है इंडिया की यूथ क्लाइमेट चैंपियन. अच्छा अभी करेगी ये. अभी तुम देखना.
अभी तेरे वहाँ आ रही होगी रिसाइकिल करेगी। ये जाएगी जुहू बीच पे वो साफ करने। अरे नहर पर रिसाइकिल करेगी वहाँ के, देखियो तू। मैं एक इनसाइड न्यूज़ दूं प्राजक्ता के बारे में। श्योर मैन, व्हाई नॉट, इफ यू वांट टू। आई मीन आई होप इट्स नॉट समथिंग टू हॉरिबल अबाउट हर। 2022 में बनी थी। अच्छा 22 में बनी थी। ओह यस यू आर राइट bro, 2 साल में क्या फॉरगेट, करा? आई एम अ फकिंग रिटार्ड बिकॉज़ यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है 2 साल क्या करा देखियो, पूछने जरा। अवार्ड DM लिया करो। ना। अच्छा ओ फिर ठीक है। डेट देखो। यस जॉफरी, you're right man, you're right. Your intellectualism is your intellectualism. Noble. With a long-term DM vision to reinforce a maximum youth participation in climate action and ensure a more sustainable future, Kohli, कोहली a youth icon, becomes the perfect candidate for the title, given her long-standing contribution towards mental health, women's rights, and girl child education, various global social campaigns. What does this have to do with climate? तो बेसिकली जो ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना इनके, जो वो जैसे ये गर्ल चाइल्ड वाला हो गया है ना, फीडिंग इंडिया हो गया, ये सब हो गया, तो उस पे बुला लिया जाता है ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। This is all fucking PR, man. या ब्रो एग्जैक्टली सही पकड़े हैं अब आप। ये पीआर क्या है? Prajakta Kohli states, I am extremely humbled and honored to have been entitled with this unique responsibility to champion a cause that is close to my heart. As the very first UNDP India Youth Climate Champion, I would like to produce and participate in opportunities that propel conversations around climate action and urgent measures we must take. The youth needs. भाई वही ना, climate change isn't real. ऐसी चीजें ब्रो इफ यू लुक एट इट फकिंग, जो निखिल कामत ने एक पॉडकास्ट निकाला था क्लाइमेट चेंज पे, उसके पैनल में भूमि पाटनेकर है। वो क्यों है वहाँ पे? I don't know her. एक्ट्रेस है। अच्छा। शी वाज अ कास्टिंग एजेंट पहले। शी कास्टेड बेसिकली रणवीर सिंह। लियोनार्डो डिकैप्रियो भी तो भग जाता है हर जगह क्लाइमेट के नाम पे अपने प्राइवेट जेट पे। ट्रू। कह रहा मैं आ रहा हूँ बचाने, रुक जाओ, मेरा जेट निकालना। ए भाई जेट निकालियो। अच्छा ये सब करा है प्राजक्ता ने, देखना क्या करा है ये। देखिए जरा। Hey everybody, I'm Prajakta Kohli and welcome to another very interesting conversation. पीछे लोग बोल रहे हैं, इन्हें पता नहीं है चुप होता साइलेंस ऑन सेट। प्राजक्ता कोहली के साथ भी इनके 2000 व्यूज आ रहे हैं। You fuck ब्रो you and fuck off. मैं तो ठीक हूँ भाई, फिर मैं तो बहुत, मेरा चैनल तो बहुत भाई, नीलेश तेरा मेरा चैनल तो बहुत ठीक है भाई। प्राजक्ता कोहली के साथ भी 2000 व्यूअर्स ला रहे हो। ऐड ही चला लेते भाई, ऐड ही चला लेते। इतना तो पैसा है तुम पे भाई। इनको रजत दलाल को बुलाना चाहिए। Like that's how you're gonna get views. Day one at the United Nations in New York City, and I am joined with the CEO of the French Development Agency, Mr. Remy Rio. Did I say that right? Excellent. Okay. How are you? How is it been going? Hard to say. I'm fine. Very pleased to be here. In New York, 8 years after I was there for the SDG Summit back in 2015, I negotiated the final track of the Paris Agreement for climate. Yeah. So very important to take stock of where we are and measure the way forward. Okay. So I have a lot of audience that's from India. थंबनेल का क्या सीन है यार, बहुत बुरी लगी मुझे मूवी। स्ट्रीम के शुरू में बात करिए, सॉर्ट ऑफ गॉट ओवर इट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम बाय द वे। हर मैनेजर इज शुभदीप लहरी, पीआर एजेंसी ओनर। उसने प्राजक्ता की इमेज बनाई है, बॉलीवुड एक्सपोजर दिया एक्सेट्रा। अवार्ड्स भी शुभदीप ही स्पॉन्सर करता है। हाँ प्रॉब्लली। क्या क्लिकबेट है? नहीं क्लिकबेट नहीं है यार, स्ट्रीम के शुरू में देख सकता भाई। ऑलमोस्ट 3 मिलियन हैं फिर भी। ट्रू। Young people. If you could just explain a little bit about what you do. So I'm the head of, I would say, the French International Public Development Bank. So they clearly don't care about climate change. Yeah. अगर दो के व्यूज में खुश हैं तो। And bro, even again on that podcast itself, that guy Sudeep Lahiri, मतलब even Prajakta mentions कि I got in touch with One Digital करके एक पहले एजेंसी ही या है अभी भी। So उसमें Prajakta was assigned to that guy Sudeep, and फिर उसे इतना बड़ा कर दिया उसने। And she says कि all of my credit goes to कि उसी ने बोला था कि why don't you start making videos, like creator का उसमें कोई वो नहीं था, like it was the person itself. So she says that. Right, when you throw at someone. Have you ever wondered what those designs mean? No, I haven't gone that far. But do you think it could mean something? See, what the description is, it is the insignia of Ananta. But I'm going to give you one more surprise there. Okay? So it's Shlok comes there. We can pull the Shlok also if you want. Okay, so go to ValmikiRamayana.net. That's a website. Valmiki Ramayana is there. Okay, let me just read out the English translation. On that Shalmali Island in Wine Ocean, you will be seeing the mansion of... कहाँ? On that Shalmali Island in Wine Ocean. Vinata's son, named Garuda, the eagle vehicle of Vishnu, which is decorated with numerous jewels and which in sheen will be like Mount Kailash, the abode of Shiva. This mansion is construction of Vishwakarma, the heavenly architect. So the mansion was there. Archaeologists have not found it, or it might have been destroyed, But go to the next one. Now this Rakshasa begins, okay? Tasya Shaila Nibha Bhima Mandeha Nama Rakshasa Shaila Shungeshu Lambante Nana Rupa Bhai. Don't show off that you can read it in Sanskrit. The English is written right below it. Yeah, there are 3 types of vampire bats that are found in the... No one can understand it. I wish I could. But don't show off.
fossilized. Just let me give one more piece of context here. We had Ami Ganatra on the show, who I felt was one of the premier experts on both Ramayana and Mahabharata, and she constantly keeps highlighting Valmiki's Ramayana as the only Ramayana that should be referenced when it comes to even storytelling. And this is all based on Valmiki's Ramayana. Okay, so this is as much proof as you can have as a Sanatani. Yes, now let's go on. Okay, so now you can read the translation for verse 41. Therefore, they're about horrifying and merciless demons of various shapes and similar to mountains in size, called Mandehas, will be dangling upside down from mountain peaks. Who is dangling upside down? Bats, right? Now, so sometime, Did they not have a word for bats? Also, I thought ये वो दिखाएगा जहाँ पर वो लिखा था कि उस पहाड़ पे ऐसा बना हुआ होगा. Will be dangling upside down. हैं? मैं भी वही सोच रहा था. I was also waiting. हाँ मतलब that is the most relevant thing. उसी नहीं देखा ब्रुकलिन नाइन-लाइन का एंडी सैमबर्ग वाला hey man can I talk to you for a couple of minutes on environment and now I'm invisible to everyone for the next 2 hours. From mountain peaks, who is dangling upside down? Bats, right? Now, so sometimes, I wouldn't say exaggeration, but embellishments, like mountain in size, maybe it's like a mountain. In fact, their color is like an ash color, like a mountain stone color, so not always mountain size, they're not that big. But embellishment can happen. Now, people may remember because of this. Or perhaps, I mean, when we talk about megafauna, they say that all the animals that we see around us, only 1% of the animals that have ever existed. Which is very true. And they concentrate about megafauna being prevalent in unexplored lands. Like Australia has a lot of megafauna, even with the big birds. Right. The kangaroos are megafauna in so many ways. But if you study zoology, megafauna was extremely prevalent in Australia. And I'm sure it was prevalent in South America because of Galapagos Islands. Exactly, I would agree. Okay, so there's one thing जो कि मुझे थोड़ी सी वो लग रही है कि sometimes you take it literally and sometimes you just take it metaphorically and make sense of it literally. And so it's almost seems like you want to definitely make it literal. So it's like more like you have the intention कि देखो सच्चा है अभी देखो ये तो ऐसे ही लिखा है ना उल्टा कौन लटकता है bats. हाँ sure that is true, but they had like Sanskrit is an extremely complicated language, right? They can have a word for bats probably. ये बेसिकली ये कि बंदे की लाइफ उस पे चल रही है कि मेटाफोरिकली और लिटरली वो दोनों चीज़ों पे काम कर रहा है और वो सेंस बना रहा है which he thinks is right. हाँ so like some things you'll just pick up and be like ये तो metaphorical था and some things like ये देखो literal है ना तुम ईस्ट गए वहाँ तक गए now जो शुरू में बात बोली कि जैसे वो लिखा था लॉर्ड राम का जो राज्य था वो 11,000 साल तक चला था तो ही वाज लाइक कि कई जगहों पे ना हम साल की जगह उनको दिन मान लेते तो वो लगभग 30 साल हो गए. Why? मतलब that's a big leap. And also, the biggest extinction of them happened in 11,000 BC. After Younger Dryas. Yeah, around that time, exactly during the Younger Dryas, beginning of Younger Dryas. Damn. Possible, yeah. And Graham Hancock talks about it, but I have Quaternary Extinction, a book this thick, and it just goes on and on. We can talk about the 4 tusk elephants, but we'll come to that. That are also described in Ramayana. Okay, the first half of this episode, I was just in a very active brain zone. Right now, my skin is active. I think एक चीज़ होनी चाहिए थी जो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से. Like if you have Ramayana with proper English translation on the internet, bring up all these sources ना यार. अब मैं like and again ठीक है तुम खुद जाके देख लो ना फिर पॉडकास्ट का क्या पॉइंट. चंबल की रानी नमस्कार महारानी. अरे ये तो हिस्ट्री की मदर सिस्टर हो रही है. और बच्चा क्या बात चल रही बस बात चल रही. Like every sentence, yeah. But let's complete this first. Okay, then we'll come to 4 tusk elephants. Okay, so you understand that although it is called Rakshasa, in reality it is a bat. Okay, now go down. Yeah. राक्षस निकल गया है वो चमगादड़. Patanti jale nityam suryasya udayanam prati. When the morning happens, they go up there, look at the shadow, and catch their prey. You can read if you want the day after day. Day after day, those demons will be falling in water when sun always burns them at sunrise. And when the impetus of Gayatri hymn fells them down, yet they will be resurfacing and dangling on the mountain day after day. Seems a lot like some kind of giant bats, right? Yes. Now today, with the remaining whatever we have, and dangling on the mountain day after day. Seems a lot like some kind of giant bats, right? Yes. Now today, कितना impressed है उससे. यार बताओ और बता यार. And now the thing is all of this might be true. That's the whole point. But you have to stay consistent to your methodology कि मैं इसको इस तरीके से पढ़ूंगा. क्योंकि अगर तुम अपनी मेथोडोलॉजी से कंसिस्टेंट नहीं हो ना so then you are consistent with your goal कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगा कि इस गोल तक पहुंच जाऊं. So that's the issue. Whatever we have remaining, कि मैं whichever तरीके से पढ़ूंगा कि मैं इस specific गोल तक पहुंच जाऊं. The megafauna 99% being extinct, but even with what we have right now, we have 3 varieties of these bats, vampire bats in South America. Now we have watched too many vampire movies, so we think vampire bats are everywhere around the world. No, most of them, I mean, they eat animals and insects and all, and then fruits and whatnot. But the vampire bats, in the sense of blood-sucking bats, in the whole world, they're only available right now in South America. Okay, so this is very solid evidence for that, by the way. Okay, now go down. Okay, keep on going down. We skip slowly. Okay, just let me read that. Okay, so Treto Rushabho Nama Parvata, White Rushabha Parvata. This is referring to Andes, by the way. You're talking about this 44B? 44 first line. Yeah, 44 first line. You know, in the center of that milk ocean, there is a white mountain of colossal size named Rishabh, surrounded with closely growing trees, ever flowered with flowers of heavenly fragrance. Yeah. And a lake renowned as Lake Sudarshan is also there. Go to Amazon, go to Bolivia, Peru.
Beautiful. Which is replete with silvery lotuses whose fibrils are golden in sparkle and with kingly swans will be scampering about. Yeah. Well, now go to the next one. Like, so skip. ये भी हिंदी मैं समझ ही नहीं पाया ये शायद. Like ये कौन सी बात से connect हुआ? I didn't really get it. I think they're just you know talking about that whole umbrella कि how everything is linked. Like जो मैं बता रहा था ना, अलग-अलग was also saying चीजें. हाँ, how everything is just, हाँ ये देखो हाँ exactly हाँ ये देखो Y भी उससे मिलता है, ये देखो ये भी उससे मिलता है, वो वाली चीज. दिस माइट बी ट्रू क्योंकि ये नहीं है कि वे एग्जैक्ट बैट्स हैं, बट वट वी नो इज एन इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ देम एज वैम्पायर बैट्स. अगेन नॉट श्योर. सी अगर तुम्हारा जो बेसिस है वो एक इंटरप्रिटेशन है और वो इंटरप्रिटेशन उस टाइप की है, सो इट सिट्स विद टुडेज लॉजिक. So that's kind of an issue with that, right? Kesagri was telling about जब ईस्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा and talking about South America. All right, gotcha. One fact: all Sanskrit manuscripts of Ramayana are written after 500 BC, somewhere 8,000 years after the claimed period of Ramayana. All right. 46. It's not that relevant. Okay. So basically every like a real piece of text we have you're talking about. Okay. Okay, keep on going down. I'll tell you. Yeah. How deep are we on in this stuff, sir? Well, you stop. But I wanted to show. Okay, here, 51. Okay, can you bring up? Yeah. Okay, so stick there. 52, and you can read the whole translation, but I'll read 52. Sure. Now we are talking of Andes Mountain. We are going to talk of the structure in the verse 53 that I just read, and we saw the candelabra of Andes. But just before that, it is saying this structure that we saw is the insignia for the Ananta, which is verse 52. Asinam parvatasya agre sarvabhuta namaskrutam sahasra shirasam devam anantam neela vasasam anantam. And sahasra shirsha is what? All the peaks. No, not really. What do you mean? Of Andes. That's what the analogy is. Okay. There you shall see then, O Vanar, the lotus petal broad-eyed thousand-hooded serpent god in black clothing. The lotus petal broad-eyed thousand-hooded serpent god in black clothing named Ananta sitting on top of that mountain. That's what the symbol was. And sustaining the earth on his head, who will be like moon in his brilliance and whom all beings hold in reverence. They always have a meaning. We'll ignore it for the for brevity. It is describing the symbol for brevity. But something else I want to show. So the next one is the insignia. देखो ऐसा नहीं लग रहा कि उस बंदे ने थोड़ा छोड़ा, ठीक है, उस बंदे ने ऐसे बिलीव करा किसी चीज में, and now he's leading on to and he's trying to make sense of his own like whatever he's reading out. Yeah. अच्छा मैं ये रहा वो वाला जो अमर कह रहा है, ग्रेट सोल्ड वंस तस्य प्रवत्स्य in that mountain on peak. अच्छा जो ये पढ़ रहे हैं. We already discussed. But now what I want you to do is go to search function. But एक सेकंड, ये वाला भी अमन, what was it relating to? Not every real piece of text which claims historicity. आएगा. So remember Ananta, okay? Ananta is referred to the Andes mountain, which is Sahasra heads as each peak. Right. Now go to search and type Mount Ananta in Andes. Okay, so it will come like a cerro. Okay, so yeah. Yes. Now story is very similar to this candelabra of Andes. Now what can happen? The Western world came in contact with South America in the recent times only 500 years ago. So two possibilities. Either somebody from Spain or Western Europe who has studied Ramayana very well or Indian literature has been fascinated with the name Ananta, went to South America and one of the peak he gave the name Ananta. That's one possibility. What is the other possibility? We have a description next to the trident in Valmiki Ramayana. That name was there from the beginning. And I have gone through the searching for it. By the way, let me give the credit where it is due. One of the person, Mitra Desai, that I mentioned, who is in Australia, and she has written a novelette called Flag of Ananta based on this research. And she discovered this Mount Ananta. Not my discovery. But it is there in Valmiki Ramayana. दूसरी क्या थी एक्सप्लेनेशन कि वो नाम शुरू से वैसे ही था? I don't know, I lost it, bro. Okay, I think that was the definition. Only 500 years ago. Candelabra of Andes जो जगह है उसकी डिस्क्रिप्शन है रामायण में. ने किमोनो क्यों पहन रखा है? पता नहीं. I don't even care. पहली बात तो why does it matter अगर किसी अलग अलग जगहों की डिस्क्रिप्शन है भी तो भी why does it matter? भाई ट्राई कैसे करेंगे हम, कैसे बताएंगे कि तुम कि whatever we are saying is कि सोने का टॉल वाला सूट पहन रखा है. Discussions about South America. Name, we don't have to do a guesswork. And if you look at it, like, if you say, okay, who gave the name? Like, which Spaniard gave the name? You come across saying, this is a native Indian language. Indian meaning those Indians there, Quechua or Aymara, those are the languages. It comes from there. Bottom line, nobody knows. Well, Ramayana knows. Dear archaeologists. I mean, see, this is where a lot of people get stumped. No, hold on. Okay, this is not how archaeology also works.
ठीक है, सिर्फ एक सोर्स से एक रिलेशन डायरेक्ट नहीं बना लेते, राइट जब तुम किसी का हिस्टोरिकल वो देख रहे हो तो तुम देखते हो कितने अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग सेम चीज़ों के बारे में लिखा, एंड दैट्स हाउ वी आर लाइक अच्छा दिस थिंग इज एक्चुअली हिस्टोरिकल, not just because okay look this exists today and this is the historical text. जब हिस्ट्री की बात होती है बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज देखते हैं, जब बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज एक ही बात की बात कर रहे हैं पॉइंट कर रहे होते हैं, हाँ, तब उसको मानते हैं. Talking about academia, in specific, yes, where they don't have responses to this. They will call it coincidence. But how many coincidences you need? For example, Aurora Borealis will not do that. That will be another separate episode. Sugriva's Atlas of Freeway. Sugriva, in summary, knew when he's asking Vanara parties to go in 4 different directions and he's giving them landmarks like this. This is only in the east direction. He gives the landmarks in the north direction, Kailash and everything going further, the plantation of the bamboos and everything. And you can see me talk a little bit about this? Sure. Very interesting. Yeah. What has he spoken about in the north? In the north, he says start with the center of India. Always, start from like a gateway of India type of thing. Center of India. You go further. Now he's going across the sort of a Tibet / Tibet. Where how we people do Kailash Yatra these days. He says you'll come to the Kailash area. He describes Kailash area. Not a surprise. People may easily know that, but he describes it. He says a beautiful land, cooler temperatures, no trees, and you can go and check it even now, kind of thing. After that, he says the land of many rivers, which is, if you consider which land is that, that is the 40 latitude today, like the western part of China, today's China, and then Turkmenistan. When you talk about things like this land of many rivers और ये सारी चीज़ें, these things are extremely vague. The second thing with that is जो लोग mentalism वगैरह में code reading नहीं करते, जो psychics वगैरह भी code reading करते हैं, they talk about oh it's near a water body because this is something which is so vague कि हर कोई connect कर ही लेता कहीं ना कहीं से. Okay. Afghanistan and Kazakhstan, that area. That is called Uttara Kuru and Uttara Madra in our literature. So we say where it is. It's there in Mahabharata, it's there in Ramayana, and it is there in the Puranas. Okay. After that, now this is, remember, this is the description from 14,000 years ago. Today you can go just fine until the Arctic Sea, at least in the summer. But Sugriv, 14,000 years ago, he's saying, and I'm putting the 40 latitude just to make a point. He says beyond Uttara Kuru and Uttara Madra, there is a land. Sugriv beautifully describes what it is, but he tells the Vanara party, do not dare go there. If you go there, you will, first thing, it's very hard to go. He describes Arctic Sea all the way. Uttara Samudra, Uttaram Payasam Nidhi. That's how he describes the Arctic Sea. But if you go there, you will find it impossible to commit back. Now, why is that? Because the ice age is taking place there. People think ice age meaning the whole earth was covered. That was not the case in the last million years. But the whole entire Europe, especially northern Europe and northern America, they were covered with ice. So he's saying don't go there. There's like a permafrost and tundra-like conditions. We know that from the climatology study. So he says don't go there. So that's in the north direction. He describes Aurora Borealis. You know what that is? Northern lights. Yeah. So he says even when it's a dark land, even when the sun is not there, but the place is so bright, it's beautiful. Okay. Aurora Borealis possibly is referring to. Mahabharata also describes when Arjuna goes there. Now if you go to the south, in the southern direction. See again, that's the issue. कुछ जगहों पे you take it के oh he's being poetic, oh it's brevity, it's this. कुछ जगहों पे oh देखो ऐसा literally भी है. So you have to be consistent with your methodology of interpretation. True. This matter because जब रामायण लिखी थी तब ये जगह पता नहीं थी किसी को. इसका मतलब रामायण के टाइम पे people have already discovered things. No, not necessarily. In between we lost our history. Not necessarily actually. Of course, the Lanka, but further he's describing the land all the way to Antarctica. Now, in the modern description, Antarctica was found only in the 18th century. If you see the maps before 18th century, the Western maps, the Antarctica is like left empty. Now, there are some maps in Italy, for example, and Turkey, who actually show the landmass there. Those are from 15th century. What does that tell you? And this is guy Piri Reis. I don't know if that came into any of these things. Piri Reis was a Turkish navy man, like admiral or something. And he says he created this world map based on, this is 15th century, 16th century. So Columbus maps also he used. But then he says he used the maps of the Arab land. He used the ancient maps of Hind. तुमको पता है भाई जितना बड़ा ये क्लेम है ना कि पूरी दुनिया की नॉलेज थी, उसके लिए कितना बड़ा एविडेंस रिक्वायर्ड होगा टू कॉल इट ऑल लेजिट. This is not big enough evidence. Some writings which sometimes you call metaphorical and sometimes you portray as literal. और कैसे मांगे रणवीर को इसलिए बात तो पेन क्या है इजी और मुझे लगता है मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ. This makes me feel better. See that he is showing Antarctica like a land with exact mapping that you can match with Antarctica. The map was created in 15th century, but history books and academia will teach you that Antarctica was discovered by Europeans in 18th century, 17 something. Because the winners of war always rewrite history books. Yeah, because discovery has a very different meaning in the West. Discovery meaning under the dictates, under the permission of the Christian church, the Pope, you find certain land. It doesn't matter whose it belongs to, you basically grab it. जैसे तभी तो अब तक प्रूव नहीं कर पाए. This isn't big enough evidence. तभी तब तक प्रूव नहीं कर पाए. Yeah, so but then what's the point? I don't mean to be a dick about watching the video. Conspiracy theory तो नहीं. मतलब हाँ देख, if you have lack of evidence, then it's a theory at most. The best you can say it's a theory, and I don't know how much of it is he leaving out. No, okay, I'm not going by the version of Ramayana which I read, which was again as it was written on the book Valmiki Ramayana. Doesn't matter right now. How much of it is there are you leaving out because you couldn't connect the dots? You need to understand one thing, but point ये है कि believe कौन कितना करता है. नहीं अमर, at the same time the thing is कि this person Nilesh जो है, he's only talking about the dots that he has connected in his mind.
how many things are there in the Ramayana which he hasn't connected in his mind? Of course, he would not talk about those things. So you're getting एक ही बहुत ही छोटी सी मात्रा में बहुत ही कम percentage of the Ramayana, and उसके बेस पे which he has connected to different things, right? Admittedly so, and उसके बेस पे he is making that claim जो कि इतना बड़ा है कि उनको वो सब पता था और ये सारी चीज़ें. And that's why जो academians हैं, they don't like when alternative fields में घुस जाते हैं लोग, alternatives घुस जाते हैं fields में. I would really need to read really huge ass leftist historians to cover up from the trauma this guy is spewing. All right, you guys are so far on the left, you can't even see the right at all. Being far on the left is just as bad as being far on the right. All right. Church has given you the right to grab it for yourself. Whoever discovers it, meaning literally sees it. So Vasco da Gama discovered us. It doesn't matter what rights we have, what we want. To him, it was like India is for him to explore and exploit, and that's what he did to the best of his ability. And then the British did the same thing. So the inside the psyche it is there. For that we can blame them. You know, not the blame the current. But the issue is also that modern academia still completely blindly looks at that system as gospel. In so many ways. Yes, because see, academia is I gave a definition of Nassim Nicholas Taleb. You know, see, it is a regimented thing that they want to stay there. It's a regimented thing, like you know, which is why countries have straight borders now. So that conflict. It is not historiography. Not in what do you mean not in historiography? Means in these countries we remain third world. Why has Kashmir been divided in this way? Correct. So that we would be at war for hundreds of years, both countries would suffer. Exactly. And we engage with each other. Yeah, same thing they did in Africa. Yeah. Right. It's a century-long geopolitical ploy that's actually still working. Right. It teaches us a lot about how human society can work also. True. Anyway, that way. Now, since I have gone three directions, let me take a minute and do the west direction. Yeah, sure. So going from India again, Central India, Saurashtra, and going through modern-day Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Turkey, Syria, Romania. Sugriva is describing all these lands with a chain of mountains, a range of mountains. That's what it is. If you look at the geographical map of the world, that's what you will find. He describes all the way up to the Alps. And he says beyond, he calls it Astagiri. By the way, to Andes, he calls it Udayachala mountain, you know. And then to Andes, to Alps, he's calling it Astagiri. So Sugriva, in effect, just to summarize, knew 14,000 years ago from Andes to Alps and from Arctic Sea to Antarctica. That's the issue. Claims like these are the issue. True. Being left polarized may not be bad in writing history. I'm not following, actually. It may not be bad in writing history. It actually may be. So, like, itna mahan claim based on a few dots that you have connected from one book. Or one story, not one book. भाई तभी तो फिर रिस्पेक्ट नहीं करते ना जो मेन स्ट्रीम एकेडेमियंस हैं. तो ये हिस्ट्री में थॉर और अपनी यूनिवर्सिटी का क्लब होता है. ट्रैवल तो करते ही होंगे ये. हाँ, थॉर भी आता होगा कई बार. What's Asta? Giri's mountain. Asta is a setting of a sun. Yeah. Udaya, Asta. Okay. Yeah. Rising and mountain for the sunsets. From the point of view of India, if you think of it, with India in between. Sure. In the same way that he's described bats in South America, has he described other megafauna of people in other lands? People, especially in the Indonesia and Papua New Guinea, that area, of beautiful descriptions. I mean, we can go for hours. Beautiful description. Like, you know, he describes the folks whose ears, and now we can see that in Africa today, ears have come down to, like, you know, to their vest or something, or the lips coming down, which you see in Africa. Body modification. Yeah, body modifications. Yeah, like this. And in Indonesia proper, also in the Papua New Guinea, you actually see people putting. But also in Ramayana, वही सेम वाली बात हो गई ना कि वो जैसे उड़ के आए थे उसमें पुष्प विहान में, राइट? तो इट्स लाइक देखा आज एयरप्लेन्स आ गए हमारे पास. इट्स नॉट द सेम थिंग. राइट ब्रदर्स पुष्प विमान ही देख लेते, बेचारे लगे पड़े एयरप्लेन बनाने में. पागल. मुझे आई डोंट नो व्हाट दैट इज, कैंडेलब्रा ऑफ एंडीज देख के थोड़ा लगा क्योंकि वो एग्जैक्ट है. वो माउंटेन जो वो दिखा रहा था, वो जिस पे ट्राइडेंट वाला वो है. Alright. Well, you keep looking for, and like he said कि वो जो academians हैं उसको coincidence कहेंगे, of course कहेंगे यार. In a long enough timeline, in a long enough space, do you know how much coincidences you can have? मेरे पास भी alternate theory है. Ramayana is the story of Vedic Aryans killing and capturing poor indigenous Indians and calling them Rakshasas. Alright. All kinds of paraphernalia. But that theory is based on what? You have said that before, I know. And decorating themselves and so on, and those descriptions come there. Yeah. Anything else about megafauna? Megafauna, not much. At least not that I recall right now. The question that's popping up in my head is the whole Hanumanji jumping across the ocean and then meeting an asur on the way to Lanka, and then slaying that asur.
So my on the way to Lanka, right? My co-researcher, again, amazing researcher, Rupa Bhati. She's out of Gujarat. She's architect by profession, but this is what we do: engineer and then do something. She has her interpretation of it is that as Hanuman was going to Lanka, and not to Sri Lanka by the way, that would be open another box. So I want to do that right. We will be doing that. But it's referring to actually going. Think of this as going east of Maldives. That's where Ravana's Lanka was. Right now there is nothing, just a deep ocean. West of Maldives. East of Maldives, because okay, the zero prime meridian that goes through Kurukshetra, Sthaneshwar, Ujjain, Vatapi, and Lanka. Lanka is 0, 0, zero longitude, zero latitude kind of thing, right on the equator. So that's where we have to go. Maldives. We have to just go east of Maldives. Right now there is a deep ocean with a geological. देखा कैसे हंसा ये आदमी बट राइटिंग वाला कुछ भी बोले तो इट ही इज लाइक इट माइट बी ट्रू. Yes, it might be true, and that is quite absurd. Anomaly. Again, you won't open. And I'm also laughing at this guy. Shut up, Joe. That box right now, it won't tell us much other than something funny happened there. What do you mean something funny happened? The earth crust there below the ocean is one of the thinnest, and we don't know why that happened, but it's just one of the geological anomaly. So that's something to be noted down for maybe for future research. Why do geologists believe that it's thin? They don't know. That's why it's an anomaly and sort of a mystery and research. What if you dig through? So why are we talking about it? It will be interesting thing to do. A geologist on the show too. Yeah, that's right. That's right. So effectively, what you're saying is either there was an island there that got submerged, or it even possibly, again, Rupa Bhatti has done great research, many similar things, or because of say, and I'm going to come to that question that you asked about Hanuman meeting running into these individual creatures, very volcanically, possibly very active area then, and there are evidence that going back to only 2 centuries, 3 centuries, it has happened in Indonesia. A small island with active volcano broke into pieces. Actually, when it broke, it split, it moved on the surface of the ocean, so to say, literally the islands became separated from each other. Something might have happened, and then it would have disappeared, and Maldives and the whole Lakshadweep would be pieces of that. I mean, that's all speculation. If it exploded, it would have gone in the east direction also, and perhaps joined that with Papua New Guinea. That's too far. That's too far, right? Where we are looking at, from Papua New Guinea or Indonesia would be too far. But this is a possibility. Do you think the modern island of Sri Lanka was not a part of the ancient Ramayana? No, it would be part of ancient Ramayana. It wasn't Ravana's Lanka. And there is sufficient evidence for that. For example, Sri Lanka, I don't know if you know this, but the name Sri Lanka was given in 1972. Now, what happens is, see, for example, the land of Sri Lanka could be part of Ravana's kingdom. For all it matters, we don't know that. Majority of India was part of Ravana's kingdom. Like the whole Maharashtra was a part of Ravana's kingdom, based on the description. But what we know is that even recent history, like going back to only 1,000 years, when people are writing and about Puranas, many times they will say, like person living from their Lanka, then going to this island, then going to this island. In the list, they will refer to Simvaladweep, which is the old name of Sri Lanka. Simvaladweep. Because Sinhalese moved there. I mean, the Sinhalese, right, correct, right? So that is very recent. I'm talking last 1,000 years. But my point is, even in the last 1,000 years, they are referring to Lanka as a separate place from Sinhaladweep. So effectively, you are disagreeing with extreme right-wing portals which highlight the Ram Setu as one of the most important parts of Ramayana history. You're not refuting the Ramayana 100%. Correct. You're trying to look at it from a more evidence-based geographical perspective. That the island of Sri Lanka is not Ravan's Lanka that we hear about in Ramayana. Right. But Ravan's Lanka was... Architect by profession, became a historian. You would never see a non-doctor writing books on medical science or non-physics students writing about the laws of gravitation. Nice. किसने बोला ये? Chambal Girani. Nice. Possibly an island that was accompanied with a lot of volcanic activity that perhaps got submerged, just like that Atlantis story that we've heard about. Yes. And I remember reading this report way back when I was a teenager, and websites used to be very popular in mid-2000s. Someone had written an article about how... See, that's not just funny. That's also very true. क्योंकि इन काफ़ी चीज़ों में, especially the, talking about gravity and laws of physics, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ना non-falsifiable होती हैं, कि तुम falsify नहीं कर सकते. It's like सिद्धू आज मैं तेरे से 2 बार मिला था, एक बार सुबह एक बार दिन में, right? तो हाँ. If I literally make a claim कि मैं जब तेरे से मिला उसके बाद मैं दिल्ली गया, उसके बाद मैं वापस आया, can you falsify it? Can you prove me wrong? नहीं, I can't. हाँ, so I can literally make any claim, right? और टेक्निकली तो मैं ये बना सकता हूँ कि मेरे घर में एक मशीन है which defies the laws of physics, and वो मैं तुझे दिखा नहीं सकता because तेरी फट जाएगी, but मैं चांद पे गया था and I just came back. And that is why it is important to understand कि भाई extreme claims require extreme evidences. क्योंकि अभी मेरा काम है वो तुझे पहले अपनी जो थ्योरी है उसको प्रूव करना. उन प्रूफ्स के बेस पे तू देखे ना, जो मैंने फैक्ट्स या फिर स्टोरी दी है उसके बेस पे तू देखे ना कि तेरी स्टोरी ढंग से मिल रही है नहीं मिल रही. तो दैट्स होल थिंग. तो इफ आई से कि वो फिजिक्स का लॉ डिफाई कर देते, दैट माइट साउंड स्टूपिड, बट यू कैन नॉट डिस्प्यूट इट लॉजिकली. बट हाँ, इफ आई गो कि वो ऐसे इस तरीके से मैंने बनाई है और ये सब होता है, इसके बेस पे वो डिस्प्यूट करती है, देन यू कैन टीच मी इजीली, मतलब टेल मी इजीली कि देखिए ये सारी चीज़ें डजंट लाइन अप लॉजिकली, राइट? वी ऑल नो समवन हु हैज़ अ PhD in medicine and teaches business. जिन भी चीज़ों में स्पेकुलेशन ज़्यादा होगी उसमें यू कैन डू दैट. बिकॉज आज की इज्जत कहाँ है, पीपल बी लाइक कितना ही एफर्ट लगता है, स्विच करो. मैंने ताली मार के पेड़ हिला दिया था, बट मैं आपके सामने नहीं कर सकता. ट्रू. What's funny is that none of the right-wing historians in India are history students. Fuck, bro. All right. Atlantis possibly could be Lanka. It doesn't need to be. Actually, again, if you have to go there, we have to pull another graph and okay, go to Google, do Paul Blanchard. You see, so yeah, the same guy. Ranveer is doing this thing in a dumb manner.
and he's doing it in a little smarter manner than Ranveer. उसने रणवीर ने सीधा वो लॉस्ट लैंड ऑफ आइलैंड ऑफ एटलांटिस जो भी था वो लंका हो सकती है. हाँ. अरे भाई रुक जा. मतलब थमो भैया. सबर रख. रुक जा, सबर रख. पूरी दुनिया ही पहुंचा रहा हूँ, वो भी बताऊंगा कि कैसे वो लंका है, वो बताऊंगा. रुक जा. Again, if you have to go there, we have to pull another graph and okay. Okay, go to Google. Do Paul Blanchon. Okay, so yeah, the same guy. By the way, he did his PhD in the same university where I was doing my masters in Canada. Amazing individual. Now, what we need is one of his paper. Okay, reef drowning during the last glaciation. Hold on, just give me a second. What year is that? 1995. 1995. Perfect. Click on that. Yeah, we. And you're going to be fascinated. I'm going to show you 3 Atlantis. Damn. One is Ravana's Lanka. Second one is the Plato's Atlantis. Third one is Krishna's Dwarka. Right on one chart if you find this. Okay? Reef drowning during the last deglaciation. Yes. Evidence for catastrophic Rise sea event. level rise and ice sheet collapse. This is the global warming that happened in that phase. And by the way, the global warming we see today is accelerated because of pollution, but it is also an act of nature, taking away nothing from the reality of global warming. It's a massive problem environmentally speaking today. But the Earth goes through cycles of cooling and warming up, which is why we see ice ages in the first place. Ranveer just wants to be, safe with all of his opinions. And deglaciation, which is what he's talking about. The question I have for you is, was this nature based or was it because of some catastrophic event like a meteor strike? No, it doesn't. No, it's not meteor strike. It is that global warming that has begun in the last 20,000 years. Again, it's not some global warming the first time. No, the whole cycles based on astronomy as well that's going on. Right. So last 20,000 years ago, why do we say that? Because that was the LGM, last glacial maximum. And since then, water sea levels are rising. Okay, so the sea levels are rising very smoothly, but they are interrupted by these CRE, catastrophic rise event. So otherwise, it's going like this, but it's like this. Okay, so these are the 3. As in, temperatures warm up gradually according to the natural course of things. Correct. But sometimes events happen because of which suddenly the temperature will increase. Yeah. He's an author, वैसे, and he's written about the historic Ram. When did Mahabharata happen? And Bhishma, Nirvan. All right. Simple example would be, say there's a block of ice sitting and it's slowly melting, but a point comes when it cracks and a big block falls down. Okay, gotcha. Something like that. So suddenly that's going to Global warming today is anthropogenic, means due to human action. create waves into the water. And then just that block of ice breaking down will create a lot of weather changes. It'll recreate Changes maps, the etc. water levels, migrations of people, loss of life, and Everything that people are afraid that global warming will cause in the 2030s and 40s could happen in one shot Absolutely. if nature wills it, like it happened back then. catastrophic. Hence the name. Geologically speaking, can this happen randomly even now? Yes. That's what people fear. Yes. Where environmentally conscious people fear this exactly. Correct. And see, environmentally, we should be cautious irrespective of this global warming and sea levels rising. And saying these same things is why people hate alternative takes on climate change. But that's for another time. Because we need a clean earth. Yeah. And earth is dying, in many ways. But in terms of the sea level rise, we may be close to how high it gets. Okay. That is not to say be very comfortable in Mumbai and Los Angeles and New York. No, we should worry. Like it's going to get worse. It might get worse before it gets better. But we are almost, if you look, Chalo had the courtesy not to call himself a historian, unlike Vikram Sampath. Vikram Sampath कौन है? I thought you would say Abhijit Chavda. I don't know much about this guy. Savarkar echoes from, all right. look at the 100,000 years of record, we are almost there in terms of the highest sea level, right? Possibly. Sorry, I'm not letting him continue. Again, this is for better understanding. We have a meteorologist Please, yesterday. yes. He's one of the most reputed ones in the world. His name is Dr. Jagdish Shukla, and he's contributed a lot to the Indian climate change movement, etc. And he's contributed a lot to even the Indian science. Not getting into that, he spoke about how the way we're going right now, if we don't stop polluting the earth and using fossil fuels, then by 2030 we're going to do irreversible damage to the earth. So we only have 6 years left until we actually see perhaps a bit of an apocalyptic situation. Only 6 years. That wouldn't surprise me. I would say similar predictions has come in the past, and that's not to discount what he's saying. Actually, I'm so glad he's saying this. But the human nature is such that humans will not understand. Many of them have no luxury to understand with their daily survival things. So it is for people who have a luxury of thinking like this to do something about it. बल्कि रानी अब इसकी बुक मंगवा लेगा क्यों बताया? Fuck off, Joffrey. Fuck off. Man, you're such a hater, Joffrey. You're such a hater. You're so blinded towards the right. मेरे पास उस दिन से पता यही पड़ी है. I didn't even touch it since that day. Fuck off, Joffrey. We have to say it's from indoctrination. Oh no! You guys would do anything to indoctrinate me into the left. All right, fuck off, you guys. But what will happen is the earth is also. वीर सावरकर की बुक है. मोदी के सार तो पढ़ो होनी ही थी. Show her the book. All right, show her the. Joffrey. भाई जली रहती है Joffrey. I fucking love it, man. Here's the book. Focus, there you go. Hindus in Hindu Rashtra, 8th class citizens and victims of state-sanctioned apartheids. Anand Ranganathan. All right.
It's so fucking. I love it. And then you guys are fucking retarded. You know that. You guys are fucking retarded. So okay, I get it. You're on the left. Don't you think it's important for you to understand where the people from the right are coming from? Don't you think it's important? Like, do you just want to box them into, oh, these are like all old conservative evils? I love the Western right. Why? extremely vibrant, and it is capable. What would an ambulance do for, retards? Daniel ones are just plain stupid. यार मेरे को हर बार confusion होती है. Define left and right. Geoffrey gone. Yes, but not non-historians. All right. Fair enough. That's fair. See, I'm being fair to you guys. Yeah, Geoffrey, you define left and right. मैं आगे देखता हूँ थोड़ा, because I don't think you're watching it anyways, or you're not interested. That's for sure. Of reversing itself. But that's not to discount his point. Actually, I don't know if it's a 6 years, because similar predictions I have even heard in 1990s, and we are still around, but maybe not as healthy as we ought to be, or things like that. So also ये 2012 वाली prediction भी वो भी scientist ने दी थी ना शायद. Who predicted the 212 collapse? I don't know what would you call it, destruction. This guy claimed the universe has a theological. I think that was because he believed this which would eventually reach a singularity and infinite complexity. At which point, what did Mayans accurately predict? Mayans never predicted the world to end. Doomsday. कुछ ऐसा था ना, कोई ये कैलेंडर था उसमें इसके बाद की डेट्स नहीं थी, ऐसा कुछ था शायद. नहीं वो तो 2K था, 2K के बारे में था. द होल इंडियन रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ह्यूमन कल्चर बर्बाद कर दिया है. हमें कुछ पता नहीं है, हमें सब कुछ पता था. दे स्प्यू ऑल दिस इन द नेम ऑफ बीइंग राइट. दे इवन गो टू अ पॉइंट. डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर दूंगा, यहाँ वर्ड लिमिट लग जाएगी फॉर. इन शॉर्ट, जो लोग राइट से आते हैं, राइट साइड में होते हैं, दे आर मोर कंजर्वेटिव्स, एज इन they basically usually I could be wrong, right, but उन लोगों का बेसिकली क्या होता है कि हाँ, हमारा जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट रखना है, हमारे कल्चर के हिसाब से हमारी वो सब चीज़ें रखनी है, जैसे इंडिया में हिंदुत्व बिलीव्स रखते हैं. एंड द लेफ्ट इज यूजुअली मोर लिबरल. It's usually coming up with new things के पुरानी, we need to tear down old traditions. I'm speaking hyperbolically. We need to tear down old traditions, make new things, and this and that. So it is happening. I mean, the oceans are dying in a certain way. The sea life is going away. With the organic fertilizers, the land is getting very, very bad. So like Sadhguruji's movement for soil recharge, save soil. These are all very good initiatives. Now let's carry on. Okay, we are talking Ravana's Lanka right now. Sure. But where is the dirt archaeology evidence? This is dirt archaeology evidence. You see, for example, that vertical line. This is basically, so x-axis is the time, y-axis is the rise in the sea level. Gotcha. Okay. Now you see the vertical line where you see it. Okay, the most vertical line that you see there in the vertical rise. Vertical rise, correct? If you draw a straight vertical line above there, it is going to hit at 5,525. I mean, maybe you can find 5,525 and just draw a line. Mahabharata text says that Krishna's Dwarka was flooded and destroyed by gushing sea waters 36 years after the Mahabharata war. 55. I love to see an Indian actual historian who has more non-Marxist point and follows more rational methodology. We had many of them before the Marxists takeover of academia. Yeah, that's like one of the worst things that ever happened. 61 plus 36, we have to do minus. I'm being pompous. 36 because of BC, 5525 BC. In the middle of 6th millennium BCE, which is 5525 BCE, 5500 BCE, there was a. This is Arabian. You cannot have education be bombarded by one side. That's the issue. 5525 BC. In the middle of 6th millennium BCE, which is 5525 BC. And you fucking leftists. So what's your problem? You have like the entire education sector. You have the entire fucking film and media center. What more do you need? क्या अब थोड़ा सा film center right में मतलब right में ला रहा है. BC 5500 BC. There was a. This is Arabian Sea data. Dwarka is on Arabian Sea, west coast of India. Sudden sea level rise. Listen to this, of 15 meters. Imagine 15 meters happen in Mumbai. Forget 15 meters. 3 meters would be disastrous. 15 meters sudden sea level rise in the middle of 6th millennium BC in the Arabian Sea. That's Krishna's Dwarka getting destroyed. 2 meters is about a 6 foot 5 or 6 foot 6 feet. Simple 6 feet, yeah. And you're saying 15 meters. So 50 feet. 7 times that much. 6.5 foot guys kept one above the other. Yes. That's how much sea levels rose. Yes. All over the world? That's the interesting part. We can go around the world if you like, but fair enough. Aman. This one is only the Arabian Sea, which has a direct connection with the Krishna's Dwarka. I wonder why, keeping physics in mind, it wasn't all over the world. Great point. Actually, a brilliant question, and I'm not doing this to praise you. I'll still take it.
The brilliant question. Do you know why? Because there is a phenomenon called subsidence or subsidence. Whereas because water is a liquid, you would imagine that around the world they are all connected, and in an equilibrium state, they should attain the same height. Yeah. True. But the local landmass with respect to the ocean level is also changes. Okay, got it. Because land can be shaped differently. Locally, right? Because these are the tectonic plates, different tectonic plates. Right. And some pieces of land may block out the water like a dam. correct. And actually land goes down. That has happened in Dholavira in Gujarat. The land has come up in our times. So the ocean is no longer there in Dholavira. Two reasons. Actually, water level is coming up. So why the water went away from Dholavira? Because the land has risen there. But so this is Dwarka, Krishna's Dwarka. What was effectively saying is the crust of the earth is not like an eggshell. It's like a combination of different pieces of earth that go all around, float around, and also go up and down. Correct. And then there are many other phenomena. Like we call it, this is a tectonic, like the tectonic land, but there is something called earth crust displacement. Also earth crust displacement, like an orange skin moving over the core of the orange without moving the core of the orange. That's another phenomenon. Something else. Depending on the quality of the clay and everything, what sinks, what comes up in an individual area changes. It's a very complex phenomenon. Okay. Now remember the time of Ramayana. There is no written evidence, but in the and none of what was deliberate by the left historians is just plain right wrong. We have disagreements with them, but they don't really raise abrasive claims. Okay. You and most people today have such Back. Oh, okay. I don't even know the word parochial. What is that? Fucking stupid. Dude. Geoffrey, I think you are the only person in the world who believes I'm so far on the right. Vikram Sampath. What is it? Relating to a church parish. What does this mean? Having limited or narrow outlook or scope. Alright. Dude, I have narrow outlook of the entire fucking political world, man. What are you talking about? Let's say ज़्यादा infighting कहीं नहीं होती. There are different reasons for that as well. Different temperamental reasons for that as well. You know, the best indicator we have of someone's political leanings is their temperament, actually. कहाँ था वो? खत्म होने वाली है तो finally. The tradition of India, Kerala, I have seen from a Kerala novelist. Actually, he used my dating and wrote a novel. I mean, he wrote his novel, used my dating of 12,209. Okay, Trivin Nair. Okay, so 12,000. Now remember that KA is like 1,000 years before today. Before today. So to go 14.2K is 14,200 years. Is 12.2. Like 12.2 BC. 12,209. Exactly that time. Now remember, because it's a scientific thing, it always has a standard error of plus minus 150 years and so on. So around that area, you see what is happening. So x-axis is time, y-axis is the sea level rise. So we have to start from here, from the right, 20,000 years ago, and we are coming towards the left as our today's time. Right. Okay. So slowly water level is rising, but at 14.2, which is Ramayana times, suddenly there is a sea level rise of 13.5 meters, and then plus minus whatever it is. Which is probably what sank original Lanka, Ravana's Lanka. Now this is a speculation in the sense there is no explicit reference to the destruction of Ravana's Lanka, but if you come to Mahabharata, there is no clear description of Ravana's Lanka. True, I mean, true, so fucking true. Because in Ramayana times, Rama is going there. In Mahabharata times, Sadev calls Bhima's son, Ghatotkacha, and says, please go on my behalf to Vibhishan and just get his permission when they're doing the Rajasya Yajna. So this is called, there's another field, I mean, academics should know that, called hagiography, or sort of think of it as a fill in the blanks. When all the information is not there, still somebody's going to ask, what happened to Ravana's Lanka during the Mahabharata times? So the narrator has filled it with this. But here, quickly, so that is that possibly the loss of Ravana's Lanka. I'm done. I mean, kuch aur hai kya which I need to watch here? What do you think? Popcorn brain और ADHD ये क्या है? You know ADHD, right? हाँ. ADHD को commercialize और normalize करने का एक नया term आ गया, popcorn brain. Popcorn brain. So basically popcorn brain is कि you have less attention. वो तो है ही सबको, इस पूरी जनता को ही है. And then you switch topics also very quickly. So how popcorn जब वो बनते हैं तो how popcorn jumps. So that is me. So that is ADHD का normalized version. That is most people now. That is most people. जब मैंने वो news पढ़ा I was like कि भाई ये क्यों commercialize कर रहे हो तुम, ये क्या बेचना चाहते हो? मैंने देखा है लोग अपने घटिया values को mask करने के लिए कोई term दे देते हैं. मैं तो ये हूँ. You know ADHD. That is so fucking true, dude. सिद्धू तो है? हाँ bro. I knew this lady. Who? And she would do all sorts of things, and I don't want to say too much. I hope she just never watches this. But I say, she'll do all sorts of things, and then whenever you hold her accountable for it, it's like my ADHD is acting up. A lot of the times that might be true. And my point I also is, know a woman like this. Yeah. My point is, again, I believe I don't want to be like, oh, you're using it as an excuse. I don't know. Maybe all of that was true. But you don't get a get out of jail free pass for that. And right, it can be used once, twice, right? It cannot be your go-to strategy every time you fuck up something. नहीं मेरा पता point क्या है. It's like बहुत से लोग कहते हैं ओ मेरा गुस्सा control नहीं हुआ, right? हो गया मेरे से. Now that is also someone's temperament, and as much as we know, maybe we can't even control our temperament. Right, ADHD. So
रिसेंटली पीपल मेरे उसमें रेडार में ज़्यादा हुआ है कि लाइक हाउ जिन लोगों को ADHD होता है, लेजिट ADHD होता है, एंड आई हेट दैट. ADHD ज़्यादातर कौन वो करते हैं? साइकोथेरेपिस्ट, राइट? साइकाइट्रिस्ट के साइकोथेरेपिस्ट जो भी व्हाटएवर बताते हैं ना. हाँ, बट जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड केस है फॉर ADHD, दैट इज़ लाइक यू कैन स्कैन पीपल्स ब्रेन fMRI स्कैन करके, या पता नहीं कौन सा करके, एंड यू कैन सी जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है जिन लोगों को ADHD है. देन व्हाट द फक आर थेरेपिस्ट्स डूइंग? फिर तो कोई उनको डायग्नोज होना ही नहीं चाहिए ना ADHD विदाउट दैट चेक, विदाउट दैट स्कैन. बट जितने लोगों को मैं जानता हूँ एंड दे आर लाइक मुझे ADHD है एंड दे हैव नेवर गॉन थ्रू दैट स्कैन. चूते बना रहे मैं. यार तो मैं तेरे को चीज़ बताता हूँ. तो वेरी मतलब a very one touch thing. So my sister is doing psychology, ठीक है? It's a उसी scam. कॉलेज में I'll not name the college. Yeah. So I'll not name the college. And she wanted to do masters, तो उसने MBA करना है, कुछ तो करना है, ठीक है? तो उसके कॉलेज में मैंने पूछा कि अच्छा, so she's like near her placements and everything. तो मैं उससे पूछ रहा था कि जॉब्स कहाँ लगेगी? कहती हमारी जॉब्स अभी नहीं लग सकती हैं. पीपल वो गो फॉर हायर स्टडीज, विच विल बी मास्टर्स, ठीक है? मास्टर्स करेंगे, जिसको इसी फील्ड में रहना हो इसी फील्ड में रहेगा, जिनके पास पैसा वो लोग बाहर चले जाएंगे, एंड अदरवाइज पीपल वुड चेंज देयर फील्ड. तो साइकोलॉजी जो लोग पढ़ रहे हैं, दे आर बेसिकली डूइंग दैट अंडरग्रेड जस्ट टू गेट अ डिग्री, इफ आई से सो. एंड शी इज फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड कॉलेज. ऐसा नहीं है कि शी इज नॉट फ्रॉम अ, शी इज इन अ प्राइवेट कॉलेज और समथिंग. शी इज फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड कॉलेज. बट अगेन दिस इज द केस ऑफ जो कि आगे जाके थेरेपिस्ट बनने वाले हैं नेक्स्ट लेट्स से 6 years 7 years. नहीं, even I talked to a model recently. Well, fill in the blanks, right? And she's also doing psychology, and I'm like, why psychology? And she's like, I wanted admission in this campus and I couldn't get it. Otherwise. So, yeah. Delulu Solulu. I don't know what that means. Someone. Delusion is the only solution. That is a very popular one. Yeah, Delulu is the only Solulu. छोटे बच्चे ने शुरू करा है. किसने? छोटे बच्चे ने होते इंटरनेट पे स्विफ्ट टाइप. ओके, ऑलराइट. वही 10 साल पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर रहे थे, AIB. पीपल हैड गट्स. नाउ आई डाउट दे डू. You need to have at least an MPhil to be a clinical psychologist in India. Well, I'm telling you, therapy is a scam at least. Psychiatry is a bigger scam. No, yaar, I don't mean that, guys. Don't take it too seriously. Personally, I might. I'm starting to think so. Well, it's not a scam. It's like the weakest pillar of science. That's for sure. मैं ना एकदम वो थोड़ा सा मेरे बत्ती लेट चली. ये भी 10 साल पहले ऐसी वीडियोस बना रहा था that are still relevant today and still good today if you watch them. True. मतलब नहीं, some of them I would say. क्योंकि ये देखना, if memes had exams, like all these memes are probably outdated. जैसे there's this honest campus placement. I think वो 8 साल पुरानी वीडियो है, 9 साल पुरानी वीडियो. I think monologue है, bro. That monologue still hits a lot of people. मतलब मैं comments देख रहा था. हाँ. People are going and commenting अभी भी कि it's so relatable ये. हाँ. But religion is not. What do you mean religion is not? Honest campus placement still works. यार एक मैंने वो देखा था, वो पता नहीं किसका था मुझे. Oh, shot on dread. एक मैंने वो देखा था सुपरस्टिशन का, पता नहीं किसका था, TVF का था शायद. I just remember it so well. Hey guys, नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ही क्लीशे और बोरिंग है. बेल आइकन दबाइए और द स्क्रीन पर There's like superstitions were real. This is so good. सारी नोटिफिकेशन पाइए. A scam. A lot of it has turned into a scam. I still remember why इसमें एक shot आता है, reverse shot आता है, it's like through the wall something. I remember it very well. See? Nice. Okay, ठीक है, मतलब not getting any VFX awards.
never know, people are getting climate awards. I love the sound effect. आजकल ये खैर उस टाइम तो पता नहीं, लेकिन आजकल तो ये खाली प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से चलेगी ये वीडियो तो. बट देयर आर गुड जोक्स इन इट. तैयार हो? जी जनाब. जन्नत जाओगे बेटा? जी जनाब. जन्नत में हूरें होती है. जनाब जरा वो टॉयलेट होके आ जाए. मुट्ठल. जनाब आप मुट्ठल मत बोलिए, आपको भी पता कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे. अच्छा अच्छा नहीं बोलूंगा बाबू, नहीं बोलूंगा. जाओ बम फोड़ो. जी जनाब. शहादत इस दफा शहादत देखे रहेंगे. जनाब मसला हो गया, आज बम नहीं फूट सकता. अल्ली ने रास्ता काट दिया है जनाब. इसमें जो डॉक्टर वाला था, that was my favorite actually. बहू चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर दो, कलेश हो जाता है वरना. माँ जी आपके पास रखिए, आप ही कर लो ना. हाँ हाँ यही काम तो रह गए मेरे, चप्पल सीधी करूं मैं अब. तो करती भी क्या हो, और बैठी तो रहती हो सोफे पे. अच्छा तो सारा काम मैं करूं है, तू बस चिल करेगी. कौन सा काम किया, चाय तो पीती रहती हो बैठ करके, करती क्या हो. हाँ तो काम करने के लिए तो लाई हूँ, तुझे सर पे थोड़ी ना बिठाऊंगी अब. हाँ यूसुफ. जी जनाब कैसे हो? अरे जमील के पास पहुंचो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया उसका. नहीं जा सकता जनाब, मसला हो गया. तेरे साथ क्या मसला हो गया हरामखोर? जनाब मेरी उल्टी आंख पड़ गई है, बाहर जाओ पुलिस पकड़ लेगी मुझे. हेलो हेलो. अरे भाई साहब मुझे वो आ गया कि कॉपीराइट हो जाएगा. उम्मीद नहीं था ना तो स्क्रीन पत्ती का भी आ जाएगा, बट डॉक्टर वाला फिर भी चलाऊंगा मैं. दिस वाज एक्चुअली वेरी गुड. ये बिली रास्ता वाला ट्रांस रिलेटेड सुपरस्टिशन है. ओ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है मैडम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम. ये वाला नजर लगी आपको. तो डॉक्टर मुझे तो पथरी हुई है. अरे यार पथरी वथरी कुछ नहीं होती, सब बहम होता है, मैं बता रहा हूँ. शादी को सीन चल रहा है. This guy is a good actor as well. This is good. Even that guy at the front. यार डॉक्टर मैं हूँ क्या आप? मैं हूँ क्या आप हो? अरे डॉक्टर आप फिर बहस. ये लड़की बहस बहुत करती है यार. कंपाउंडर एक काम करो, दिया बना कर आप उल्टा पाऊंगी, चप्पल दीजिए, अभी ठीक करता हूँ आप. अभी ठीक करता हूँ, लाइए दीजिए आप अपनी उल्टा. क्या? ऐसे नेक्स्ट वाला और एक this is my favorite one. ये देखा तूने? नहीं यार नहीं देखा. यार ये अच्छा अच्छा, मैं बहुत ओवर हाइप कर रहा हूँ नो, बट दिस इज एक्चुअली रियली गुड. डॉक्टर साहब वो बच तो जाएगी ना? बच जाएगी बच जाएगी, मैं यहाँ का बेस्ट सर्जन हूँ. बच जाएगी, लिख के देता हूँ. लिख के दो फिर. अरे यार लिख के दो, आप लिख के दो. फिर बहस कर रहा है. अरे लिख के दो ना. बदतमीज आदमी, ये क्या किया? मैं नहीं जा रहा ऑपरेशन, मैं नहीं जा रहा ऑपरेशन करने. अरे क्या हुआ? मैं जा रहा था ऑपरेशन करने, इस मोटे ने छीप दिया. अब बताओ बुढ़िया मरेगी नहीं मरेगी? मरेगी नहीं मरेगी? अरे आप अब नहीं जाओगे तो मरी जाएगी ना वैसे भी. अरे तो उसके मर्डर का इल्जाम मैं अपने सर पे क्यों लूं भाई? बहन जी आप अर्थी की तैयारी कीजिए और इसको पकड़िए, इसने मारा. तू मोटे नरक में जाएगा, मैं बता रहा हूँ नरक में जाएगा. तू मोटे बंदी मारी तूने. क्या? Nice right? Nice यार. Yeah, golden age of Indian YouTube. No controversies, nothing. Bro, lazy feel करता हूँ पूरे दिन, क्या करूँ? I am just starting to get better at it. मैंने finally अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह पूरा करा शेड्यूल. मेरे साथ एटलीस्ट व्हेन आई हैव अ प्रॉपर शेड्यूल देन आई डोंट फील डीमोटिवेटेड, क्योंकि जब पता है एग्जैक्टली क्या करना है तो एक दिन का टाइम मैं लेता हूँ. आई फिगर आउट माई वीक एंड देन मैं कैलेंडर वगैरह पे करके वी कैन हैव अ स्ट्रीम अबाउट प्रोडक्टिव शिट एज वेल. कभी तो कुछ काम आए. एंड मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो. ऐसे स्कैम है सब. धूप में रहो एंड कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर, मर जाओगे. अरे नहीं जाओगे तो भी हो रहा है. हाँ हाँ. अरे कैंसर तो हर चीज होता है. कैंसर इज जस्ट एक्सक्यूज फॉर डेथ टू टेक अस. 4 चम्मच दही चीनी खा गया. ये बंदे का इंटरव्यू गंदा जा रहा होता है, बट ये दही चीनी खा गया था घर से. यू नो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे नहीं हैं. और ये शर्ट पे दाग क्या लगा रखा है? ये दही चीनी खा गया. सेलेक्टेड, ब्रिलियंट का. गुड.
ओहो इसके बाद इसका तो पूरा सेगमेंट अच्छा है। इंटरकट नहीं खैर अच्छा है, इंटरकट करके बेटर कर रहा है वो तो, हम कॉपीराइट से बचा रहा हूँ ना मैं। 4 चम्मच दही चीनी खा के आए हो? जीएम बनोगे तुम, मैं तुम्हें जीएम बनोगे तुम, ये लो। जीएम बनोगे तो तैयारी कीजिए और इसको पकड़िए, इसने मारा, तू मोटे नरक में जाएगा, मैं बता रहा हूँ नरक में जाएगा, तू मोटे बुंदी मारी तूने। क्या दही चीनी लेके भी आए हो? जो कंपनी तुम्हारे नाम यार। ये बेटी है, शादी कर लो। That guy does the I think also. Yeah. So fucking good, man. So fucking good. हाँ वो streaming schedule. नहीं Joffrey, fuck you Joffrey. I have a legit schedule now on my hands, alright? I wouldn't show too much though. But I have a legit fucking schedule, alright? Fuck off. See? You see? That's a fucking schedule. That's how schedules work, right? I might even have it here. Notion ने अपना calendar release कर दिया, पता तुझे? Release कर दिया, बंद रखा था. अरे हाँ मैं देख रहा था। Notion ने बोला fuck it. अब तो हम कैलेंडर डाल देंगे। हाँ रुक जाओ। It's actually very good. And sync भी है ना सबसे। हाँ तो this is actually really good. You can put in तुम अपना Google वाला कैलेंडर in it as well. And मतलब वही IIS वगैरह सब। And इसमें तुम अपना वो जो डेटाबेस है वो भी डाल सकते हो ना। So that's the best thing कि you can add your own databases जो Notion के हैं इसके कैलेंडर में. It's fucking amazing. So you see I have a fucking schedule going on. मतलब okay it's not very well done yet. अभी बनाना शुरू करा है मैंने. But I have it. Alright, fuck off. भाई अपने I'm fucking with you, Joffrey. I know. नया नाम दे फटीग अब तो बीमार है। Funny chat, funny. अरे कल किसी ने मुझे जोक सुनाया। तेरे सुनाऊं? अच्छा हाँ बोला तूने? हाँ मैंने सुना ही नहीं। हाँ सुना। अच्छा what is the name of सिद्धू मूसेवाला's brother? अरे वो सुना था मैंने तो बोल रहा था यार सिद्धू दूसरे वाला। गुड फकिंग जोक तो। चले गाइस 2 बज गए भाई, मेरा शेड्यूल के हिसाब से मेरा टाइम हो चुका है गाइस जाने का, तो हम चलता हूँ। Alright guys, see y'all later. Later gator. Alligators. कुछ खरीदने का मन कर रहा है मेरा। क्या खरीदेगा? पता नहीं, मेरा कुछ नहीं खरीद रहा है, बहुत पैसे लग जाते हैं यार। शुभ रात्रि चमल की रानी। I hate this name. Malika Hind was so good. Good night Joffrey. Bye man. Good night. Thanks for joining guys. Thanks for joining. कमीनो हरामी कुत्तों। तूने मूवी तो देखी नहीं किसी ने? कौन सी मूवी? अरे मैंने बोला था रिजर्वायर डॉग्स देखना and you know we'll do a fucking analysis of that movie like but किसी को मिली नहीं वो, मतलब समझ ले कैसे नहीं मिली। Yes Nilesh, we can't love everything true. Fucking hate it. But हाँ खैर कौन सी मूवी? रिजर्वायर डॉग्स बोली थी यार मैंने। अमन जॉफरी को मिली नहीं and ethically I cannot send a link technically, right? This movie. Or maybe you can pick a different movie as well. But this is like really really good. जो टेरेंटिनो ने बहुत सस्ते में बनाई थी and you know it's like master storytelling बहुत कम पैसों में। मतलब बहुत कम से मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे लेवल का बजट नहीं, 1 मिलियन तो हो गई। इसमें खुद भी है टेरेंटिनो? 12 लाख USD। अब हर मूवी में थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। 1.2 मिलियन डॉलर्स बेसिकली बजट था। नाइस। कते हैं आसिफ, क्या हाल है मेरे भाई? IMDb रेटिंग कहाँ पर है? 8.3। ओके। आज मुझे मिली थी बट सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए, नॉट फॉर डाउनलोडिंग। थोड़ी देखी थी। यार वो है ना कि अब मैं एकदम आउट ऑफ द ब्लू शुरू कर दूंगा, किसी ने देखी नहीं होगी मूवी तो फ़ायदा नहीं है। हिंदी में कते बनी है ना? अच्छा मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ है क्या? काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे दिल की। ओह they copied the fucking दिलो आज
मैं कह ओह भाई संजय दत्त को देख, पैट की टांग। Are you fucking kidding me? Oh my god. Is this ब्रो like तू ये देख, तू रिजर्वायर डॉग्स की देख रहा है, तू कांटे देख भाई। कहाँ? एनी। अरे कोई नहीं, आ जाएगी यार ले। Kill, threaten, maim, kidnap, steal, murder. Meet the masters. Fuck bro, Oh my fuck. ये इस मूवी का गाना है। Fuck. The Italians have their mafia. Colombians have their cartels. Chinese have their trials. ऐसा कुछ तो नहीं था उसमें यार, रिजर्वायर डॉग्स में। Nothing but police records. He's just Bro. wasting our time. He's bullshitting us. Wait, who was that? He's just wasting. She looks like Uma Thurman. उसकी स्पेलिंग क्या नाम है मुझे नहीं पता। Doesn't she look similar? तो बुढ़ी होगी। डाल के देख कांटे। नहीं, आगे but लिख she's कांटे, probably वो not. मत तरमन कांटे। She's probably not her. नहीं यार, clearly not her. Our time. He's bullshitting us. Tough to make them talk, sir. What do we do with them? Let them go. नहीं भाई, ये वो नहीं है। Those damn Indians. We'll get those damn Indians. तो कांटे ही देख लेता हूँ। कट्टू कट छापी होगी। घंटा। ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। टैरेंटिनो कौन? है यार। अबे मैं निशाना। रहे तो एक दिन खुद निशाना बन यार, should I do something with Discord as well? जो भी उस बैंक को लूटेगा, सारा पुलिस डिपार्टमेंट। और मैं वो बताना चाह रहा था यार, लोगों को प्रैक्ट के बारे में बताना चाहता था। गाइस, ये लास्ट बात बताता हूँ, फिर मैंने सबको बोला मैं जा रहा हूँ, सब कहा बाय, गुड नाइट। फक यू, आई एम हियर। नहीं यार, कट्टू कट छापी होती तो कितना फायदा होता। एंड फकिंग हेल दैट गाय रेडी वांगा, डूड, उसने अपनी खुद की मूवी कट्टू कट कैसे छाप दी? कबीर सिंह एंड अर्जुन रेड्डी। अपनी खुद की मूवी कौन कट्टू कट कॉपी करता है? कबीर सिंह उसने बनाई है। हाँ। फक ब्रो। अपनी खुद की मूवी कट्टू कट कौन पेस्ट करता है? अरे तू जा रे। अरे नहीं जा रहा रे, सुनो तो सही। अरे यार, खैर तुम जॉब वाले हो ना सिद्धू, आ रही हो? खैर नहीं, तू भी जॉब वाला हो गया अब तो। प्रैक्ट वाला आइडिया याद है तुझे? हाँ याद है। हाँ, इट्स नॉट रिलेवेंट एनीमोर दो। पर मैं कर सकता हूँ, बट दैट आइडिया इज नाइस। ओके। मैं ऐसे ही क्लास वर्क कॉपी करती थी रफ कॉपी से। ऑलराइट, पढ़े लिखे बच्चे हो यार तुम। तो ओके, बेसिकली प्रैक्ट आइडिया बताता हूँ मैं क्या है। तो प्रैक्ट इज़ एन आइडिया जो कि मेरे दिमाग में से निकला था व्हेन आई वाज टू फ्रस्ट्रेटेड विद एवरीथिंग, क्योंकि आई वाजंट डूइंग वर्क एंड दिस एंड दैट। तो बेसिकली व्हाट आई सॉ इज़ कि दिस यूज्ड टू हेल्प मी। ये कुछ लोगों को होता है, वर्क विद मी टाइप की वीडियोज़ होती है। डिस्कॉर्ड पे पायरेसी सेक्शंस बना दो एक मूवीज़ के लिए। तो बेसिकली इस टाइप की स्ट्रीम्स होती हैं, वर्क विद मी स्ट्रीम्स। तो बेसिकली कई लोग साइड में चला लेते हैं एंड दे अपने घर में ही दे आर ट्राइंग टू डू। एक तो तुम्हारे पास नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चल रहा है, सो पीसफुल म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक चल रहा है। तो घर में ही व्हाट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट घर के अंदर ही। दिस हेल्प्ड मी अ लॉट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग और जो बैठ के चीज़ें करनी होती है ना। सो आई गॉट एन आइडिया, व्हाई नॉट यूज दिस सेम आइडिया एंड क्रिएट अ डिस्कॉर्ड चैनल जहाँ पे एक सेक्शन होगा स्पेसिफिक, वहाँ पे 25 मिनट का पोमोडोरो चल रहा होगा, दूसरा होगा जहाँ पर 50 मिनट का चल रहा होगा। तो 2 पोमोडोरो सेशंस चल रहे हैं 50-50 मिनट के, 25-25 मिनट के। एंड यू नो आई जस्ट कम ऑन लाइक ये मैं ऐसे दीपक वैसे भी करते थे। जब हम अपना काम कर रहे होते थे, हम डिस्कॉर्ड पे आके बैठ जाते थे कि हाँ वी आर वर्किंग, और अपने अपने माइक्स एंड हेडफोन्स म्यूट कर लेते थे। सो इट्स द डिस्कॉर्ड पे लड़कियाँ आ सकती हैं? नहीं सॉरी, especially not on those days. मेरा तो काम ही मीटिंग्स का है। अरे यार, सो या एनीवेज, बट आई लाइक दिस आइडिया क्योंकि मुझे यार बहाना चाहिए अपना काम करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नहीं आ सकती, बैंड है। ट्रू प्रतिभा, हाय प्रतिभा, हाउ आर यू? सो एनीवेज, एक होल्ड ऑन, चंपल की रानी, हैव यू नॉट जॉइंड माय डिस्कॉर्ड? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लिंक बिलो। और मैंने जानबूझ के अपने सर के ऊपर लिख दिया लिंक बिलो। तो हाँ, so this is the idea of Pract. Now I'm going to set it up anyways. I'm going to sit and do my work on it anyways.
मैं क्रिकेट मैचेस चला देता था बैकग्राउंड में म्यूट करके while studying when I was a kid. All right, that's interesting. That's interesting. How is it not distracting though? तो that's the idea of Pract. The name मेरे पास अभी तक शायद Pract इंस्टा होगा, पता है? भाई इतना आगे आ गया था, डिस्कॉर्ड पूरा बना लिया था, सेटअप कर लिया था, इंस्टाग्राम हैंडल भी बना लिया था, बस काम नहीं करा उसके बाद। आई हैव Pract इंस्टा, PRACTTINSTA। 3 फॉलोअर्स हैं। यस, डिजाइन बाय बेकन, दीपक भोज और नीलेश ट्यूब। हाँ ये I legit have the Instagram access to it. I'm not on Discord. मेरे को बनाना पड़ेगा account. Are you guys interested in something like this? Like fucking, you know, making a co-working, digital co-working space. I think it is really cool. I really like the idea. But if nobody else likes the idea, what can I do? I'll do it alone. How sad is that, creating a digital workspace alone? So that's the crux of the idea. Pract का. And उसके लिए अलग टेक्स्ट चैनल्स वगैरह बन सकते हैं फॉर यू नो डिफरेंट थिंग्स इफ समवन वांट्स टू फ्लॉन्ट के, ओ मैंने ये कर लिया, मैं देखो मुझे, हाँ भाई देखो मेरी, आई एम एंटी वर्क, ऑलराइट, बट या देन आई माइट बी अलोन इन दैट, इट्स ओके मैन। भाई साहब शुभदीप ने आया, आई होप इज डूइंग वेल। खैर ऑफ कोर्स ही विल बी। हमेशा मेरा ये निकलता है जब भी कोई नहीं आता ना किसी दिन, आई होप इज डूइंग वेल। It's like a stream पे कैसे नहीं आया, कुछ तो खराब होगा। चलो guys, that was the idea. मेरे पास तो काम ही नहीं है करने को। Well, actually that's part of it. You take time to figure out what. मैं तो आ ही नहीं पाऊँगा। True, I can understand अमन का तो। Well, that's kind of the point. If you don't have work, you know, you gotta figure out what work to do, and that's part of it. Anyways, let's see. अभी still I'll try to make it work, at least. Otherwise. ऑल गुड। चलो गाइस, चलें फिर। नमस्कार, शुक्रिया स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। अमन, आई होप यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड बाय माय रिएक्शन टू द वीडियो यू सेंट। अरे यार डिस्कॉर्ड पे मैंने कुछ ना कुछ तो मिस कर ही होगा ना फिर। काफ़ी कुछ मिस करा होगा। ये मिस कर दिया, लिबिया डिस्ट्रॉयड, बाय बाय, गुड नाइट। है नहीं जा रहा। नहीं जा रहा हूँ, कल I'll get back to the Discord thing. I'll make sure to catch up on everything. Guys की स्पेलिंग गलत लिख दिया है। चलो guys, नमस्कारम, thank you for watching and joining the stream. I'll still do the fucking Pract thing, okay? मैं आया तो सबको या तो मैं गालियाँ सुनाते हुए दिखूँगा, गालियाँ खाते हुए। अरे नहीं, ज़रूरी थोड़ी वॉइस चैट पे बैठना है, हम भी नहीं जा रहे। Fuck off, मैं सच में देख लूँगा। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्ट्रीम।